make your money make it G. If you got weed, well, smoke a sack for me. Welcome back, Shimdos, to another live stream. वेलकम स्वागत है आप सभी का एक और नए वॉच पार्टी में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं वॉच पार्टी ऑफ VCT के अमरकाज। VCT अमरकाज का हम लोग लाइव स्ट्रीम वॉच पार्टी करने वाले हैं। आता हूं माजिन, आता रुको। VCT अमेरिकाज का वॉच पार्टी आज हम करने वाले हैं, तो मजा आएगा। आज मैचेस बहुत तगड़े भाइयों, आज मैचेस बहुत तगड़े। कौन कौन आएगा चैट में वैसे आवाज करिए। हेलो अबरार भाई, सोने जा रहे हो? ठीक है जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज डे। हेलो यश बीस्ट, हेलो एके मिनाडी, हेलो ऋषभ, हेलो ब्लेक, हेलो डार्क वेनम, हेलो सात्विक, हेलो एम गेमर, हेलो ब्लेक, हेलो जिल्वी, हेलो फैल्कन, हेलो एटोमिक, हेलो आई एम बड़ा, हेलो यश, हार्दिक, पेगासिस, कल्याणी, फेड, आइविक, काशवी, सावन, पिक्सल, FPS गेमर, स्ट्राउड, ट्रिगर्ड, एम गेमर, प्रथमेश, शिंग्यू, एडन, डार्क वेनम, हितेश, गोयल, तरुण, लेजेंड, शिंगियू, पकाबुई, साइकाट, पेगासिस, तरुण, अमन, दिव्यांग, मोंटी, नीरज। भाई इतने जन कैसे आ गए हैं? सालो सो रहे नहीं हो क्या? कल मंडे है भाई, कुछ काम धंधा है कि नहीं है? नो काम धंधा इज गेम प्ले। हाँ, व्हाट इज हैपनिंग? वो सकले कले। हेलो एवरीवन। भाई लोग, बिफोर गेटिंग इनटू द गेमिंग सेक्शन ऑफ टुडे एंड बिफोर गेटिंग इनटू द वैलोरेंट मैचअप एंड वॉच पार्टी, पहले मुझे बताओ कि हाउ इज योर बॉय लुकिंग? कुछ चेंजेस लग रहे क्या? कुछ चेंजेस लग रहे क्या? कुछ चेंजेस लग रहे क्या? बताओ, कुछ चेंजेस लग रहे क्या? जल्दी बताओ, जल्दी। चेंजेस है कि नहीं? चेंजेस है कि नहीं भाई? सेम ही दिखता भाई रोज सुबह। आज हमारा फेस्टिवल है ना, तो घर आया हूँ। कल हमारा फास्टिंग भी होगा, तो जल्दी उठना है, दैट्स व्हाई। अरे भाई पता नहीं कौन सा फेस्टिवल है, बट आई होप। गॉड ब्लेस यू भाई। थोड़ा बेड ट्रिम किया, यस बेड ट्रिम किया है भाई ने, बेड ट्रिम किया है। कैसा लग रहा है भाई? मेजोरिस्टिक तो लग रहा है कि नहीं? हाँ,
पहली बार घर पे मैंने बियर्ड ट्रिम किया भाई, पहली बार। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रेट माय दाढ़ी। फोटोशॉप स्ट्रीम पे ही तो देखा शेमड़े, हाँ लेकिन दूसरों ने नहीं देखा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। 8 10 10 आहा 10, ओ माय गॉड भाई कल कॉलेज है और अभी बैटमैन बिगिंस देख रहा था। मर जा भाई, कब मर जाओ सालो। भाई तुम लोग को पढ़ाई नहीं करनी, तुमको सिर्फ गेम्स खेलने हैं? कभी सुधरोगे भाई तुम लोग, कभी सुधरोगे? लाइफ में सुधरोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? आवाज आ रहा माजिन? हेलो, हेलो, कशी आहेस? कैसा है भाई? मस्त, लॉंग टाइम नो सी। कसं काय? एकदम मस्त। 0.5 mm है, 0.5 mm मतलब परसों मैथ्स है, मस्त पढ़ाई चल रही है। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। आज फुल नाइट? यस बेबी, ऑल नाइट, फुल नाइट। सर स्पेक्ट्रम क्लासिक आया है स्टोर में, दिला दो प्लीज। नो। अबे तू स्ट्रीम करेगा तो कैसे स्टडी करे? चालू तो मारूंगा। क्या बोलता है? 1:30 को चालू होएगा। अबे 12वीं वाले लोग के एग्जाम है ना, तो काय को देख हाँ रहे भाई? माजिन कल क्या है? मंडे है। नहीं कल कौन सा फेस्टिवल है? किसका? हम लोग का? हाँ आज था वो, तो फेस्टिवल नहीं था, इसी एक दिन था। अच्छा, क्या होता है? हम्म, अरे वो लाइक जो डिसीज्ड हो गए ना, हाँ वो लोग के लिए सब प्रेयर वगैरह करने का, ओके ओके। कब्रिस्तान जाके। हम्म। हर्ष भाई कल मेरा बोर्ड है, ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट एएम गेमर भाई। ये चालू हो रहा है शायद। हाँ? Hell, folks, it's the return of the Breakdown Buddies. ब्रेकडाउन बडीज कौन है? Thank you, Golden Boy. We are back with another Breakdown Buddies. Unfortunately, I demanded this segment. ओ भाई ये ज्ञान देने वाला है, देख ज्ञान देने वाला है। ये देखिए AI वाला बंदा है क्या? ये AI बंदा है, ये AI वाला बंदा है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है ये। CLOUD9 एक्सप्लेन कर रहा है, देख कुछ तो। AI है मतलब क्या हुआ? नहीं AI नहीं है, ऐसा ही बोला मैं। And what do we got? Bot है। MIBR, they're on attack. Sure, IRL it's bot। bind. I am seeing that, absolutely. They're gonna go for hookah control. We've seen that before. Viper wall on A, but oh my god, it's a crunch. Oh my goodness, Cloud9, they're gonna crunch through the TP any second now with this Yoru. Surely any second now. The boombot is broken, Oxy kills one, and then the TP comes in really late, and Zeppa's just kind of trapped in their ball. How are they going to react to this? Can you give me some information to work off of? You know, for as much as you've really used this telestrator, I was hoping the pace would be a little bit faster, but it looks like the क्या बोल रहा भाई ये? what? It looks like the MIBR team, they're they're going from all angles, long A, long B. They're working up mid R. Now we might be going. अबे भाई सड़ा रहा है भाई, सड़ा रहा है। हट चाय लच्छमन। मेरा आईडी अनहाइड कर दी? नहीं यार, अरे भाई तू ये वाले स्ट्रीम पे आके कैसा बोलता है भाई? तू कभी डीएम वीएम करने तो कहीं पे डाल, वो कमेंट वमेंट में डालना स्ट्रीम होने के बाद, तो मेरे को याद आएगा सुबह एटलीस्ट। मेरे को याद ही नहीं रहता, मैं स्ट्रीम करने के बाद बंद सो जाता हूँ ना। भैया मेरा आज एग्जाम है 2 बजे केमिस्ट्री का, 12th बोर्ड्स। जेट और रेज अभी तक खेल रहे हैं ना भाई। और तू इधर है, तू इधर है भाई। क्या बोल रहा है? जेट और रेज अभी तक खेल रहे हैं ना। हाँ तो क्या भाई? भाई एक दिन 24 आवर स्ट्रीम करो ना, कर सकते। जोपनार कब? सुबह। He just has all these. He could go anywhere. The world is his oyster. अबे कर रहा क्या है ये? And in the कुछ भी कर रहे भाई। I think he's probably going to pop those. ऐसा किसका गेम प्ले होता है? हाँ चैट इसका ऐसा। हट भाई, मैं इससे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मालूम ना। हाँ भाई मैं तो भाई मतलब ये एनालिस्ट प्रोफेशनल गेम प्ले भाई, मतलब Oxy gets flashed, I believe, by a sky bird at the same time. Gets taken out by the knives. And then Mazin gonna be able to go out there with that. अबे हाँ MIBR में माजीन है मालूम क्या? This is just some honest to God good team play from MIBR, which is something we did not see last year, that we were hoping to see last year. अरे मुंह बंद कर भाई, भाई मेरे को सुनना ही नहीं है इसका क्या बोल रहा है। प्रो एनालिस्ट हॉर्स भाई, यस प्रो एनालिसिस हम कर सकते हैं भाई लोग, टेंशन मत लो। हर्ष भाई आगे काम धंधा पीछे, क्या बोल रहा है?
अब उस आईडी से हर्ष बना रहे पे कमेंट किया। अरे तू है ना सुबह में है ना ये वाले स्ट्रीम पे है ना ये एक ने तो मैं काम करता हूँ, मैं ना अपने रिमाइंडर में लिख के रखता हूँ। tense and I'd be so confused. Follows arrows. Well, वो पीसी से ही कर सकते हैं, फोन पे नहीं होता है वो। रुक मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। क्या नाम है तेरा? अरे किधर जा रही है दीदी? क्या बातें हो रही भाई? हंस रहे ये लोग। ये चालू हो गया। आज जागरण गोंधळ आहे। काय बोलतोस? C9 will be team A, and MIBR will be team B. C9 छापा की काटा। map ban. Ban split. C9 ban अरे split. हो भी गया? What would you like? यार Icebox. MIBR. वैनिटी को देख रहा है क्या? बफ हो गया है बावा। And you have first map pick. Pick bind. C9 Bind. pick bind. लेट्स गो। And would you like attack or defense? Attack. MIBR फूड pick ब्लॉग्स attack, देखो हर्ष and भाई। what map लिख रहे pick? क्यों है रे लोग? क्या? Would pick ascent. लिख रहे काय को है भाई बुक MIBR में? pick ascent. तो भाई पता रहना चाहिए ना आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या C9 होने pick वाला है। defense. अबे वो लोग वोटिंग में लिख रहे भाई। क्या है, कुछ है ही नहीं क्या? नहीं Ban breeze. हाँ वो लोग Ban वोट लिख रहे थे ब्रीज And what बैन would you like के to ऐसा। वोट लिख रहे मतलब? Downloaders. मतलब MIBR स्प्लिट ban बैन Lotus, क्या, Xbox बैन decided क्या map will वैसे। be हाँ तो वही तो लिख रहे हैं। And would you like attack or defense? हाँ तो वो पेपर मतलब वो नोटबुक आगे लेके जाएंगे वो लोग, C9 pick defense. और मतलब अगले गेम में वो लोग को याद आएगा ना भाई कि मैंने जब ये लिया था तो उसने वो लिया था ऐसा। समझ रहा है? इम्पोर्टेंट है भाई तो ये। वो वार्ड नहीं देख सकते क्या Sunset भाई? will be the battleground for these two teams a second time in this tournament here. But we want to hear from you wonderful people in the chat. I was with you guys over the last 2 days and I really had a good time. So, and be nice to one another. In any case, MIBR so versus go home and, C9 well, should be home. chat now. And अभी make sure you अभी go ahead करो, and type स्पैम in करो, MIBR or स्पैम करो C9. चैट में। Trust कौन me, I'm जीतेगा doing my बताओ? job and I know what I'm ई doing. स्पैम Doesn't स्पैम matter करो if it's जल्दी। MIBR, कौन C9, जीतेगा? vote right now. Go ahead, have fun. Via कौन जीतेगा जल्दी बताओ? Good ई luck. स्पैम We'll see करो, what ई happens. स्पैम I'm करो, curious to see what the community thinks ई here. Who's gonna स्पैम walk away करो। with this win? कौन जीतेगा बताओ? Who do you think is going to walk away with this win? Well, I thought the video was actually really interesting, and that's part of my sort of answer. I think Cloud9 will find success here. They ban split this time. They don't want to deal with it. They really struggled to get Whippy's utility on defense where it had to be. E-spam, E-spam, E-spam. Not in the KJ side ever. Whippy's like throws everything down. He's got it all ready. He's like, you know, क्या हो रहा है there's इसको? tinsel on the bloody tree. All the presents are there, and they just head down to Ben and Jerry's at the corner of the street. That was really. You ever done that? I Ever see a mean, I'm Christmas just saying tree? I could go for some And ice opt cream. for a very specific non-sponsoring ice cream chain instead. Just me? Yes, non-specific. Well, here are the maps. as सब they're laid लोग out तो right now. C9 We got ही बोलेंगे 5 क्योंकि cents as well as C9 Sunset में है You're the right, goat we gamer saw that Oxy। veto, on split, massive there. Myrna, what do भैया you मैं make of सोने this? जाता हूँ 2 बजे Do you एग्जाम है think शाम this को दुआ veto करो। has ऑल द बेस्ट यश gone भाई। C9's way as well. I feel like the split ban makes so much sense. भाई MIBR क्या has 2 had- साल लगाएंगे क्या चालू होने? हट। कसम भाई कान में बजा है। मैं भी वेबकैम डालूं क्या? दिखेगा नहीं तेरा। तेरा रैंक क्या है रे? You the MVP. Ascendant। Because it's Singapore. Ascendant 1. Okay. MVP. Because it's Singapore. Okay. Okay। Why would the game do that? I have. He has to sleep. Okay. Yo, you don't sleep, bro. Sleep is for the weak. Come on, let's play. किसके साथ खेल रहे हैं? We can play one last and sleep together. I mean, Yeah. Huh? Oh, no. I mean, we can play one more. And then we. क्या भी क्लिप करते भाई। ओ भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। People expected. They looked really impressive against Furia, and against us they played really well as well, pushing us to the limit on 2 maps, and then destroying us on split. ओ भाई क्या शॉट! आर्टिजन मारता है क्या? ओ भाई
Com certeza. Shivankar, thank you for the sponsor. Welcome to the Pau Gang. I love you into your heart. Faltou pouco mais de experiência em Thank you, relação à bye. afobação e a tranquilidade. A gente deixou a desejar, a gente entregou uns rounds. Harsh bhai, night day stream. Muitas Yes vezes bro, custava night o day, jogo. night I think all the day, first match, I night think we all definitely had a stream. little bit of stage nerves. I mean, it's Oh three bye. of our first times playing on stage, and I think that we adjusted a lot of things for this energy game and played a lot better. I think it'll be a good match, and I'm excited to play. ये देखा कि नहीं ऑक्सी को देखा कि नहीं माजिन Close range with the Bucky, but it gets dodged. ऑक्सी 2 हो सकता था लेकिन tूने गेम छोड़ दिया That'd be a nice shot there. A 1v1, the jump long range with the judge. Now the gun gets picked up. वो वॉल के अंदर जाके भी उसको ट्रैक कर रहा है भाई। Acredito que naquele jogo nós erramos muito como time, então a gente quer essa सुबह कितने बजे उठते हो सुबह तो उठूंगा ही नहीं ना सुबह ही सोऊंगा मैं सेंटिनल वर्सेस लाइव लेविएटन कितने बजे होगा 4:30 बे बाय It's time to kick off this Sunday and bring out our first team. Give it up for हेवी ड्राइव भाई ऑक्सी ऐसा हाइप करता है ना मेजर वैनिटी फुल खाली जिम जा रहा है और कुछ भी खा रहा है क्या ना इसके लिए ऐसा हो गया है भाई क्या गाना बज रहा है बे भारी अबे ये वैलोरेंट का गाना है नहीं अरे भाई कैमरामैन फुल नीचे से ऐसा अरे ये दूसरा है पोर्तुगीज बोल रहा है ये पोर्तुगीज बोल रहा है मेरे को आती है ना क्या वॉकआउट सॉन्ग है लोग के हाँ ऐसा भी होता है वो भाई लोग का वो देख क्रोम वाला है MIBR का हाँ भारी है ना लोगो तुम लोग को आता है कि नहीं पोर्तुगीज भाई भाई सब लोग क्या दिख रहे ना इन लोग के भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दो क्या हुआ अपूर्वा ब्राजीलियन ही दिख रहे और क्या दिख रहे नहीं अच्छे दिख रहे मतलब पे मुझे तो सेंटिनल वर्सेस लेविटन देखने का मन है बस अरे भाई इसमें का ऑक्सी है ना ऑक्सी वो एक बार मारने लग गया ना तो सेंटिनल्स को भूल जाएगा भाई देखना तू अबे वो CS:GO का स्किन का कर रहा था ना वैसा लोगो बनाया उन्होंने दूसरे गेम का नाम नहीं लेने का हगरे in esports because without these guys we don't have jobs so I think that's very nice anyway let's continue though and talk about this match लेविएटन का कार्ड किया सेक्सी है बाय द वे लेविएटन वर्सेस सेंटिनल्स कौन जीतेगा सेंटिनल जीतेगा 100% it's more than that too there's a देखो आसपास भाई मारेंगे बहुत मारेंगे पूरे भाई क्या चिल्लाया वो कुछ तो चिल्लाया ना हेवी भाई तुमने लेविएटन का ये लिया भाई भाई लेविएटन का तुमने प्लेयर कार्ड लिया भाई लेविएटन का प्लेयर कार्ड ओपी है भाई जेन्युइनली ओपी है वैसा ये वाला ना सामुराई वाला थैंक यू रेक्सस बाय फॉर द 40 रुपीस दुर्वेश थैंक यू फॉर द 40 रुपीस गुड नाइट बाय C9 विल विन वन साइड कैसा वन साइड C9 विल विन थैंक यू फॉर द 40 ये डिसाइडर है शायद माजिन इसमें जो हारेगा वो घर पे शायद पक्का पता नहीं चैट इसमें जो जीतेगा वो ये देख ये बकरा गेमर है घुस जाए इसमें भाई अरे अटक गया शिट यार कैमरामैन Before they came to the VCT, Shit. they've proven everybody wrong in that respect. They've shown a great depth of game. योरू लिया है कौन लिया अच्छा बाइंडर ओ भाई ए ऑक्सी योरू लिया है क्या शायद भाई मजा आ जाएगा फिर तो They definitely need to clobber Cloud9. हाँ वे ऑक्सी योरू लिया है लेट्स गो भाई लोग ऑक्सी योरू लिया है their number here come the agent select as it starts to get locked in here right out of the gate nothing too crazy here for Bind
Yeah, I feel like we're probably going to see that. भाई तो ये कोड उतारता भी है क्या? नहीं, ये मैंने अपने स्किन के साथ सिला लिया है. about Vine that C9 struggled with was that their retakes weren't the best, and I feel like MIBR has constantly been on their retake game. भाई लोग MIBR अच्छी टीम है क्या? मैंने लास्ट मैच देखा था ना MIBR का, वो MIBR वर्सेस फ्यूरिया दिखा था और उसमें जीता कौन था मेरे को याद नहीं, शायद फ्यूरिया जीती थी 2-0, ठीक है ना, ऐसा विषय हुआ था. तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये थोड़ा सा अंगड़े मैच होने वाला है. मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ये मैप कोई हारता है तो क्या होगा? ये डिसाइडर है, जो हारा वो घर पे. ओ शीश भाई, जो हारा वो घर पे बोलते हो, गया फिर गया. MIBR बाय बाय. लेवियतन भी घर पे जाएगा यार. नहीं यार, ये नहीं चाहिए मेरे को भाई. आसपास डिजर्व्स बेटर यार. आसपास गोटेड गेमर है यार भाई. इनका आर्टिजन भी बहुत अच्छा है यार. भाई कल मैच का मिड सेम है, सिर्फ लाइक करने आया हूँ, बाद में देखूंगा स्ट्रीम. आराम से देखना भाई. भाई सेक्सी लग रहे हो. थैंक यू बेबी. कैसा आराम से बैठा है देखो वो. अभी आराम से बैठूंगा, गेम में जाने के बाद सबको फोड़ दूंगा. डबल कंट्रोलर खेल रहे हैं MIBR बाइंड पे, अच्छी बात है. Cloud9 भी डबल कंट्रोलर खेल रहे हैं और डबल डुअलिस्ट खेल रहे हैं. ओके लेविएटन वन साइडेड इजी. नहीं भाई. ओ ये लोग डबल इनिशिएटर खेल रहे हो. ओके तुम लोग लेविएटन वन साइड इजी बोल रहे हो भाई. सेंटिनल्स वन साइड इजी. जॉन क्यूटी बेबी. John Cutie is my love. अच्छे से देखो हर्ष भाई, गेम प्ले इंप्रूव होना चाहिए. मैं तो रोज देखता हूँ भाई अच्छे से. Tens wins घर पे भाई. John Cutie for the win. Tens क्या मारेगा? Tens एक किल मार के मर जाएगा. John Cutie 3 मारता है. एक मारता ही नहीं, वो 2 मारता ही नहीं है भाई. ओ भाई पहले गेमर्स देखे जिन्होंने कीबोर्ड सही सीधा रखा है. चलो चालू हो रहा है. लेट्स गो. अपूर्वा इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर. आपका स्ट्रीम देखो यार टेरिक का, जिसका पसंद आए भाई. MIBR पे सिंगल डुअलिस्ट है. ओ भाई 3 जन Cloud9 के बी पुश किया. MIBR अटैक कर रही है. स्लोली खेल रहे. स्लोली. Starting to strengthen those defenses just a bit. They're starting to work their way up past attacking हो गया भाई. Viper util, they're going to get out onto the site and they should be able to do so pretty freely. Pilant easy मिल गया भाई. Easy. ये हॉल भाई 2 जन फ्लैंक आ रहे. ये वाइपर को तो उड़ा देंगे आराम से. किधर है? एम किधर है? Took a little bit of damage. Our team's not finding any success either. Cloud9 have been able to very slowly but carefully pick apart every single member of MIBR. Flawless. अबे यार. Oxy and Vanity both weak. Jake will fall, but he's just gonna be able to hold the defuse. Flawless भाई. 2-0. जल्दी. चलो. Sentinels का गेम देखना है. चलो. Getting the kill on the flank and surviving and applying that. You hate Tains? I don't hate Tains. I love John Cutie. Beautiful game plan from C9 right off the rip here to set the pace for them. Easy game. आज भाई थोड़ा रैंक अप टिप्स दो प्लीज. रैंक अप टिप्स. Treacherous this guy can be with his gun. You know, watch that one streamer, bro. That's name is harshkhel. Yes. भाई मजे करो भाई गेम खेलने के यार. लोड नहीं लेने का यार. लोड लोगे ना तो डी रैंक हो जाओगे भाई और बीटी होएगा. I don't think MIBR expected. आप इंस्टाग्राम पे मैसेज पाते हो रेयरली, बट ट्राई करो. भाई बी पे 50 जन पुश कर रहे हैं. मार ऑक्सी का ए से. अरे यार इस चोरी कर लिया वैनिटी. ऑक्सी कितने साल का है? Zekan भी बहुत अच्छा खेलता है भाई सेंटिनल में. हाँ भाई.
गुड मॉर्निंग मिस गेमर भाई अभी पाद रहा हूँ मैं कब सोने जाऊँ Game plan change, right? They want to try to find out where Oxy is, see where he's at. And क्या C9 क्वेश्चन पूछते हो भाई ahead of the meta, or ahead 4K of by what MIBR is Oxy trying to do. I want to see something from 17 साल का MIBR. भाई माजिन कहाँ गया बे Instead of them playing out so much on their post plants, maybe चले गया बे माजिन trying to disrupt the retake, you know? Because I feel like when you think of MIBR and their gameplay, they're really focused on the fundamentals. They want to play a clear post plant. Nice highlight here from the Bulldog of Oxy, and he's already having a hot start. And I was talking to you about this earlier. Is उसका नेट गया शायद you don't want him to start off like बस भाई ऑक्सी का एम आपके जैसा क्यों है पता नहीं वे शायद वो मेरी स्ट्रीम ज्यादा देखता है ऑक्सी उसको बताना पड़ेगा भाई कम देख But so far, it hasn't really netted any different results. We'll see if the case turns out चलो to be भाई slightly different. पहला बाय राउंड MIBR का और C9 यहाँ पे बोनस राउंड पे Not even picked up right now. They're trying to feel out the map, see what they find. प्ले फ्लैश पीक डर रहे देख रहे हो सामने वाले कैसे डर रहे पीक करने आइक आइक भाई मार ही नहीं पाएंगे भाई को मार ही नहीं पाएंगे भाई को अल्लाह करके पीछे जा रहे क्या MIBR वाले होल्ड कर रहे बे लॉन्ग होल्ड कर रहे उनको लग रहा है पुश करेगा ऑक्सी I don't know if you saw him right there. Yeah, no, I don't think it went deep enough to spot him. ओके अभी ए पे हल्ला हो रहा है भाइयों He has another flash. फॉरवर्ड कंट्रोल भी हो गया ए पे To confirm his suspicions. Meanwhile, MIBR not really interested in messing with ऑक्सी ने बिलोंग पे अल्ट किया set on A, where 3 members of Cloud9 are. Oh. They're going to commit out onto this. A trade, a 1-for-1 at the beginning. Jake trying to hold Oh, back boy. with the Bulldog, finding success. पीक ही नहीं किया भाई वो फ्लैश के साथ कोई The nade was perfect. ऑक्सी बेबी What is he waiting for here? ऑक्सी ने अल्ट किया और वापस घूम के वहीं पे आया Spike still not अर्र ready. They have भाई कैसा मारा वो They've succeeded. And they do so with a number 3v2 but do they know where Oxy is? His timing should be perfect. He doesn't have any armor, but it might not matter. 13 seconds left. The first fall. किधर गई थी आप Wipe the floor with MIBR अबे again. क्रैश हो गया था पीछे अबे Cloud9 जीतेगा Already from Oxy takes the TP but doesn't go right away out shower, wraps around short. क्या हुआ यहाँ पे कौन जीता था एनर्जी और क्लाउड9 ये क्या हुआ एनर्जी Cloud9 में एनर्जी जीती डिसाइडर मैचेस है हाँ प्लेन्स बोलते हैं इसको MIBR so far not able to identify where Oxy is in these early rounds. क्या हुआ क्या बे इधर I mean, even just that little hesitation that you were mentioning. अच्छा अरे भाई कैसे मरे साइड पे क्या हुआ भाई इधर He says across the stage. It's just that C9 ओपी C9 तो आराम से मारेगी भाई पार्टी ने 2 मारे भाई कैसे मरे भाई साइड पे ऑक्सी वाज हर्ष का फैन फ्रॉम द स्टार्ट बस घमंड नहीं किया हर्ष भाई ने एग्जैक्टली हर्ष भाई ब्रेक लिया तो स्ट्रीम पे आ गया जा रहा हूँ बस 10 मिनट्स में ओके बेबी staying there getting hit by the sky flash on purpose to keep players there actually made Oxy invest his ult. I know एक घुस गए round 3 but nevertheless C9 was able to Phonepe का अल्ट आ जा रहा है भाई एक किल में showers the orb. Should be जेपा भाई They might also have JCZ pretty easily. Satchel अरे out that fight, and that's with help on the other side. अरे माँ Seekers, कसम Vanity repositioning and the spam lands. लेकिन एक मारा भाई फिर भी that's just a good feels man, you know? Feels good man. Little spray, full blind, gets the headshot. Molly's keeping him back for a little bit. They भाई सिटी पुश कर रहे हैं getting the spike down. They seem uncomfortable. On the site, whenever they get some space, it seems like they're not satisfied with what अरे माँ कसम once again is their demise. He's able to भाई उनको अरे चाय भाई बराबर है उनका भी यार शावर में भी उनका कंट्रोल नहीं है किधर भी कंट्रोल नहीं है They know there's pressure on the flank, so they want to push spawn there and very इसने टीम लिक्विड का ये लगाया है and he gets 2. वीपी ने टीम लिक्विड का ये लगाया क्या उसे कहते हैं गन बड़ी अच्छा कल है ना कल डेरेक ने ना वो अभी इसमें खेलता है ना इसमें खेलता है वो ईजी में खेलता है शायद पता नहीं हाँ जो इसमें था 100 टीम में था नहीं वो तो डर का है जो 100 टीम वाला डायरेक्ट था ना वो अभी ईजी में खेलता शायद तो उनका कल मैच था तो भाई उसने गनबड़ी 100 टी का लगाया था और सॉरी
क्लासिक 100 टीका लगाया था और उसमें गन बड़ी लगाई थी सांप वाला। अरे भाई This could get out of hand very quickly. Yeah, and it all started with that. Tens पहले C9 में था, हाँ। That we know C9 क्या बोल रहा? like, and like teams Reference expect दे it, रहा but था where वो। is it gonna happen? Like, you already saw. 13-1 होएगा। रुको, full time score मैं बताता हूँ भाई। All the way down, and that's a Full time big score problem बताऊँ when मैं? you're trying to do a default 13-3, 13-3. or just like a set pistol, right? Their Oxy is set the pistol next was to tens. go A from the start of the भाई round, there and is not spread no out on the next map, tens get the भाई। info that There they're are actually people pushed better past than that him KO now. dagger, and that ends up being a thorn in your back. The Opto's going to the hands of Oxy. Stream snipe का क्या सीन भाई? मुझे नहीं पता वो। An excellent 13-6, start for the 13-7. Duels, Asuna bhai, thank you for the admittedly sponsor. Welcome to the Power Gang मेरे भाई। Last time we Thank saw you him so on much. Yoru Welcome। against NRG, a much better कार भाई start लिखो from वापस क्या लिख रहे हो? Yeah, we saw him second guessing himself quite a bit in that NRG series. अर्श on भाई the बोलो। Yoru, going for those पादू aggro या सो plays. जाओ? A rare miss, पाद के सो। but the threat is there. It's been identified. He stays. I love this from भाई Albers. TP नहीं किया बे This is what इसने। you want your op to do. At least Stay fake until कर they देता ना ये। absolutely push you back. Stay as long as you can. अरे भाई। Make them burn more utility. Make them do all these things. Look, he's still there. Oh. And now he's out. He got the Roomba out. He got a flash out. He got अरे plenty of हजार utility out. चीजें You're खा लिया absolutely वो। अबे वो बूम बॉट एक फ्लैश। All those things matter. क्या क्या? going to the KO का mid-round. flash हुआ ना हाँ हाँ हाँ। Post plant scenarios. Info getting regathered here onto long B. So अभी भी they're ऑफ aware बी that पे ही there is लगाया two उसने। there. वो ये बहुत डीप मिल गया भाई, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं हलचल। FRZ into this U-Haul. ओ ओ ओ ओ ओ भाई। He was really far up. I thought Whippy was going to get the best of him, but no. Orbital strike. अबे ये Separating Whippy things का for sense Joss. कितना है? मर गया। It does fall in the hands of Jake. क्या क्या? He had nowhere to go. I think Yeah, he was stuck. the raise nade from Zeppo was perfect. हैं? 100 DPS हाँ पहले मैं So MIBR देखता था ना, finally उसको managed to उतना get the high spike down. What can Cloud9 do to CS:GO में respond? भी The उतना dog है। in the lap of Oxy. मत बोलना भाई। No late flank, nothing like that. It's just going to be a fight for the site. And they're taking their time with it. I'm glad you pointed that out. Look at how worried they are of the flank. They're still looking now. Let's You've go। got freaking Secret हाँ Service मतलब माउस भी protecting नहीं रहता RGL right now as he tries to put up the molly. And it buys जीत enough गए भाई time, maybe MIBR। gets caught लाइन अप आ गया। scoring. वो हाफ कर रहा है, वो हाफ हो गया। It is half though. नो वे भाई, लेट हो गया ये। Part of the way there, JCC on the flash confirming there's nobody sticking. Oh, but they are in. saving, Should they are be able to saving. Get this round on the board. They're saving. And that's just Good the round, classic good round. post तू कोणत्या plant. टीमचा कॅप्टन So घेतलाय? नाही रे घेतला मी fundamentally कुठला। good. The Molly came out so early स्मोक रहता before the ब्रिम पे tap तो even came in. कर सकता था And you know, क्या- नहीं केओ का भी मॉली था, रेस का भी नेट था शायद, पता नहीं। I think we gotta have like a counter. But हो how सकता many है। times we see somebody half clear an angle, you know? कार्तिक, thank you for the 20 rupees. Welcome. And it's so tough, right? ए भाई कार्तिक भाई का फर्स्ट सुपर चैट है, हैप्पी बर्थडे लिखो भाई को। That second timing to not clear it. अननोन अभी भाई, thank you for the 1 month support। Perfect timing to get a kill. on भाई somebody वो else, कैसा right? मरा है भाई FRZ। But if you don't clear it, then this happens. चैट माजिन बोल रहा है कि वो वीपी है ना, वीपी है ना, उसका सेंसी 1 है 1। Angle that you wouldn't necessarily expect him to have. Especially सही में for क्या? Yoru. Yeah. I don't think he put his TP down at all either, so he's committed to this A site. Like, big knife here. That's a different knife that we've seen so far. That's to clear all of Octagon. And the teleporter where Oxy was playing previously. Just cutting noise here. DPI ज्यादा होगा, हाँ DPI कम होगा ना। There, that deep smoke from the brim, allowing just enough space for our team to get that orb. Now 1 away from having a showstopper. And I think what you're going to see here now is, Vanity is going to get info here around this hookah area. They're aware that they are in Long B. They can cuss. And that's so much info. Yeah. You see the raise and the KO. Not pushed up Long B, all the way in the back. Great. I think they भाई might 2 end स्पॉट up किया इसलिए वो flipping all the way रेस back रोटेट A, किया, लेकिन ये लोग ए पे getting जा the रहे हैं। orb in showers, and then hitting with our भाई team's ऑक्सी की ऑप, आहा। We'll see if Yes they baby, have that yes. much Come time, on. or they just want to go short. भाई Yeah, शावर it से seems मर like सकता है अगर वो बाहर आया ना Conceal शावर वाला। behind the Viper util. There's the position here. गॉड ट्रेड भाई, इंस्टेंट Zeppa there punishing इंस्टेंट back ट्रेड्स आ गए 2-2। They've invested the Seekers. Khelraay goes into disarray, and he satchels भाई away to क्या stay फट से alive निकला है and ज़ेप्पा। preserve his life, manages to do so. Spike planted. I always get so impressed with these like ये TP गया ना? second satchel maneuvers, you कौन? know, where they just get out. Sky ने Different game. This is going to be really tough नहीं for देगा रे। Cloud9 too. अभी अच्छा, वो लोग vanity में, हाँ, हाँ। फिर लाइनअप और अल्ट पे खेलेंगे। हाँ, उसने एक टैप किया, अल्ट पे खेलेगा, लाइनअप पे खेलेगा। Tap from Vanity to bait out that breach or that remote. इसलिए वैनिटी ने फट से टैप किया, cause he knew। Get the fights that they want.
there's still plenty of time for them to stick to this. अरे That cover looked भी like a नहीं दे mistake. भाई गलत लाइनअप है. गलत वाली है. One more time. Whippy's gonna have to do it on his own. There's a showstopper, and it just buys time. हट रे I हट mean, he गया can था hold this the वो. entire way. Whippy has no real choice. Nicely done. ओ भाई. लेकिन तूने देखा इन लोग वो है ना पैनिक काफी बना दिया उन्होंने मालूम. वैनिटी ने पहले टैप किया तो उसमें उसने ब्रिमल्ड किया, फिर बाद में टैप किया ना तो रेज ने नेट भी किया. तो यूटिल तो उन्होंने डंप कराया लेकिन लास्ट में थोड़ा फर्स्ट टैप में ना उसको वो कवर देता ना बराबर तो वो मरता नहीं था तो निकलता from JZZ and so fast. It was perfect. Not allowing Oxy to get out in time. मेरे को भी बोल रहा हैप्पी बर्थडे दिन बन जाएगा. हैप्पी बर्थडे विल नू. A little bit of a momentum shift too here. C9 हंसरे रे doesn't want कास्टर any of लोग that. They're going to go into a timeout. Throw the brakes सेटिना on before वर्सेस it gets out of लेविटन hand. कितने बजे है? 4:30 बजे. Finally starting to respond, get a couple of rounds together. And I think, you know, you touched on it, Dre. It very much feels like that's भाई their ज़ेप और approach. They want to get the spike ऑक्सीफुल down ऐसा एनीमे and get कैरेक्टर enough दिख रहे हैं ना. comfort in feeling भाई like वो they do ज़ेपा that, and जितने then it's बाल up to रखने मेरे को एक दिन. either अबे उसका brim volleys through the कितने sky साल or से result, बड़ा ही things like काटा that. ही नहीं It seems कभी like that's उसने. their approach here. हाँ क्या? And I see what C9 was doing. चैट मैंने ज़ेपा जितने बाल रखे तो कैसा लगेगा? Making them play all the way back. हाँ ऑक्सी का ना भाई 50 साल से एक ही माउस पैड यूज कर रहा है. हैंड रेस्ट भी वो यूज कर रहा है. Applying pressure on that flank because it's so obvious what MIBR. I have exam in 5 hours and I am still watching stream. They still had Raze nade that deep into the round, Which is wild, yeah. Yeah. एक्चुअली ना भाई तुम लोग इन लोग को है ना स्ट्रीम एक्चुअली देखना चाहिए. फिर जाके ना वो लोग फेल हो जाएंगे, फिर है ना वो लोग रील्स बनाएंगे. I feel famous. क्योंकि ऑप्शन नहीं बचेगा कुछ, बेरोजगार हो जाएंगे. Yeah, and I kind of want to see mind games out of पढ़ाई C9. करो रे, I want पढ़ाई to करो see जरा. Oxy हाँ get चमन लोग. deliberately hit by these knives and then change his position. चलो देखते हैं अभी MIBR क्या करती है क्योंकि बैक टू बैक C9 ने राउंड्स निकाले बे. तो ये राउंड तो MIBR ने निकालना चाहिए. ब्लाइंड करके पीक किया. 8 दिन लो हो गया भाई. एम लॉक कर रहे हो. हाँ ना क्रेजी स्पैम करते भाई ये लोग. 8 दिन स्पैम में ही मरने वाला है मेरे को लग रहा है. The dogs are going to clear out hookah. There are only 2 members here on side. ये लोग का लाइनअप डेंजर है रे. ब्रिम. Away with murder. He gets ultimately punished for it. Bazim gets all down. He gets 2 kills. The site is wide open. And this is why the KO is so good, just in general. Oh भाई Steam Beacon. JZZ got overwhelmed there. Steam Beacon की वजह से क्या वाइड स्विंग किया उसने. Like their approaches and post plants and utility. They do not have that here. They have no spits for FRZ. Our team doesn't have it. What the freak? भाई उसका मॉली भी हो गया. Or was that? Yeah, that was a missed molly. Yeah, where do they go from here? भाई का लाइनअप. नाइस. ओ भाई 1v2. बहुत वाइड आ गया रे वो मार्जिन. उसको उधर ही स्टक रहना था ना कभी में. 1v1. वाइपर वर्सेस वाइपर बेबी. There's no challenge to seize bullet dancing around him. He's gonna stick to it. Oh भाई साहब राउंड है. राउंड है भाई राउंड है राउंड है. FRZ gamer. And that was तू great. कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहा है? भाई देख Cloud9 तो 100% जीतेगा. MIBR ये ends up working out for him even though no अंडरपेंटेड है. अंडररेटेड है. मेरे को लग रहा है C9 थ्रो करती है They टीम. were aware Oxy was there and stuck because he spammed. तो लोग कर सकते थ्रो अगर ऐसा जीतेगे ना थोड़ा राउंड. तो लोग करेंगे थ्रो. भाई क्या खुश हो गया है. All we had was the Ready to get soon बाबा. Yes baby. And that was all they needed. अरे They've got the room वेट स्पॉट नहीं किया उसने. हाँ भाई अपने को तो है ना ऐसा यूटर्न मार के घुस जाता है अपने में. इसको स्पॉट नहीं किया. ये देख ना उसने छोड़ दिया. हाँ भाई शावर मिल गया उनको तीनों को. और वो उसका ड्यूरेशन भी कम है तो वो बाउंस होके वापस गया यार. Oh, that was a big change. Yeah, that was huge. But ultimately traded. भाई ये क्या है भाई. गन्स है रे लोग पे दोनों पे. That was clean. ऑक्सी पे बाय नहीं था शायद. वैनिटी नहीं बाय किया था शायद. Vanity does have a rifle. He's one away. स्टडी करने जाओ या सो जाओ. सो जा. सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर. ये देख अभी इधर सेव करता था उसका कुछ जा रहा था उधर. वैसा फ्लैश नहीं उसका अगला है बाय है उसका शायद इसलिए उसने ट्राई किया. ग्रीन बालों वाला कौन था VCT में? बूस्टी हो.
100 टीम है भाई। माजिन बूस्टियो देखा है क्या खेलता है भाई? नहीं अभी इसमें 100 टीम है वो। क्या मारता भाई अभी वो, कुत्ता बनाता है कुत्ता। लेकिन भाई इन्होंने हरा दिया उनको, सेंटिनल्स ने हरा दिया। टेंस छोड़ भाई, उनका जॉन क्यूटी है ना भाई, आईजीएल क्या मारता वो। No, I mean it's really just Mazine who's what, halfway there, a little bit more than halfway. अभी देखना वो चुपचाप एग्जिट फ्रैग खेल सकता था ना उसके बाद। फिर ठीक है भाई। भाई वैनिटी है भाई, डेंजर है थोड़ा। ओ लाइन अप है। Doesn't get any info. No, I mean they've been here a lot. They've lost two, the spam already coming through and Vanity gets tagged. ओ ये क्या पुसी है? Damn. अरे बट वो चेक नहीं करेगा उसको लगता। Smart. Shit. ओ अरे। ओबे लेकिन क्या वॉल और सेटअप था वो अच्छा। भाई टीपी नहीं करता तो स्काई और वो साथ में पिक ले सकते थे। You already see the rotation from Jake going back to that A site. अब ये क्या अच्छा है रे, लोग का गन बड़ी MIBR का। सबका इसी है क्या? हाँ सबके इसी है। And it's not going to see ओ anyone. भाई भाई अभी ये लोग पुश कर रहे हैं। ओ माय गॉड Come back. Bro. I mean, FRC's going. He's by himself. I don't know that Mazine's going to get there in time. Phantom है इसके पास। Oxy falls. Is there a flash? और एक है। He does have it, but decides he wants to try to get away and survive. He's been surrounded now. भाई अगर ये एक भी नहीं मारा ना वैनिटी, छी साला बेटर। अबे उसके साथ में ही नहीं आया वो आगे। हाँ ना भाई। फ्लैश करता नहीं उसको स्पॉट ही नहीं हुआ था ना कोई, तो आई गेस फ्लैश इसलिए नहीं किया उसने। Understanding that C9 wanting to go for those flames. 100T घर ही चली गई क्या? ये 100T घर ही गई? मेरे को नहीं लगता। लीड चले गए अभी क्या? आपकी स्ट्रीम टीवी पर देखना सेफ है? हाँ। डिफेंस मैप पे वैसे भी। It's dire. And by the way, he took this showers area without any utility. जेपा पे अल्ट आ रहा है। Just used this dog recently. I mean आ गया है। When we saw him in there earlier, he didn't use anything. He just checked it. So that's a lot of info gathered. रात की स्ट्रीम दोपहर को देखता था। अबे देखना अभी लाइव सबका देख रहा एम हूँ। झूठता है वे देखना। क्रॉसर प्लेसमेंट क्या है देखना। वर्ड्स ऐसा लगता मार देते सब। पहले सबका ऐसा ऑन पॉइंट रहता था एकदम। And instead it's MIBR who have lost the weapon. It's so awkward for a JZZ right here. I'm really surprised. अच्छा क्रॉसर प्लेसमेंट जो स्विच करते वो सर के 100T ओके। Game has changed. C9 starts off strong, right? टाइम आउट आएगा अभी। अरे भाई टाइम आउट। ये कितने टाइम आउट ले रहे भाई? MIBR bringing it back after their timeout. And भाई यार KO है ना, ऐसा डेंजर इनिशिएटर है ना भाई, लेकिन फ्लैशेस के लाइनअप्स आने चाहिए। ये देख भड़क रहा है ये। लोगों को जितने लाइनअप सोवा के आते हैं ना, उतने लोगों को अगर KO के लाइनअप्स आगने लग गए ना भाई, तो KO अनस्टॉपेबल एजेंट है भाई। चैट ट्रू और नॉट ट्रू जल्दी बताओ। पाउसा जल्दी बताओ भाई, ट्रू और नॉट ट्रू। भैया केमिस्ट्री का एग्जाम ऑन 27 एनी टिप्स? भाई मैं कॉमर्स वाला हूं यार। कौन क्वालीफाई हुआ एशिया में? पैसिफिक में? नहीं जी नहीं हुई। जेनजी, अबे आज जेनजी जीती भाई PRX के अगेंस्ट। जेनजी और PRX हुई। तो वो लोग क्या अभी नॉट ट्रू में आएंगे चैंपियंस? नहीं मास्टर्स। तो एशिया से खाली एक ही टीम जाएगी के दो? कौन सी PRX और जेनजी? हाँ still a very close game, Doug. कल कोई स्ट्रीम है फिर दिन में? इसमें पॉइंट सिस्टम है ना अभी? हाँ पॉइंट सिस्टम। And let's see what Oxy can do with this Yoru चैंपियंस wall. में जाने के लिए तेरे को ज्यादा पॉइंट्स लगेंगे। In that last series, he was getting punished. कितने वो पता नहीं, लेकिन ज्यादा लगेंगे। By the likes of NRG. Yeah, we've only seen it once this half, if memory serves me right, and it didn't amount to very much. Yeah, he just tried to get info around the B area. अच्छा रोजा है क्या माजिन? On A, so. मैं नहीं रखा। Look at how much respect they're showing. No early knife from Mazin this round. They're so far back. They're expecting aggression from Cloud9 and it's just not coming. And honestly, that's something that's very common that you see. A lot of teams believe that, you know, after a team pauses, okay, maybe they're gonna do a set play. रोजा नहीं है शबे कदर है भाई। ओह इतना आइडिया नहीं है रे मेरे को, बट हाँ माजिन ने बताया थोड़ा बहुत। अरे वो नहीं खेलता है अपना, ये नहीं खेलता है। ये के टीम को जी ने हराया भाई।
jiggling Wait, corners. वो इसमें ना bleed में लीड ना में हाँ Sees nothing on the dog. I mean, Free real estate. वो बी फेक कर रहे ये लोग नहीं बे बी पे जा रहे ओ भाई साहब जेपा को फोड़ दिया He continues to shine. full phantom अरे भाई लड़कर्स ने 2 जन को मारा है और ये लोग बी जा रहे हैं It's so clean from MIBR. What's tough here too is they got all of these kills on A, but the hit was B. The spike was B. That's where they wanted to go, but भाई MIBR मचा रही है बे बहुत clean खेल रहे हो लोग हाँ और Cloud9 का अभी टाइम आउट हुआ है What their game plan is. They understand that. ए ये कौन सा नाइफ है Dog belong, right? That's gonna cause the defenders to Xenon Chat? है ना उन्हें नहीं कोई और नाइफ है ये शायद नया वाला नाइफ है जो अभी Oxy आया starting to move off of his shower angle. है ना Gets chat? picked off Is by that the new somebody knife? holding him, right? That was RGL. FRZ was already pushed Is up that the new knife? into Xeno that enter U-haul नहीं with था his वो Viper lurk utility, right? Gets another guy that was rotating from hookah to maybe TP. अबे वो नया नाइफ है जो अब तक आया नहीं है मार्केट में Of C9. ये क्या फ्लैश है भाई अरे भाई भाई स्विंग करते क्या वो ऐसा खेले ये तो हो गया हाँ नया वाला नाइफ है ना ये अबे नया नाइफ है ये देखो Six rounds in a row, the financial situation for Cloud9 just continues. नए नाइफ नए बंडल में नया वैंडल भी है उसका साउंड सुनना है मेरे को A guardian to work with, and this is again, we talked about RGL, how good he was. FRZ was finding value on the other side of the map. Vanity got caught. देख रहा था क्या स्विंग करके मारा आर्जिन ने And all these kills based off तू of a फैंटम नहीं reaction खेलता from ना one अभी dog. भाई मैं दोनों खेलता हूँ Caused Oxy to peek out of shower, move from his spot. When Oxy goes down, now the hookah guy अनअपग्रेडेड है ये or the U-Haul तो guy is trying to मतलब get info again. on उसका Khelraay. एनिमेशन वगैरह आ गया है Just getting suffocated around the entire map. Here's some of the और नहीं aggression उसका that MIBR were expecting. 3 have just been pushed भाई down नहीं a है भाई short अभी to C9 का As Jake is going to rotate back B, so they got to know the hit is B here. अच्छा smoke है नाइस No स्मॉली real knowledge of what's happening in showers, but a little bit of ruckus made on B, and that should confirm where the hit is. With B's up एंगल गंदा है वो ओह but he can't. निकाला भाई एक Just निकाला one found, ult invested, the flash out as he lands it. अर्र Vanity and MIBR again find success. वैनिटी रोज वैंडल में फैंटम मिल गई एक फ्री Flipping the site from MIBR. भाई निकाल सकता है This निकाल is- दे भाई this is winnable here for नहीं यार Cloud9. लेकिन Zephyr इसके has a पास rifle, Oxy has a rifle, they both फिर have भी ults, वैंडल है रे and it's a 2v3. भाई ये लाइनअप पे गया है क्या नहीं नहीं अच्छा सिटी पे ही खेल रहा Can है he do it again? ओ ये भाई It's all on to Oxy now. Understanding where the first is, couple shots clean. स्टिक करने वाला Tap onto the spike, the flash out. No challenge yet. Just buying his अरे time. यार इसका He मॉली doesn't take that, does he? No, he doesn't. नहीं। And RGL turns on him. Oh, that was नीचे almost वाला फ्लैश something. देना चाहिए था हाँ ना Looking very वो clean dodger right now, Doug. Round before the switch. Not letting it slip away this time. They're just rolling. भाई ये लोग स्काई के फ्लैश डॉज करते हैं भाई तो योरू का क्या ही है अरे एक और निकल लेता ना इसका मजा आता हाँ लॉन्ग पे ना Oxy not letting Oxy just वो फिर काफी भी निकल वैनिटी जाता क्या कर रहा है रे उसका हेल्प करता ये भाग रहा है वो तो एल्बो में भाग रहा है Last time they played. 2 बार मारा वो एल्बो में And talk about resilience too, like for the mental. Being down अबे 0-4 वो off वही the था rip. ना It's सेंटिनल such का an बंदा था important ना match for your team. क्या मालूम बे Live or die. Yeah. भाई ऐसी कोई वैलोरेंट देखने वाली मिल के जाए ना भाई वहां से You've got to commit. You've got to convert. You've got to do it here. C9 have been sitting on these ults for खाली कोई like the मिल last जाए 4 भाई rounds, but they've been getting so outplayed that they can't even use them. Perhaps a bit more willingness to invest those here. Mazine gets the ult again. I feel like they've just farmed this orb. All have. And look, they've भाई मैं सोच constantly रहा just ना been इसके walking जैसे in बाल कर showers. दो But C9 is here to check them. इसके ना ओह I mean, भाई they're getting everything they भाई want. पर डिफ कर दी इस Zephyr with a अरे great trade, though. इसने अल्ट किया था Commit the ult. They've got the नहीं, secret उसने zone as well छोड़ for दिया। Vanity on the opposite side of the map. शायद अच्छा छोड़ दिया उसके बाद अल्ट कनेक्ट हुआ शायद There's a हाँ। big timing that our team can hit here. क्या दिमाग लगाया बे लेकिन They just उसने cut noise, they throw the बट brakes वो on अल्ट it की again. वजह से रुके हैं वो लोग I really like this from MIBR. I really like how they're approaching this. Putting doubt in the minds तू of किसका अल्ट C9. बोल रहा है You might see TP up. ज़ेप्पा का ना मतलब केओ का नहीं बोल रहा हाँ हूँ केओ का अल्ट बोल रहा हूँ हाँ मैं बट And he has वही full वो utility. But they're मतलब ओ वो भाई, खोला वो rotate कर लोग का रहा है। टाइमिंग हुआ the double lurk strat, Doug. The thing is, Cloud9 haven't moved a ton. I mean, Oxy flipped because 30 he seconds could, because left. of his TPs, and he's already back A.
They keep trying to find just a small time window to find weakness in the defense. भाई ब्रिमस्टोन प्लांट करेगा तो वो अल्ट और लाइनअप पे खेल सकता है. Now they're going to commit. अरे हक दिया ऑक्सी. वो ओके ओके भाई फ्री राउंड मिल गया भाई. साइट वाइड क्लियर ही नहीं किए. निकाला भाई. अबे लेकिन साइट वाइड वो लोग देख ही नहीं क्या. टाइम था ना शायद, क्या पता. टाइम था. चेक टाइम था ना. घाई किए गए लोग. टाइम था ना इन पे. बचपन से वही क्रॉसर पे खेल रहा है. भाई ये बहुत अच्छा फैंटम चला रहे हैं. टाइम था वही. लॉन्ग भी नहीं देख क्या उसे कहते हैं, बैक साइड पे 2 बंदे थे भाई. कोई बात नहीं, अगली बार है ना मैं इनको स्ट्रैट बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा. मैं जहाँ की वहां पे खेलूंगा उनके कीबोर्ड से, तब जाके है ना फिर मैं अच्छा खेल पाऊंगा. बराबर की नहीं. वैसा बैठे ना, इसके लिए पीठ में प्रॉब्लम होता है. ऐसा बेटा देखा नहीं मैंने. ऐसा आगे हो गया, मतलब अपर बैक को रेस्ट नहीं करा है उसने चेयर पे. ये कैसा बैठा है देख बीच में. हाँ एकदम परफेक्ट पोस्चर नहीं बैठा है उसने. भाई लेकिन उससे ही लॉक इन वाली फीलिंग आती है यार, जैसा ऑक्सी बैठा है. समझ रहा है ऐसा. हाँ वो भी है ऐसा है कि नहीं. चैट तुम लोग कैसा बैठते हो. देखो ये फर्स्ट ये है, ठीक है. ये फर्स्ट है, ठीक है. ये फर्स्ट है, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. तो कैसे बैठते हो. He's somebody who I think is going to develop into a great duelist for थर्ड बोलता है. अरे भाई पादरे तू इसलिए फेल होने वाला है, मालूम क्या. Last season lacked a star player, like an X factor player, when he, was ultimately benched from the roster. Sure. And now they have somebody who 1.5. Very good answer. Like they let him overheat, and for a rookie to overheat like that, yeah, you're gonna get punished. भाई कोच नहीं, प्रोफेशनल एनालिस्ट. Yeah. That he has the confidence. Me and my half body curved on bed. So just get better and better at it. 1.5. झुका हुआ back, camel back. Like, yeah, I love this style. It feels a lot like you. लेटे वाह. He's just fearless. भाई यार मुझे जानना है ये क्या है. I like that he's testing those boundaries and मूंगफली है क्या वो. How much he can get away with. भाई लोग को जरूरी है क्या ऐसा कुछ रखने को. अब पटेल ही मारते भाई सब. He'll know when the right moments are to overheat. क्यूट बनने. And ultimately, I mean, if you're building a team, if you're putting together a roster that is so fundamentally sound, you want that on your team, right? You want somebody खेलता हूँ भाई. 1.75 ठीक है. समझ गया. अबे वो लोगों को रेड बुल का बॉटल मिला है ना वो. अबे हाँ ना मैं भी वही देखता हूँ भाई. हाँ ना कैन वैन नहीं भाई, डायरेक्ट बॉटल. बट उसमें कैफीन भी उसका ज्यादा रहेगा. कितना पी लेते रहेंगे भाई. It's like the level of duelist is so high, sure, that you need to have somebody like that can just get you these 4Ks. अटैक भाई अभी इस Cloud9 का अभी मचाएगी ना Cloud9. उसने सीधा शेरिफ लिया है. तो क्या भाई डरता नहीं वो. उसने कुछ ही उटिल नहीं लिया बे. अरे मार देगा, भरा देगा. Wow. अच्छा उन्होंने 3 टीपी किए. From C9 getting the first blood and they had sight, but they heard 2 people through the TP. And they take a counter TP. सीधा यू टर्न लेना पड़ रहा है भाई. कंफ्यूज हो गए अभी. सिस्टम हैंग हो गया इनका. How is Seppa in? Oh, we're here again, are we? In spawn right now. ये कैसे आया इधर भाई? We're back to this. I Chad, ये कब आया इधर? And they let Seppa do what he can. No way. Yeah, RGL continues to भाई ये देख क्या मालूम. ये देख ना ये दोनों थे. He had the play, he had the timing. Oh, and now look at this. If they creep up A, you've still got 2 members from MIBR who are behind you. Oh, Surely bhai. you're not expecting that. निकाल देगी रे. I say that, man, he turns around, he cleans up parts in. Expecting a second. He saw the foot. 30 seconds left. Nobody expects the double. No way. RGL again. 3 bullets left. It's 2v2. 2v2 and the spike is TP मार रहे. try to flip the map. They succeed. They've gotten out. And they better लोग दोनों अलग-अलग आ रहे हैं बे. भाई ये 1 HP है जेक. 10 seconds left. Any util to think about. हार गए C9 ये राउंड. But he tries to flood out. He tries to take matters into his own hands. भाई क्या कॉन्फिडेंस है वे उसमें. उसका बंदा आंध्रा में इसने पीक किया है. First dog kill. मर गया. और व्हाट? को पता था वो जिंदा कैसे? Not able to land. अबे ये जिंदा कैसे? Too much for him to deal with there. अभी शायद नहीं पड़ता है ना डैमेज. That pistol's huge, man. And seeing in there, I don't know if they got delayed by Molly. I wasn't able to see, but
चट कुत्ते का डैमेज नहीं पड़ता अभी. Maybe they should have fully committed on अरे that. यार. RGL's Molly. So he did molly them off. Yeah, All he right, had never left A. अच्छा डिस्टेंस के कारण हुआ शायद. As soon as the एयर में शूट किया. positioned and dropped it, there was no way for them to get out. Skyner. Great job from RGL in that entire round, killing the flank. Beautiful पड़ता है. and clean shots. लॉन्ग रेंज दूर था इसलिए. ओके 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 दूर था इसलिए. Sets up the entire retake for them. एयर में शूट किया इसलिए कंकस है. डायरेक्ट करता तो हो जाता. 3 retakes that round. Retake on B, retake on A. Now we've seen this out of Cloud9 a lot so far in this kickoff tournament. They're forcing after Oh, force kiya. this situation no different. They've got stingers, G they've fighting. got specters, they've got a little bit of everything. And G वाले लोग MIBR force definitely करते हैं. reading into this, and that's why you see the Viper Molly out there. Yeah. Huge. नहीं सभी नहीं करते. Perfect anti-eco. G वाले काफी anti-buy, ज्यादा करते थे. honestly, from MIBR. A lot of teams opting to buy, like you said, and usually they go through hookah, get those close range fights. Room of finding a little something. Very smart of Oxy to break that with his classic. Might put doubt into the minds of MIBR if this is a buy or not. Come on भाई Cloud9 निकाल के दिखाओ ये राउंड. फोर्स किए ले बच्ची. They haven't shown much, but they also haven't really taken much. The only real space they had was showers, and then Oxy had to give it back. Dagger should be coming back online here for this hit. भाई बुलडॉग बहुत डेंजर गन है. Won't be here in time, but ओह डिंक खाया. अबे वो नया गन आया वो यूजलेस है ना. They're doing such a good job of keeping him back with utility. The KO Molly, the Brim Molly from the previous round. MIBR just not allowing. खत्म कर दिया भाई. Wow. भाई सैड कर दिया वे Cloud9 का. नेक्स्ट मैप है रे सीधा. I gotta be honest, man. भाई ये मैप पिक इनका है Cloud9 का है. How do you deny players from going? अबे माजिन तू क्या बोल रहा है? आउटलॉ यूजलेस है. भाई ये लोग इनके रीजन में नहीं खेलते हुए अपना पैसिफिक में ना. सेकंड राउंड में भाई मतलब फर्स्ट राउंड जीता ना तो सेकंड राउंड में भाई डायरेक्ट आउटलॉ ही निकालते थे. क्या खेलते थे भाई आउटलॉ से. अबे मैं बीच में खेला था उसमें बट मार्शल के ऐसा ही सीधे ना हेडशॉट पे खाली मरेगा ना. नहीं बॉडी शॉट पे 140 है ना. अच्छा तो आर्मर नहीं रहेगा तो मरेगा. मार्शल में नहीं मरता है ना आर्मर. नहीं नहीं. Yeah, the best भाई ये utility is the फुल Vandal, I guess. सबसे इसका लाइनअप ही हो रहा है लास्ट राउंड में इसी Knife बार. getting a little info. Whippy once again finding a kill, और but इसने we'll just continue to wonder how. स्टिंगर से मारा उसने. चैट्स बढ़ता ही नहीं जा रहा है. तारिक की स्ट्रीम देखने आ गया ऐसे क्या? Molly's a little late this time, but Artine is not. पोलवी भाई अपने हाँ पोलवी भाई क्या खेलते थे वे? पोलवी भाई कुत्ते माफिक मारते थे भाई आउटलॉ से. इसमें वैलोरेंट की प्रॉपर्टीज में गया हुआ पे गेम 62 GB की है बट गेम कितनी GB की है ये मुझे पता नहीं है इसलिए सोचा आपका भी टाइम वेस्ट करूं. This is a crucial round for MIBR for not just confidence when they're up numbers but for how their previous matchup went. कॉमर्स में 11th में स्टूडेंट हूं फेल हो जाऊंगा. ऑल द बेस्ट. फेल हो जाओ. 5-10 हो गया भाई. कैसे हार रही है भाई C9? That's a 5-round lead for MIBR. भाई घर जाना है क्या इनको? भाई अटैक में जीत रहे तो डिफेंस में जीतेंगे. In the first half, MIBR still managed to reestablish control. And this is the danger. भाई बाइंड अटैकिंग मैप लगता है बे मेरे को. Oh, he didn't even see vanity. Free, yeah. He could have gotten 3 kills right there, honestly. माजिन इंडियन है नहीं. ये वाला इनके टीम का माजिन इंडियन नहीं है. Coming in to honestly. मेरा तो कल इंग्लिश का बोर्ड्स पेपर है और तू इधर क्या कर रहा है टट्टी? Already 10 rounds on the board for MIBR and this first gun round, Oxy doesn't even have. भाई साहब ये क्या पुश है? हक दिया ये हक दिया. वो नहीं मारा. ओ भाई वैनिटी ओपी. गोटेड भाई. हाँ. But can FRZ do a bit of the same on the opposite side of the map? Create नहीं किया तो. Seekers used. JZZ trying to do his तो best. टीपी मार लिया. Is he gonna commit to this flank? भाई वैनिटी खेल लिया भाई. Picks up the vandal. Yeah, he scoops up a weapon. He is gonna go the conventional way. 3v4 है भाइयों. Cloud9 have taken U-Haul. They're concerned about what's happening behind him. You've got Whippy who's making sure there's not a late flank as the dog clears out वो लोग showers. क्यों जीत रहे मालूम है MIBR? क्योंकि वो लोग पे 2 इनिशिएट. Here's the doors open up. Should be the info, but there is one on the flank. But मेरे को अभी ये मैच थोड़ा ऑक्सी इतना यूजफुल नहीं लगा. They've got to do something to get him out of U-Haul.
देखा जाए No real post plant with the SS mid, but again, I don't think it's going Round to है matter. देख. Or excuse me, Vanity with 3 on the round. FRZ left alone. 3v1. Maybe finds a way to play around his utility, but again, he's heavily outnumbered and outgunned here. Oxy's भाई stick कर रहा था ये. close and personal. अबे यही कॉम खेलते हैं बे बाइंड पे, डबल इनिशिएटर खेलते हैं या तो डबल डुअलिस्ट खेलते हैं. Either take short A control or take हाँ E बट control. डबल इनिशिएटर Very smart of हमेशा C9 to बेटर spread होता out है. onto that post plant, giving them showers control, holding the flank, controlling 2 areas of the map. भाई पहला रंगोली बनाया लेकिन भाई क्या मारा यार दोनों बाद में उसने. अभी मोमेंटम जा सकता है. हाँ अभी कुछ भी हो सकता है. लव यू अंशु. क्या घोर संकट है, दोनों साइड मेरे फेवरेट टीम है, किसको सपोर्ट करूं. लेमन तू स्ट्रीम देख, In that replay, तुम स्ट्रीम देखो. गुड मॉर्निंग आदित्य. C9, a lot of energy right now. मर गया. ओ भाई क्या होल्ड किए भाई, क्रेजी रीड. Our team takes a dry challenge. बी पुश किए लास्ट राउंड, तो ये राउंड ए पुश करेंगे. ऐसा रीड ओपी. A little bit too much. भाई क्या पकड़ रहे भाई फ्लैंक वालों को. दोनों वेस्ट कर दिए क्या अभी वो लोग ने मॉली. Through sand and short, but it doesn't pay नहीं off. वो नहीं देखा, लेकिन भाई फ्लैंक वाले दोनों को मार दिया भाई. Teams prepping against C9 now. I would understand that if I'm not seeing एक फ्लैंक को मारा और एक पुश कर रहा था उसको मारा. That he's somewhere holding the flank from spawn. समझ गए वे. इतना हारे ना Cloud9 अभी राउंड्स, तो अभी समझ गए वो लोग कैसे खेल रहे हैं. Even with the numbers advantage they have, though. Like he's still in spawn right now. Yeah, exactly. Let's see, putting doubt in the minds of MIBR. इसी में कौन है माजिन. When you're down 3v5, you just My want to friend. stack the site. Get the save in if they hit the other side. They've spotted one. Nothing really. सब स्मोक में खेल रहे. There. He could TP out or he could stay. Decides to go back showers and they're going to flip the map, but हाँ. What do रोटेट कर MIBR रहे do? They stay. केओ स्पॉट हुआ क्या. अच्छा केओ का नाइफ स्पॉट हुआ. हाँ तो तीनों स्पॉट हो गए. फ्लैश रेट भी गया. हाँ हाँ तो तीनों स्पॉटेड है. You rather flip the map or just play your numbers? I think they made the right choice here, right? Oxy got all the सबके info. केमिस्ट्री के You know पेपर है everyone's भाई. ready. You already had 3 people towards B that can beat the rotate. A lot of people would be surprised at how fast you can beat the rotate. दोस्तों लाइक मारो अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया. अगर तुम लोग लाइक करते हो ना तो अभी आप लोगों को है ना from the moment Oxy had seen चॉकलेट them मिलेगा. with his ult, even if they decided to run, you can कुछ तो already मिलेगा, get the लेकिन तुम rotation to लाइक 15, करोगे तो right? कुछ तो मिलेगा भाई. बहुत डेंजर That मिलेगा. 2-second timing, 3-second timing that they're सावी sitting कर रहे अभी वे सबसे MIBR. इंसेन प्लेयर कौन है debating if Valorant Oxy's में? going to go for a crazy play. सबसे इंसेन प्लेयर. It's enough time. काफी डिबेटेबल है भाई, लेकिन मैंने ना उस दिन डीमन 1 का गेम प्ले देख लिया भाई एनआरजी वर्सेस Cloud9 में, और मेरा हिल गया भाई कि मतलब बंदा कैसे खेलता है ऐसा. And you have to gamble stack, and maybe if तो मैंने हर रीजन, your role, हाँ मैंने हर रीजन का नहीं देखा. मैंने पैसिफिक देखा है, मैंने अमेरिकास देखा है. आसपास नहीं खेलता है. आसपास भी अच्छा खेलता है, काफी अच्छा खेलता है भाई, लेकिन डीमन 1 का जो है ना. So there's going to be enough to put something together. और एशिया में तो वो लोग ही रह गए ना 4 Just when सेकंड it felt में. like it was going to get out of reach, they respond. एशिया में in a very funny एशिया में fashion, टेक्सचर too, बक रहा है भाई. talking about how क्या खेलता है. C9 is the ones that were trying to टेक्सचर make कौन सी plays टीम and में now अभी? they just slow the whole game down. जेंजी में. Wait for MIBR to make the mistakes. I mean, down to a crawl. अपने यहाँ पे कौन खेलता है भाई गोटेड. समथिंग भी बहुत अच्छा है भाई. MIBR were the ones who messed up. जिंग नहीं खेलता है ना अभी, वो तो गया ना. नहीं हाँ. Jake is 1 point away from having his ult online. Thought they were going to maybe make a showers play. Just showing some early pressure. More aggression from MIBR. इसके रोसी भी अच्छा खेलता है. Nice little pop flash from KO. I think that was from CT spawn. Wow. अबे गवर्नर सिर्फ एक गेम अच्छा खेला बे, उसके बाद में ठंडा पड़ गया है. You have so much presence, eh? Very patient anti-eco right now. Dude, again, they're in spawn. Yeah. ये ना अभी भी होल्ड कर रहे कैसा उन लोग का इको है तो भी. These late flanks is like quiet pressure. समझ गए वे अभी Cloud9. अबे दिख गया यार, ये हल्का सा दिख गया. No pings on the mini map, but maybe. डबल पीक कर रहे क्या, ट्रिपल पीक कर रहे भाई साहब. Beautiful molly. समझ गए भाई. But can they fight through it? Oxy on the swing. JZZ punishes, but the spike once again. भाई यार क्या भारी यार, मतलब The right read from C9. बहुत क्रेजी रीड कर रही है Cloud9. Right, you can adjust. लेकिन फिर भी मारी भाई MIBR वाले.
3v3 आ गया. पकड़ेगा नहीं स्मोक किया. Mazin's here though. He is by himself. Has a sheriff. निकलना तो चाहिए भाई को राउंड. How does he play this? इतना भाई स्लो खेले और वो लोग ने पुश किया ही. मेरे को लगा नहीं करेंगे पुश. Cloud9 अभी बहुत स्लो खेलने वाली है हर एक राउंड भाई. अरे भाई ह्यूज किल भाई गया राउंड. गया भाई. सीडी वाला नहीं मरना था. Zep और Vanity अच्छा impact दे रहा है. Just saved that KO ult for a future retake. Maybe a more even one where we had a full buy and better positioning perhaps. कोई बता सकता है किसका मैच है? देख जब भी किसका मैच होता है ना तो यहाँ पे देख उसके ये दिखते हैं. हाँ. Are going now based off of pressure that they're showing in showers, understanding that in that exchange, Mazin is probably going to leave. हर्ष सो जाओ. ओके. But even if he stays, C9 MIBR को हराकर ही लाउड के साथ नेक्स्ट राउंड गई थी ना. हाँ. नहीं. याद नहीं. They continue to fight for showers and deny some of this space from Cloud9. अबे ये 4 सेकंड ने सबसे पहला खेला था ना वाइड पे. योरू क्या मालूम? हाँ वो पहले के VCT में खेला. फिर वो टेंस वगैरह भी खेले थे. He could fake that he's taking it. So many possibilities that you can do. ए शॉट पुश यहाँ पे Cloud9. ओ भाई अभी फास्ट पुश किया गया. अभी फास्ट गेम प्ले. ज़ेपा लर्क कर रहा है. ओ भाई ये लर्क को ज़ेपा को पकड़ेगा वो शायद. ओ भाई नाइस. ओ स्मोक के अंदर है. ओ भाई मार लिया. ये देख इसका लर्क देख साले का. अरे भाई क्या लर्क किया है. अभी डेंजर खेल रहे हैं अचानक से. हाँ ना भाई क्या लर्क कर रहे हैं. अभी 10-10 होके वापस MIBR जीतेगी तो. बहुत क्रेजी खेली भाई. ये इतना फास्ट किए लेकिन होल्ड किए भाई बाद में. और पुश पे वो लोग के ट्रेड लेते गए. क्रेजी. The clone was broken by somebody else. और किसकी मैच है थंबनेल में देखो. और टाइटल में भी है. भाई ट्विटर में जेई को इतना हेट क्यों मिल रहा है कुछ मालूम क्या? अभी वो होते ही रहता है भाई. रोज का. अब वो ये नहीं लगता वियर्ड नहीं लगता. Clinical outplays right now from C9. जी जीतने पे खुश होने वाले बहुत हैं और दुखी होने वाले भी बहुत हैं. भाई स्किन डेंजर है रे. हाँ ना मेरे को भी बहुत पसंद है भाई. ये काफी फास्ट पेस लगता है. कुछ हाँ देखना उस पे कुछ लिखा है. हाँ. ओ भाई क्रेजी. फिर ही कोई ना ये लोग का. 9-10 हुआ ना. 18 हुआ या 9-10 हुआ अभी को है ना. 10-10 फिर. And a wise time out here from MIBR. भाई ये इंसान तो पैसा ना दो तो मेरा चैट नहीं पढ़ता. वापस डालना चैट. ये ऐसा सब चैट मत डालना भाई. 5 घंटे में फिजिक्स का एग्जाम है पर मैं इधर आपके साथ VCT देखने में मजा आ रहा है. क्या करूँ तो भाई यार तुमको सोना चाहिए यार. सुबह उठ के पढ़ाई इंपॉर्टेंट है यार. क्योंकि सुबह जो उठ के जो पढ़ाई करते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. तो अभी इधर तू बैठेगा ना तो तेरा काम 25 हो सकता है. इसके बाद सेंटिनल्स का मैच है. ओ भाई सेंटिनल वर्सेस लेविएथन. उसमें ये आसपास. नाइस ग्लासेस ब्रो. थैंक यू. मतलब नेक्स्ट मैच और हार्ड रहेगा. स्ट्रीम डिले है नहीं बे. भारी होएगा. Hanging on to a lead though. Albeit a small भाई तेरे चैट में 70% बच्चे 70-80%. Having earlier about how oftentimes on the opposite side of a timeout you're expecting something, right? Like what's a set piece they have? What are they going to want to do? क्योंकि सब लोग मेरे आसपास के एज के ना तो सब लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो लोग रिलेट कर पाते हैं. The don't move for 30 seconds. Call that red walling on my previous team. आपका स्ट्रीम डिले है नहीं. जी का मैच कब होगा? जी का मैच अभी अप्रैल में. And again, it's just like I said. If you see C9 not taking early control of anything, with Sky Util specifically, you should have an idea of what's going on.
Yeah, but have MIBR clued in on that? भाई That's the यार question. Cloud9 एकदम सन्नाटे में खेल रही भाई, हारने नहीं उनको। अबे वो लोग फोर्स किए क्या? हाँ भाई देखना सब स्टिंगर और वैंडल खेल रहे हैं। नेक्स्ट बाय है लेकिन सबका। भाई ये राउंड Cloud9 अच्छा खेल रही है। स्लो लिए एकदम। वो लोग ने थोड़ा लिए कंट्रोल। Yeah, who's where? Maybe draw out any utility they can, just like the dog right अभी there. सबसे फन एजेंट कौन सा है तेरे हिसाब से? फन एजेंट? हाँ, ऐसा कॉम्पी में। भाई योरू खेल के देख भाई मजा। सॉरी योरू बोल रहा हूँ, आइसो खेलने मजा आता है भाई। वो ये लोग खेलते क्यों नहीं है रे कॉम्पिटिटिव में? आइसो का बफ इसमें नहीं है। Everything is just so आइसो है ही नहीं मतलब। आइसो है लेकिन ओ भाई क्या ट्रेड लिया। 30 seconds left. They've gotten out onto the side and they're gonna flip the map again. No way. Because Whippy's भाई Cloud9 डेंजर है भाई। देखना वो VP हाँ एक्सपेक्ट करेंगे लेकिन उसको नहीं कर रहे हैं। अरे भाई हग दिस No, I just don't think they have the weapons here. क्रेजी भाई। अबे वो किल निकलता ना तो इन लोग का हो जाएगा। ओ भाई यूएनिटी Continuing to frag 3 on the round for him. यू हॉल वाला मरता तो ना। Putting things in your own hands, man. Yeah, Vanity's become the brains and the brawn here. Vanity IGLing masterclass right now. अबे कल पहली बार कोई तो EG का प्लेयर डेडलॉक खेला। That was such an important kill on Heaven on RGL. If RGL gets that kill, this could be a completely different round. डेडलॉक का इतना समझता नहीं था वो ट्रैप वगैरह। भाई बहुत क्रेजी एजेंट है। Rotations come through and और maybe there's something perhaps an upgraded weapon. ये तो आपके जैसा हगा प्रेम। हाँ क्या? हगरे? He's got a smirk on his face. Trying to find the solo stinger. But I think FRZ just wants to die to bomb here. अज भाई से मुंबई में मिलने के लिए क्या-क्या करना होता है? Or Vanity an extra alt orb. ऐसा डायरेक्ट कैसा मिल सकते हैं हम? नहीं मिल सकते। Blow for blow. तो अभी तो कितने बजे तक वॉच पार्टी करेगा? सुबह तक। कितने बजे मतलब? 9 बज जाते हैं एटलीस्ट। हाँ 9 साढ़े 9। सोता है कितने से सो जाता हूँ फिर आराम से। Just icing on the cake, but that Heaven fight was so crucial. हाँ जॉगिमो ने खिलाया था। जॉगिमो। That's now 5 rounds. ये BO3 है ना? हाँ मेरे को लगता है 2-0 होएगा जो भी खेलेगी। मतलब ये 4 बजे तक खत्म हो गया है। It's just so tough for MIBR because they feel like every time they're going for these reclears, they're getting punished. नहीं वे जा सकता है Now टीम they're में। not reclearing, that opens up the entire map for C9 to use these teleporters and do all these तो भाई आउट आ गया। दोनों आउट आ गए। defensive manipulations. I mean, this kick was filthy out from Cloud9. You had the Foxy Roomba up, baby. you had the dog up showers. They take everything so cleanly, and I mean, this is a perfect time to inject pace into the round. भाई शावर आ गया अल्ट खोल के वो। They've been so slow, they've been so methodical, and then this time, right out वो of the दोनों gate, शावर आ गए, दोनों they मॉलिड commit है। everything, hold W, and they get the site, they get the round. भाई क्या खतरनाक खेला वे। Great IGLing right देख now. अभी I राउंड cannot निकल रहे stress ना it अभी enough नेक्स्ट for राउंड ये everybody लोग out there प्रो नहीं watching. करना चाहिए। ये तो फिर हो जाएगा फिर। Because I mean, ये तो भाई कैसा अचानक फास्ट खेले ना। right? You don't really know what to expect. क्रेजी भाई देखा बस्ट आउट किया कि इतना टाइम से ना स्लो खेल रहे थे भाई साहब अभी काम 25 कर दिया Cloud9 ने। So slow, waiting for अगला राउंड भी फास्ट खेलेंगे भाई मेरे को तो लगता है काम 25। नहीं बे योरू का अल्ट टीपी भी मार सकते। Honestly, the hit was a back sight fight as well. हाँ वही मेरे को भी वही लग रहा है Cloud9 का हाथ गर्म नहीं हो रहा है। अगला गेम में ना हाथ गर्म होएगा और काम 25 करेंगे। Confidence has just been भाई तो खेल पितिया है ना क्या? 4C9. जी का मैच अप्रैल में होएगा अभी। Take a look at it again. Yeah, exactly. डेंजर है में भाई। So far up, Vanity just continues to go nuts. I mean, you can see it. The frustration. Sad हो गई यार। The confusion. It's just अब sad हो गई। It's so tough because they've tried playing aggressive. Now the one time they're playing back. भाई मैं आपका सारा फाल वर्ल्ड का स्ट्रीम खत्म करा थोड़ी देर पहले। 27 को एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा। Basically back sight. Oh, that flash didn't make it out of TP. Not that it matters. एक्सक्लेमेशन बोर्ड्स डालिए दोस्तों। वो वाला एग्जाम देखो। वो वाला वीडियो देखो। फायरमैन भी लोग पुश किए वे। देखना वो लोग। हाँ ये पुश किए वो लोग। No knowledge of what's happening A.
भाई एक 3 मिला। And with Oxy's ult, they're going to find out that the site's completely. नहीं मैं देखा नहीं शावर में क्या हुआ बे। नहीं उसने अल्ट और फ्लैश ये अल्ट बोल रहा क्लोन और फ्लैश किया ना तो वो लोग तीनों पुश कर रहे थे ना। अच्छा रीड कर रहे हैं। ओ भाई रीटेक ओपी। सीकर दे रहे। They're so far back here. They're not playing a touch. लाइन पे क्या? Are they sticking it? अबे वो स्टिक कर रहा है। Mazin's gonna fall, but Mazin's gonna take the defuse all the way. अरे भाई 4 जन बचे थे C9 के 4 जन। And that's the round MIBR win. I mean, it doesn't have to be pretty, I guess. भाई ये ऑक्सी The हुक्का के economy बाहर is still in चले गए। shambles though for MIBR, even though they got that ninja defuse. अच्छा रीटेक किया। They were just so far back. And honestly, up until this moment, अबे ये लोग का स्मोक है इतना गंदा। not letting anything ये लोग का मतलब देखा तू C9 का स्मोक था। नहीं डिफेंडर स्मोक था वो। नहीं रे लाल स्मोक था देखना। तो ऑक्सी को लाल दिख रहा था। नहीं वे उसको लाल दिख रहा था। उन लोग के सामने वाले बंदे। इन लोग का A little स्मोक bit था। more of intent out from MIBR. क्योंकि उन लोग ने तो ऑलरेडी शावर वगैरह में स्मोक कर दिया है। Down short, they want to take this fight into showers. स्पाइक पे उनका ही स्मोक था रे। He's created some space. I believe the Oracle's picked up by Mazin. He's now 1 point away from having his ult online. उसने गलत स्मोक किया उसको थोड़ा पीछे स्मोक। हाँ क्वालीफाई नहीं किए जी। साइड के लिए स्मोक करता है। With the Sky Dog going through here. That's what I would call right now if I was C9. Well, there's the dog. No Brim ult though. Oh, he's waiting. Coming now. There it is. Pushing him back. Oxy ओ got through though. भाई ये यहाँ पे कहीं से आया बे ऑक्सी टीपी किया क्या? By RGL. Spike still hasn't made its way out of showers. Mazin playing close. That's all instantly popped. 4v3 Spike's still not playing it, and RGL's hiding behind the smoke. Oh my gosh. I think Jake is aware. Does not swing, भाई does not ज़ेपा अगर एक भी मारा ना तो काम 25 हो सकता है क्या गेम का? और गया राउंड गया। ओ नहीं नेवर माइंड। ओ भाई राउंड है। भाई 11-12 So cold from RGL. ओ भाई क्या राउंड हो रहा है? Understanding what his job is in that round. ज़ेपा हक दिया रे अटैक में। मजा तो आ रहा है चैट गुजी बोलो मजा तो आ रहा है खोपड़ी खोपड़ी शोपड़ी हो रही भाई सब ऊपरी ऊपरी खोपड़ी खोपड़ी ऊसा कोमले कोमले गुड मॉर्निंग तेजू भाई क्या शॉट्स मारा है भाई you think भाई कैसा खेल रहा है कि क्या कर रहा है भाई ये ऐसा ही बस है Some things to look into if you're C9 for the future. एक मेरा भाई मचा रहा है Duality of man. Right back into the action. MIBR भाई ये शॉट पुश कर रहे हैं वापस पुश कर रहे हैं यार भाई क्यों भाई What a gamble from MIBR. That's now 2 rounds where they've tried taking contact aggression up short and it's failed. हक दिया वैनिटी ने I respect the confidence and the aggression. अच्छा वो मारा क्या मेरे को लगा मरा हो Worked up to this point. भाई वो लोग हक दिए बे MIBR वाले हक दिए And once again they're left in tatters. Just a couple members left with an attempt to avoid OT. Yeah. हाँ चैट MIBR ने हक दिया यार Good delay here. And you already see FRZ not moving his position. Maybe they'll TP. Imagine इसने सबको मार दिया अरे भाई never mind Freaking peppered. Let's go OT OT पे OT OT पे OT OT seems OT पे OT OT पे OT And I understand what MIBR was trying to do into this round. I trying saw. to catch C9 off guard, but it has not worked up to that point. And such a big round. Now सब लोग लाइक मारिए दोस्तों सब लोग लाइक मारिए अगर आप चाहते हो C9 जीते तो लाइक करिए अगर आप चाहते हो MIBR जीते तो सब्सक्राइब करिए Yeah, exactly. That is a good sign going into this OT. But you gotta just think if they had just done a normal setup, like every other round they had won on defense, maybe this map would already be over. Yeah, sure. या ऐसा ही खेलता है क्या हमेशा Players like that so early on. ऑक्सी एक हाथ में ऐसा टांग के रखता है उसका जैकेट We'll see what OT holds for us. पटेली आप आईफोन देखा ही नहीं
No glass cannons or anything like that. फिर unsubscribe क्यों? मैं तो बोला भाई अगर ये जीतना चाहते हो तो लाइक करो, ये जीतना चाहते हो सब्सक्राइब। unsubscribe क्या? ज्यादा तुम लोग के ज्यादा स्मार्ट बनते हो बे। Come on भाई, अभी Cloud9 को डिफेंस करना है जो उन लोग का टफ हो रहा था। But this is what you want out of your duelist, right? This is what you want out of someone who can inject a little bit of X factor into a situation. X factor. ए पे दो जन हल्ला कर रहे हैं और बी पे फॉरवर्ड गए। स्पाइक तो छोड़ दिया है, बी का ही सीन कर रहे हैं शायद। Perhaps with a little bit more noise, but बी a के तरफ ही similar जा रहे approach to what हैं Cloud9 was doing in the latter half of their attack side. भाई कोई ब्लाइंड नहीं हुआ लॉन्ग पे। अब बस ये भाई पुश ना करे। Big info here. This might cause a rotation from हाँ एक्सपेक्ट कर रहा है भाई, लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहा है। टाइम है रे लोग, ये भी निकल missed the knife lineup. Oh, and that could be disastrous for MIBR. अच्छा लाइनअप छोड़, no knife, no info gathered. He's beneath them. Oh, he was beneath them. Vanity was there and he was ready. He was waiting. यू हगे वालों में राउंड तो नाइफ Seems हो like they're गया gonna try to hold लॉन्ग this fight up का, close and उसका personal. बॉल They're both playing नीचे नहीं just on जाएगा the ना other अभी, side of this बट उन wall. लोगों को पुश करना पड़ेगा। MIBR not being allowed entrance. They're not being allowed to step out of the site. Whippy knew exactly where they were, and this hole just भाई been VP ferocious दो राउंड बचाया। from those two. Attempting to do it अरे themselves. हद भी है, Finally, the हद भी है reinforcements भाई, arrive, हद and भी is it है। too late? इजी राउंड था बे। अरे हुआ क्या? क्या गंदा हगे भाई। Do they know where he's coming from? He could be anywhere. अरे भाई क्या गंदा हगे। भाई वैनिटी ने क्या चापटी दिया था। C9 had that round. नो बट कैसा आ रहे हो लोग ये राउंड? All signs were leading to them winning that round, but they got a मेरे little को too तो कुछ समझा नहीं भाई कैसा आ रहे, क्या हुआ इधर? Retake emotions maybe overflowing in that moment to cause lack ठीक of है, good judgment. C9 का किल था। इधर भी C9 को किल मिला। इधर भी C9 को किल मिला। Octagon. अरे हारे कैसे भाई? इतने मार रहे थे तो। दो ही लोग थे वो लोग साइड में। Even Emmy knows. अबे बट ए पे तीन लोग थे तो वो लोग तीनों कैसा Slipping away at possibly the worst time. ओ भाई ये देख वो लेट आया ऑफ से पीक। अरे भाई ज़ेपा चापटी दे दिया भाई। एसी वजह से हार रहा रेस से। फ्लैश आउट कर रहे भाई, फ्लैश पिक कर रहे ये लोग। ओ हक दिया भाई, फ्लैंक भी आ गया। ओ माय गॉड जीजी भाई। ओ ओके ब्लिंक हो गया लेकिन। ओ भाई ऑक्सी का क्या पोजी है ये? Oh my gosh. ओ भाई ऑफ वेट, वो ब्रेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। नहीं क्योंकि वो कुछ सुना ही नहीं, अभी एक्सपेक्ट कर रहा शायद। बट वो लो है रे, निकल सकता है। He's gonna have to do it on his own. RGL with the smoke, FRZ with the spit. Portal closed. This is so tense. But they're playing it so disciplined, so carefully, so meticulous. गया टाइमिंग होने वाला। I mean, it's fundamentals versus playmaking right now. And Oxy has an opportunity. Yeah. They do have a brim smoke, and this is huge into this round, but Oxy's in such a good spot here. He gets the first. Drops him. ओ भाई इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो। Instantly falling. FRZ is going behind him. No smoke online anymore. I mean, Oxy's in such a good position right now. He's daring the challenge. No way! What a shot! What? Excellent response to what Oxy had just done to them. What? What a map from MIBR. Oh my gosh. Doug, that was insane. And I really got to shout out RGL into this game. His brim mollies. His mollies. Yep. Even in that last round, on point. Understanding that Oxy's probably wrapping भाई back POV short, दिखाओ Oxy भाई। did not pinch the shower guy in time. And that allows so much time for FRZ to get that flank in and actually regroup with RGL into that round. Oh, I got to go back very quickly to what we talked about at the भाई मेरे को POV देखना है भाई उसका। नहीं करता भाई, क्योंकि उसने ग्रीन बॉक्स पे प्लांट टैप किया है। उसका ही प्लांट था। उसका प्लांट नहीं, अरे हाँ भाई उसका ही प्लांट था। इसका प्लांट था, इसके लिए तो ये हो गया। Very high level Valorant being played right now. अरे भाई ये लोग भाई स्टार्टिंग से हाईलाइट दिखा रहे हैं, लास्ट राउंड का अब्बा दिखाएंगे इनके रिप्ले। Mazen and FRZ having the most first bloods for their team. At 5 for Mazen, 4 for FRZ. That's the KO in the Viper. अबे मेरे को तो लगा हारेंगे ही नहीं भाई। Here very shortly, but when we return, the desk is going to break down the first half. There's another map to go, potentially a third. You're not going to 2-1 होने वाला है, ये थर्ड मैप जा रहा है भाई। लेफ्ट हैंड वाले लोग बहुत डेंजर। भाई लास्ट राउंड दिखा दो यार।
भाई क्या रिएक्शन दे रहा हूँ। इमोशन से खेलता है क्या? हाँ अबे लास्ट राउंड ही नहीं दिखाए भाई, मेरे को देखना था। डेंजर बनाए रे ये लोग ने। ये एचपी नहीं था क्या उस पे जंप पिक के लिए? था एचपी, फुल एचपी था उसका। सीरियस सैड हो गया। अरे नहीं उसने क्यों पीक नहीं किया मालूम क्या? नहीं नहीं ऑक्सी ने जंप पिक क्यों नहीं किया रहेगा मालूम क्या? क्योंकि नहीं उसका पोजी पे गिव अवे था। क्या मालूम भाई, हो जाता रहेगा उधर, होता रहेगा भाई उधर स्टेज पे कुछ होता रहेगा भाई जो अपने को नहीं पता। उसके ध्यान में नहीं आया रहेगा। ये सब क्या लिख रहे? जोक 9 लिखते हैं भाई। क्या कितना वॉचिंग आ रहा है? देखना भाई सबको ही ये चाहिए भाई रिप्ले। क्या ये कम वॉचिंग है? हाँ मतलब पहले के कंपेयर में। पहले कितना आता था? तारीख को ही 1 लाख वॉचिंग आता था। अबे वो तो चैंपियंस वैम्पियंस में आएगा बच्ची। मास्टर्स में देख, मास्टर्स में फटेगा सब। चलो आ जाओ टाइम पास करते। वाइपर ने स्विंग करा था पर ऑक्सी का जिगल पिक ज्यादा हुआ। हाँ वो स्विंग अच्छा किया था भाई उसने। उसकले कले कामले कामले उसकले कले। और एक्सपीरियंस प्लेयर रहता तो जंप। भाई लाइक क्यों नहीं कर रहा भाई? लाइक क्यों नहीं कर रहा भाई? तूने देखा इसने ऑक्सी ने ना मैच खत्म होते साथ उसने पहले परफॉर्मेंस चेक किया किसको कितना मारा उसने। भाई सब लैपटॉप पे खेल रहे बे। 1 2 3 4 5 6 सब लैपटॉप। अरे भाई 7 8। माजिन इसका रैंक बता। 60 हर्ट्स। ये देख ये देख ये देख 60 हर्ट्स i7 12 जेन। अरे दिख रहा है नहीं 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 वो मैं किसी का तो क्लिप रिव्यू कर रहा हूँ वो दिख रहा है। ओ माउस अच्छा दिख रहा है क्या? ग्लोरियस है उसके पास। ग्लोरियस नहीं रहेगा ये, कूलर मास्टर का रहेगा भाई कोई। अरे वो एक ही बात होती है भाई। उन लोग ने पहले ऐसा माउस बनाया। इसका रैंक पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है क्या? वो कीबोर्ड पे नहीं खेलता रहेगा वो अलग नहीं इसी पे खेलता रहेगा, मेरे को तो लगता है इसी पे खेल रहा है। कैसा खेलेगा भाई? सीधा हाथ रख के खेलेगा ऐसा? हाँ जमता है भाई जमता है। खेलने वाला किस पे भी खेलता है। सिल्वर रहेगा सिल्वर। गोल्ड है ये गोल्ड। क्यों पूछ? क्यों? क्योंकि इसके पास माउस अच्छा है और हैंड स्पेस अच्छा है भाई, तो ये ना लो सेंस पे थोड़ा खेल सकता है। तो 60 हर्ट्ज पे तो आराम से गोल्ड जा सकते हैं। होता है ऐसा? होता है भाई देख तू। क्या कर रहा है? यहाँ तो उसका रियल सेटअप नहीं रहेगा, कुछ और टेम्पररी सेटअप रहेगा। ये क्या है? कैसे? टेम्पररी सेटअप है भाई। टट्टी सेटअप टट्टी। पढ़ा कैप। अबे ये देख पढ़ाई। मेरे भी एग्जाम्स है बे कब से? मार्च के फर्स्ट वीक से। तो पढ़ ले कुछ पढ़ ले, कल आ गया भाई मार्च। ये क्या यार ये आजकल के ना, आजकल के कल को है ना। और ये देख भाई क्या प्यारा सेटअप है। कीबोर्ड CFA इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री फॉर फाइनेंस स्टार्ट विद न्यूज़ भाई। मेरे को भी ये लेने का है साउंड बार। अबे ये बंदा इस पे नोट्स लिखता है। हाँ तो भाई पब्लिक उस पे ही तो करती है, आईपैड है ना। हाय क्रेजी यार। कीबोर्ड कितने वाला है रे इसका? रहेगा कुछ 200-300 का। वो कॉर्सेर अबे हाँ बे फोन है उसका। बोर्ड का अबे दिमाग है इसके पास, दिमाग है भाई इसके पास दिमाग है। पूछ क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम से, समझ रहा है, इसका एग्जाम से। हाँ बट वैलोरेंट तो खेलता रहेगा ना, तो घंटा नहीं खेलेगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। एग्जाम के टाइम वैलोरेंट ना खेले, इसलिए उसने ना भाई कीबोर्ड और माउस ही निकाल के रख दिया। बराबर। फाइनल्स देख रहा है देख, संडे के दिन पढ़ाई कर रहा है ये। 1500 का नहीं, ये 1500 का कीबोर्ड हो ही नहीं सकता। कॉम्बो रहेगा रे, वो कॉम्बो है। 1500 का कॉम्बो भी नहीं रहेगा भाई। माउस और कीबोर्ड। RGB गेमर भाभी, मेरे को RGB नहीं पसंद है मालूम। हाँ क्या मेरे को बुड्ढा हो गया भाई तू?
मिनिमलिस्टिक सेटअप बनाऊंगा भाई, मिनिमलिस्टिक। मेरे बिल्डिंग के सामने एक बंदा है रे, वो लैपटॉप गेमर है, हाँ पूरा दिन आरपी खेलते बैठता है भाई। स्कूल कॉलेज में लग रहा है मेरे को तो, पूरा दिन आरपी खेलता भाई है भाई, लाइक और नहीं पूरा किए यार आरजीबी तुम। सेटअप लगाया है उसने। अभी वो जैसा लेकिन लैपटॉप हाँ हाँ भाई, बोल क्या बोल कैबिनेट है भाई। बोल, क्या बोल रहा था? लैपटॉप क्या? उसका लैपटॉप वैसे ही रखा है जो वो बंदे का था ना पहले, हाँ, असेंड वैसे ही रखा है, और उसने जिस आसिफ पे भाई वैल्यू लैपटॉप क्यों भी नहीं रखा है खेलते ना, क्या उसके मालूम? भी चारों तरफ आरजीबी है भाई। और भाई ये उसकी क्या मम्मी है उसके बे? लिए चिल्लाती रहती है, मालूम क्या क्या भाई। उसका वो क्रेजी। देख, कूलर देख, कूलर। हाँ ना भाई, पूरा है ना खर्चा इस पे डाल दिया है। और फिर माउस भी डेंजर है इसका भाई, इसका इसका सब सेटअप डेंजर है, बनाएंगे, ये ग्लोरियस है माउस। सब रुक जा, उसका ग्लोरियस ही है उसका। ये दिखा कीबोर्ड जूम इन कर। वही है ना? नहीं ये रेड ड्रैगन है बे। रेड ड्रैगन या वो मेज या जी ऐसा कुछ भाई है, क्या बस वो है। सेटअप है भाई, क्या सेटअप है ऐसा बनाएंगे भाई एक दिन। भाई। लेकिन ये क्या है बे, देखना। शिट अबे मेरा भाई, जो कैबिनेट था ना पुराना, इसका उसको लिंक मैं ये एक लो बार ऐसा भाई। बना रहा था, तो है ना उसका टेम्पर्ड ग्लास ही मेरे हाथ में ही फूट गया भाई। चूर चूर हो गया भाई पूरा। फिर पूरे बहुत टाइम तक वैसे ओपन ही यूज किया। स्ट्रीमर है क्या भाई? भाई सब सबका यही है विषय भाई, सब है ना एनिमेशन। शिव है, अपन नहीं देखते एनीमे, एनीमे क्या है ऐसा। पूरा रात रात भर ही एनीमे देखता था मालूम क्या, ये अबे हगासा। वैसा उसका जो टेबल है ना, वैसा टेबल नहीं रहना चाहिए, गेमर है तो। कैसा? वो जो ऊपर बंदा था ना एनीमे वाला, हाँ हाँ, वो बहुत वियर्ड टेबल है भाई, पूरा सीधा टेबल लेने का। ये देख, ये होते हैं असली गेमर्स भाई, जो ऐसा हाथ पीछे डाल के खेलते हैं ना भाई। लोग लाइक लाइक किया है कि नहीं? किया भाई। 400 लाइक के करीब है हम लोग, लाइक करो अरे ना यार भाई भाई लोग। माउस, नॉस्टैल्जिया माउस। कोच लोग क्या करते हैं ये कोच, क्या कोच लोग, ये कोच प्लेयर्स से इसका ही ज्यादा सेटअप बढ़िया है। खेलते हैं क्या? नहीं, लेकिन उनके पास दिमाग होता है। डेंजर। अभी हम करेंगे रैंकेस। शैंक्स भाई ने डाला है। हाँ अब ड्राफ्ट के लिए रखा है भाई उसने, क्रॉस है ना, दिमाग है भाई। ओ गेमर है, असेंडेंट है ये। जिसका सेंसी है ना, सेंसी के हिसाब से बहुत असेंडेंट है, 100% असेंडेंट है। क्या बोलता है? नहीं सकता भाई असेंडेंट। 100% असेंडेंट है ये। फ्लैट नहीं असेंडेंट ही है ये ब्रो। अबे इतना अच्छा मारा उसने बे। अरे उसके क्रॉसर में आए रे, उसने देखना मूव भी नहीं किया, उसका क्रॉसर मूवमेंट देख तू कैसा है एकदम। मेन उसने हेड पे भी नहीं रखा है। ये अभी उसका क्रॉसर कितना अजीब है। हाँ वे बराबर, में ज्यादा बिना सोचा समझे बोल दिया। उसके क्रॉसर में आ रहे भाई। थोड़ा अजीब था बराबर है। माजिन को आता ही खेलने। At the end, what do you say to your team in moments like these? It's not really. We know we're better than them. It's just all fixing what's going wrong. So on defense, we're playing as 5 individuals, and on attack, we're playing as a team. So as long as we fix that, we'll destroy teams like this. Best of luck. तुम भी बोल दो ना कुछ यार। Map select. They need to continue to play as a team. You just heard Coach Jimmy say, but we are going to be going to C9 here. C9's Ascent. Rather, this is MIBR's pick. C9 on the defense. Sunset मेरा favorite map है भाई। C9 on Ascent. Look pretty all right here. This should be. ISO GOAT रखता है भाई I'd love to उसमें। see this go to 3, honestly. I mean, Vanity's calling us. कभी भी स्ट्रीम क्या भाई, रात में हम स्ट्रीम करते हैं भाई, जब भी वॉच पार्टी होती है हमारी। I'm really looking forward to watching. Some plat and even silvers players have good gameplay and aim, but hard stuck due to noob teams. नहीं, they are hard stuck because they play duelists, and that's why they are hard stuck. If they start playing controller ना, they rank up direct immortal. A third agent onto the A site with Oxy refusing to give Oxy ने jet लिया है। He will play forward that util. ये मैप He will जीतेंगे make sure he holds his ground. And Jake also क्यों? in the क्योंकि देख अभी एक मैप हार गए लोग,
हाँ सोलू का पूरा ना नर्वसनेस निकल गया। अरे वो बात ही नहीं होता है। टू लूज है भाई। जो स्ट्रॉन्ग टीम होता है ना, स्ट्रॉन्ग टीम होता है ना इसमें मैचेस में, वो है ना आते ऐसे उठ के एकदम ऐसा ऐसा आते और बैठ जाते बिना वार्म अप करे। तो पहला गेम है ना वो लोग वार्म अप के लिए खेलते भाई, मजाक से हटके। नहीं वे लेकिन वही विषय से है ना PRX हारी है, तो अभी Cloud9 भी हार सकती है। PRX का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे भाई। Give up mid. If they rotate that third A, W audience तो है अमन भाई। been exploitable to some degree. NRG sent crashes up the guts multiple times to try and get that info. आयन प्लेयर रैंक गेस करेगा तो ऐसे ही होगा। माजिन को आयन बोल रहा है। हाँ I feel like MIBR is लव really यू भाई, good at setting वेरी पोलाइट एंड एंजॉयबल कंटेंट, वेरी पोलाइट एंड एंजॉयबल कंटेंट। वाह भाई, up. I think पहली it can बार go कोई both मुझे ways, पोलाइट where बोला they can just abuse that mid control, or they kind of get nothing in their traps. Double And I feel like initiator, one thing OP. MIBR was doing a भाई really काफी good job balanced of as setup है, well was kind of taking composition their है। ones. I mean, we spoke a little bit about how it was a little bit questionable that they were aggressing, completely dry, no util, but going into it, like they just started taking their ones, and doing that right before an execute might be उन लोगों super ने beneficial. double duel इसलिए है क्या? And नहीं नहीं his single ही double है। controller, we saw this earlier. And I personally really like this comp. I did not think it was going to work, but I really like it. नहीं Well, नहीं let's see how this one pans out for MIBR. They Shut can up, wrap please. this up in Shut up two. बाद All में the अभी। C9 forced a third. Let's go find भाई, out and फॉक्सी send it भाई over to अभी your दिखा casters. दो We यार got Doug and आपका Baby for the call. जुब जुब दिखा दो यार फॉक्सी भाई प्लीज। Thank you so much, GB. Yeah, Dre, it feels like we're back to monkey business. क्या कर रही थी Viper, वो? Omen, on Ascent. We're starting ये to see baby teams पे caster deviate बन from what गया। has become the standard comp. उन राइट वाला क्या? Ascent, what are your thoughts on this double control? क्या था पहले ये? अरे वो फेज में खेलता था ना, जेट हाँ, क्या? खेलता था भाई। ओ कौन थे वो लोग के टीम में? अच्छा है वो। Some slow plays just to feel out the हर्ष भाई लाइक करना भूल गया था लेकिन अभी कर दिया। W's लेट्स गो, थैंक यू। हर्ष भाई आप मुझे इग्नोर क्यों करते हो? क्योंकि मैं शेमड़ा हूँ। But I do believe that C9 have played double controller on this map before, so maybe they will have a lot of experience and know what to do against it. Shut up या भाई क्या? चलो चालू मैप, लेट्स गो। C9 डिफेंस कर रही है, ठीक है। So far, not very much as far as pace goes. भाई उसने वो नाइफ इतना ऊपर डाला था, 5 सेकंड बाद लैंड किया वो। That's not the case. They've gotten past the shock. The dart still hasn't been Books आ गए। He's taking a little bit of decay. Stays alive for now, but और घुस गए। there's not much to really get out. It feels a little labored. We've seen this Omen flash before. दो बैकसाइड। Yes, we have Vanity playing backside with the classic overwhelm. दोनों जमा हो गए भाई। Wow. The timing might be good. रीटेक रीटेक कम ऑन। ऑक्सी भाई वन टैप दिखा दो एक ओ भाई बीमेन। अरे अरे फ्लॉलेस नहीं, एक ही मरा भाई इनका। है ना? I swear, like he's been nuts. Yeah, this entire turn. ये RGL मस्टर और FRZ बहुत अच्छे खेल रहे भाई। Standing point for MIBR. And Check. you know, when it comes to pistol मुझे rounds बताओ like अभी। that, it's like मैं अभी पोल वापस डाल रहा हूँ, ठीक है? वापस डाल रहा हूँ पोल। अभी बताओ, अभी बताओ। run the same pistol again, you know. Very similar वापस pistol पोल like डालूंगा, that. अभी बताओ क्या? Maybe they won't expect it back to back, you know. And these are like the little mind games that are being played between teams and strategies like that. But Yes. MIBR not second guessing that at all. Omen flashing already into the back site. That's a hard read though. That's problems, I think, for the side of C9. ओ अभी 50-50 आ गया। MIBR जीत रही क्यों भाई? The dog pushing forward. 50-50 अभी भाई, लेट्स गो। अच्छा है वो हेवन भी कवर करता है, देखना। अबे नहीं बट वो देखना गैप है उधर ना। हाँ वो गैप रहता ही है वो वॉल पे। बट वो हेवन कंट्रोल को हेल्प करता है। ओ भाई ऑक्सी क्रेजी। With a classic. And he two-tapped him. Just so confident. But can Cloud9 convert this into a round win? An RGL जीतेगी क्या ये राउंड? मेरे को नहीं लगता भाई। Still a little bit wary, but doesn't see him yet. ओ भाई थोड़ी ओ It's so perfect. Mazine has to take a step back. RGL is forced to wait on the other side. ओ भाई जीत गई। भाई जीत गई। Was there to greet him.
And this is all off the back of Oxy getting that kill. That was so crucial. Kasam. I think there were two things there that ended up being the problem. Yes, number one, Oxy getting that aggressive dash forward to get the kill, and then also they smoked RGL off of the site. Yep. They refreshed their smoke so early on main, he couldn't get involved, and when he did get involved, SEN का the यही round अच्छा was है, over. सीधे execute They है ना, seem pushing out finally just to see that he's being triple faced. And for a team that क्या चिल्लाता is देगा known ये? for their fundamentals, MIBR getting ecoed by C9. That is not भारी है भाई ये भारी है बहुत. I love this guy. Especially on attack ascent. That second round after you win pistol is so important into snowballing this map. This is a map where getting 4 rounds is a great half on attack. And that eco round is so important. Could be the difference maker. मैं घर पे अब उसका ले करते रहता हूँ. घर वाले पागल बोलने लग गए हैं. It's interesting here because of how MIBR handled the previous round from a buy. They had only bought 2 rifles. So yeah, they lost it, but they can still afford to buy a little bit and keep this thing interesting. Mazen, we saw his first bloods on the last map. पहली बार कोई अच्छा नाम लिया तेरा. Will he be able to replicate that? ये तो मजीन करते हैं साले. कौन रे? Already seeing some of these अभी कोई तो माजिन बोला भाई अच्छे से. As soon as the alarm bot gets cleared out, they smoke behind it and push forward into mid towards B. Now the MIBR मिड से पुश कर रही है दोस्तों. 2 जन बैक साइड. एक फ्लैश आएगा, दोनों काम 25 हो जाएंगे. क्या स्मोक और फ्लैश भाई प्यारा. भाई क्या फ्लैश डाला उसने. But they're not able to get any of the shots. At least Whippy wasn't. Vanity can though. ओए भाई आ गया सिटी से. निकाला रे बट both upgraded weapons, but Cloud9 have numbers. ओ भाई क्या ये निकालेगा चैट? By himself. Can he keep them back on his own? He's trying. The spam. अरे 1v2. Time it runs dry. Runs out of ammo. 15 सेकंड है. Has to do it on his own. बाय राउंड है यार. भाई तूने देखा वो साइड पे 3 बंदे ना फ्लैश हो गए थे उसने सीडी से जो फ्लैश डाला उससे. क्रेजी शिट भाई. डिस्कॉर्ड लिंक काम नहीं कर रहा. डिस्कॉर्ड लिंक काम नहीं कर रहा. एक्सक्लेमेशन डिस्कॉर्ड डालो यार. Understanding that Zeppa will be there with the flashes from भाई वैनिटी अगर इसको भी मारता ना स्काई को तो क्लिप था भाई. And it's honestly really hard to punish, especially when you have Omen smokes coming out to help the people back sight. Yeah, those flashes over the top. Oh, okay, Kankan bhai. They're there, but what can you really do about it? Vanity the spam go. हाँ, Sentinels का देखेंगे मैच. Flash shot, no, it's actually. Like मारिए तो सब देखेंगे. अगर like नहीं मार रहे हो तो जाऊंगी मैं. That is going to foreshadow some things further into this half. Aggro plays. Already setting up tiles flashes like that to set up Oxy later in the half. घुस जाओ. अरे नहीं घुस रहा है. There it is. माजिन गेमर ड्रॉप हो गया. ऑक्सी ने ऑफ लगाई है बी पे लेकिन वो लोग ए जा रहे हैं भाई. That drone. The knife hit everyone. The knife hit all 3 of them. Yeah, there's no way. नहीं यार कोई नहीं यार. रोटेशन नहीं करेंगे ये लोग. रोटेट नहीं करेंगे मेरे को लगता है. नहीं तो कर भी सकते हुए. Lurk smoke to get out. But noise being made that they left wine. I don't like that. ओ ए शॉट से जाएंगे ये लोग वापस. Still so much time to cut noise and ऑफ लगाइए भाई ने बी पे. decide where you want to go. The problem for MIBR is they haven't really taken any space anywhere. And up to this point, MIBR towards this B side of the mid to map B कर रहे. ठीक है. Only really gotten contact. Why mid to B? और नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा. On a more aggressive angle. And they're going to run straight into his off. There it is. Right into the op, right into the crosshair. 2K. The potential for a third. He's heating up, Doug. Not connecting yet. But it might just be inevitable. Waiting for Valorant में ना reaction time बहुत ज़्यादा है. Not able to land the shots. Oxy अरे यार वो एक शॉट मिस किया उससे 2v2 आ गया. Apart for C9, it was so good up to this moment. Shadows traveling. A 2v2, Jake and Zappa are gonna have to figure out how to pull off this retake. They should have plenty of time to do it, and it's going to be an approach from 2 fronts. They're all chat में बात करते होंगे. हाँ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं होंगे शायद. For RGL. Zappa just got his knife back. This knife is going to get so much info. The timing on it is key. There's the knife only tagging 1, so you've got to know the other one's close. He's got to be playing exactly where Jake was on the swing. 1v1. अरे ये लो है. He's so weak. No way. What? Has to reposition. Jake is on the hunt. अरे क्या? And he's gonna get the defuse. What a play from Jake.
भाई बट वो मरा कैसा नहीं रे फर्स्ट पीक में? We've seen this before. अबे लेकिन वो आरजीएल मिस्टर मार देता भाई उसको। अबे नहीं वो लो था। वो दोनों लो थे। आरजीएल लो था ज्यादा पहले ऑलरेडी लो था। एक लो नहीं था फुल एचपी था। Able to get 2 into that round. It was good on MIBR for bringing it back, but अच्छा भाई मेरे चैनल के नेम में ब्रीच आता है। किसी ने बताया कि आप कंपनी का नाम नहीं रख सकते, प्रॉब्लम होती है आगे जाकर। Maybe it was vanity, maybe it was the coach, maybe it's just their game plan, but that is clean. Oh, setting up मेरे को इतना आइडिया नहीं है। You want to put the game in your stars' hands. They weren't able to get it through on Vine. Maybe Ascent will be a different story. 100%. And honestly, like, yeah, Hello, Devil. it wasn't the Oxy that we saw Wow. the first time Yeah, around. that was getting wow. 3Ks, 4Ks, aces against MIBR. But I've been watching you since 30K. Thank you, Shamya bhai. And that's crazy to think about. He's got the opportunity. Operator on Oxy baby. Even more here. वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप रहेगा। वाओ, क्रेजी कॉम्बो है भाई इनका। Zeppa with 4. FRZ alone. Ace still. Give it to him. A possibility. भाई मैंने पहली बार कोई फ्लैश बंदा इतने क्लोज से देखा है। He might be the one to spoil this. Yeah. Start to see the spam come through. साले ये वैनिटी हमेशा एस लेता है। नहीं लिया अबे। 2 HP to his name. He has been the ले ले भाई ले ले यार क्या मारा भाई उसने ज़ेपा ने। I mean, 2 HP though. You don't have the spike. यार ज़ेपा ने कितना क्लीन मारा भाई। हो गया। अच्छा वो लोग नीचे। I'm surprised we're not hearing ace. They started. There it is. Right on cue. Nicely done, Dre. Nicely done. They're just not giving him anything. And it seems like it's just inevitable at this point. This would be massive. अरे यार। Sorry guys. Sorry. Plenty of opportunity. Yeah, plenty. And another round for Cloud9. A big start here on defense. It goes back to the fact that they've thrifted. They've just had so much momentum since then. भाई जो खेला था यार ज़ेपा। Players in general don't expect people to push through Viper walls like this, but Zeppa, he's always going to be confident in making these plays. He's so comfortable, and he understands because they, like I said, they've played this comp before on भाई C9. बहुत अच्छा मारा Maybe not भाई। this roster, right? But it was last year. So they ओ भाई रिवर्स understand स्पैम कर रही है वैनिटी को। वैनिटी भरेगा इसको। That pop flash being one of the key factors. क्यों छोड़ा उसने वो एंगल? पटाख से भी गया। क्यों उसने एंगल क्यों छोड़ा लेकिन वो कुछ आया क्या उस पे? In the future, maybe a molly on the door. Prevent that from happening. हाँ स्मोक। There's a much more aggressive alarm bot out from Whippy in mid. FRZ has bought this Odin back to back now. He's trying to combat Vanity's antics. Look at that. अरे नहीं पहले वो लोग एसेस किए। That's a one way as well. Makes it very dangerous to run through. यही जा रहे वे वापस। Wonder here they've invested a lot of their util to protect B. MIBR have done a really good job of just off clearing the alarm bot and some spam, getting all of that util out. एक ही बंदे का इन्फो मिला बेचारे को। Wasn't antsy on the flash right away and cap. किसको देगा उसने? रेस को। And Omenal is one of those that, you know, on the defensive side. हाँ रेस को देगा उसने। Not really a lot of ways. नहीं रेस को नहीं किसको तो देगा। Maybe ulting back B as the hit is coming through. 30 seconds left. Your Marv. So I like, yeah. भाई Oxy क्या पोजी कर रहा है? Used in this scenario for info. Our team dash forward. Jake tried to reposition, but JCC was there. वो पीछे बॉक्स पे जाने का ट्राई किया। He's gonna have a late timing up mid too. There it is, right on cue, but they've spotted him. They know where he is. He's gonna have to get out. But that's pressure applied. Oh! Does that do smoke? मारेला भाई ऑक्सी ने। क्या ऑक्सी ने? ऐसा लगता है कि जेट नाइफ। भाई ऑक्सी ने स्पैम में मारा इसको जेट को स्मोक के थ्रू एडजस्ट। But finding a time to strike spot first, Mazine will fall. JCC's on the trade. RGL playing down and Hell trying to find some space, not able to hit the transfer. FRZ left alone. It's a battle of the Odins. The tap. There, FRZ throwing a shot. अरे बच्ची। ऐसा है ना वो ऑक्सी को वो ओटी में खेलना चाहिए था।
The Odin 1v1 and he doesn't even opt to stay with it. He switches guns to the Vandal. वैनिटी और एफआसी ओडिन से भर देंगे भाई वो ही हुआ It's not every day we किधर see किधर things like that. अच्छा मेरे को लगा वॉल के थ्रू मारा है क्या फास्ट मारा यार लेकिन उसने Really nice shot. अभी इसका बुलेट्स खत्म हो गया था क्या I would have loved to have seen that 1v1 from Vanity's point of view. किसका He played that कैमरा में बोल रहा है भाई बोला था तेरे को मैं जीतूंगा has just been so crucial for वैनिटी का शायद गोली खत्म हो रहा था अच्छा भाई आपके बोलने पे मैंने कंट्रोलर खेलना शुरू किया ब्रॉन्ज हार्ट्स तक था अब प्लैट हूँ Just want to win the round. Out here, Oxy has an outlaw. The American audience is so much fun than Pacific's. Pacific का mic volume कम रहता है I feel. All really depends on how he plays this. और सब लोग काफी introverted है I feel इसमें पे. Do you agree or no? काफी shy होते हैं सब लोग. Pacific वाला जहाँ पे matches हो रहे हैं वहाँ पे. ये अंदर आ गया. He's getting everything. Meanwhile, they fall. Oi, They knew oi. it was. He's gonna get insane timing too. They're both gonna fall. अरे माँ कसम भाई. Wow. Clinical from MIBR. अच्छा भाई मैं आपको 957 से देखता हूँ. हैं? अबे एक मिनट वो लोग दोनों लोग मेन में कैसा थे रे? क्या मालूम क्या हुआ मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतना ये राउंड पे. JZZ taking things into his own hands. हाँ ये भी एक आधा ओपी है भाई. Ends up killing a guy by mistake. He was going for the Sova. Oxy. अरे बच्ची 3 मारे लाई है. Talk about being opportunistic with your timing and getting value out of it. क्लीन मारा बे. No, अभी अबे इन पे लोग लास्ट राउंड भी गुड़ा ना जो वापस ही the buy for Cloud9 not great. पाया था लास्ट राउंड. This Cypher just so annoying to play against when he's doing this. B default with the cam and the अबे उसका लर्क निकल गया अबे अच्छा. Paranoia out. They've cleared the turret. Whippy's tucked. अरे भाई भर दिस. Once again finding value. That should put a halt to things. डैश किया मुझे उसको भर दिया भाई. Zepa's really low. Zepa कैसे लो गया बे? Almost getting spammed out. And look at how Cloud9 Just spam understand. हुआ. Now that our team's gone, the tip of the spear has been blunted. There's a real good chance. मैं तो रोज फुल स्ट्रीम देख कर जाता हूँ. थैंक यू कवान. Already back A. They're ready for this. Look at how passive Jake is holding from. ओ भाई. Info gathered. Oh, they got the paranoia out too. There's still a lot of time in this round. I like that MIBR is opting to go through A main with the bomb. Had that bomb gotten killed somehow on Cat, this round could be completely different. So really trying. Mazine's gonna have pit off of this. I don't know if he'll invest it, given it's a light buy. भाई शॉट वाला. Cloud9 not sparing any expense. They've invested the lockdown. Can he get out in time? It's gonna be close. Oh, they heard the step on Cat, surely. He takes a slight step back as it dissipates. They get the pit out in main. It's all gonna be spam. It's gonna be a barrage of utility to try to keep him off the site. Oxy did get it to half. It was a great knife from Zepa though. They can't use another molly yet. He halved it. He's gonna hold it. Arre. Through. 1 for 1. RGL left alone. He's healthy. No way 1v1. Vanity isn't either. He swings. Oh my god भाई. Oh my gosh. भाई कितना close था डिफ्यूज होने से. I was really doubting the Viper ult. But being able to just finesse and land the molly through it. That's so clutch. It's so hard to have that lineup. भाई वो वाइपर मॉली वाइपर अल्ट इसलिए किया सिर्फ उसने कि वो लाइनअप डाल पाए. That just feels bad, man. This right here. RGL, man. भाई crazy scenes भाई. But the guy just continues to answer the call. Sitting at 12 and Crazy 6. scenes भाई ये मचाए जा रहा है भाई ये मचाए जा रहा He's been so है. impressive. ये देख इसका हार्ट अटैक आ गया. A deep exhale. तू वाइपर ही खेलता है ना अभी भी. हाँ And भाई. when you're running this double controller Iso comp, और Viper a lot of the pressure of dying early as वो ऑक्सी का एंगल अच्छा है. Oxy's flashed. He's gonna have to dash out manages to split the uprights. He was in a really aggressive position with भाई मर गया ऑक्सी भी. fallen. Oxy does too. अरे मिस कर रहा ना उसने जंप. हाँ जंप मिस किया. नहीं जंप किया उसने लेकिन फिर भी घुस के मारा उसके साथ. और आई गेस नहीं मिस किया. बेचारा भाई भर दिए वे क्या एग्रेस कर रहे मस्त. Any corners is MIBR. Again, the fundamentals, man. They're just so drilled. Ooh, great dog there. FRZ with the Odin again. काट दीस भाई उसको. They're calling for a save here. They have 3 जन सेव कर रहे भाई.
ये इंसान तो चैट ही नहीं पढ़ता, मैं पढ़ती हूँ सबके चैट्स। गुड मॉर्निंग वर्चुअल गेमर। गेम 3 जाएगा, ये सेंटिनल्स का गेम देख रहा है। सेंटिनल्स का गेम को और 50 घंटे जाएंगे। नहीं यार मतलब ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फ्रेंड लोग हैं हर्ष भैया डिस्कॉर्ड पे? नहीं, ये गेम इतना क्लोज होगा सोचा भी नहीं था। सेम भाई, मेरे को लगा तो फुल 2-0 होगा वन साइड। आज भैया क्या हाल है? ऑल जी भाई, आपका पीसी में कौन सा RTX है 3070 का? क्या चिल्लाया भाई? टेंस बुड्ढा हो गया है। नहीं बे, टाइम आउट आ गया भाई, टाइम आउट आ गया। 50 राउंड हार गए ये लोग। 50 राउंड हैं ये टाइम आउट होने तक के नाम में वैलोरेंट न्यू नाइफ देखना चाह रहा हूँ। ये है क्या? अबे मेरे को लगा कुछ और रहेगा। अच्छा हाँ वही था, कुछ है ही नहीं भाई उसमें। वो देखा है मैंने वीडियो पहले भी। टट्टी है। You want to re-clear. That's how you want to use your utility. You want to fight after the second phase of utility that MIBR एक राउंड देखने आता हूँ, पूरी स्ट्रीम देख के जाता हूँ। अगरे पढ़ाई कर। अनअपग्रेडेड क्रिस्टोस्टिक क्रियोस्टिसिस। हाँ ना भाई, क्या है वो? When Oxy was set up on जमी हुई क्रियोस्टिसिस है भाई। सेव किए हुए 3 गन है इनके पास। ओके 2 ही गन है, नहीं एक ही गन है सेव की हुई। तो सेव क्या हुआ है भाई? Uh-oh, that timer's not moving. गया। Hopefully not चलो। tech problem, but I can get even more into it honestly. Like you might have to. The mid side of the map, right, completely open. गया। चलो। MIBR's भाई सेंटिनल्स का मैप तो शायद कल ही होएगा। Bottom mid area. क्या हुआ Get बे? somebody pushed up. Maybe even technical Oxy, difficulty. right? He has the confidence to go for these mid-round flanks through the back, all that stuff. He can घंटा होता है भाई। पहले दिन मालूम तेरे को VCT पैसिफिक की क्या हुआ था? Or maybe even just having him try to 8 घंटा हुआ था और 8 घंटे में सिर्फ 2 मैप्स हुए थे। Who's honestly just been a menace in that B side of the map, able to set up. क्या हो गया इसको? Showing the same utility. क्या नहीं चल रहा भाई तेरे? When C9 is trying to oh push gear issue है, gear issue। Omen flash comes out, stuff like that, right? So क्या हो गया भाई इनको चैट? Do a different route. Don't fight him head on, right? Take control of mid, get pushed up, get info. भाई सब लोग की पाठान कितनी दर्द देती होगी। सब लोग देखना कैसा सो जाते भाई सीधा। ये तो देख भाई ऑलमोस्ट सोने वाला है। ये अपनी जिंदगी से थक चुका है भाई वो इसके बाजू वाला। ऐसा है वो ऐसा। अरे ऑडियो इशू है। ऑडियो इशू से ऑडियो इशू बहुत डेंजर होता है। ऑडियो इशू से ही 8 घंटा डेड हो गए थे। अभी तक तो अच्छा चल रहा था भाई। with that Odin as well. Yeah, and कैमरा में से कुछ निकाल के दे रहा है भी उसको। Doesn't even have a kill. What? अच्छा नहीं, हेडफोन ला हेडफोन। 5-4. Wow. हेडफोन ला। So really honestly, मुझे ये नहीं पता कि ये लोग ट्रैवल करके खेल भी लेते हैं। लोग को भी मजबूत देती रहेगी ना ये रायट। किसको रायट वाले लोग इसको को भी अच्छा देते रहेंगे। हाँ तो क्या भाई, आउटसोर्स होता रहेगा था ना बे ऐसा सब। मतलब डेंजर है ना चलो 4 बजे उठोगे सूरज भाई। गुड नाइट गुड नाइट। अबे ये वाला तो स्टेज बहुत बड़ा है, पैसिफिक का छोटा है भाई। EMEA का फट्टे देख भाई। EMEA छोड़, चाइना का देख भाई, नशे हो जाएंगे तेरे को। बहुत पैसा है चाइना के पास। you know, individual prowess and timings and stuff like that. Creativity and मतलब decent थी भाई, सब शर्मा रहे थे। Not recognizing that this middle of the map is so crucial. ऑल चैट पे नूब्स बोला तो VCT से डिस्क्वालीफाई होता है क्या? नहीं, doing quite a bit. क्या मालूम होता भी रहेगा। Like late lurks on cat, right? अभी जिम जा रहा है। Having 4 go B main. C9 aware that there's 4 in B main, and then you see Mazen going late cat, so getting pushed up. अबे अब तक नहीं चेंज हुआ क्या उसका हेडफोन? That guy off guard, make them have to commit to B, or make them have to come to mid. Female audience. And that can open up a lot of opportunity for kills, especially for a guy like Oxy. Sure. He's got to get online. क्या बोला माजिद? Want to stem some. भाई अमेरिका जा रहे हो तुम? हाँ भाई निकलते हैं क्या?
मजा आएगा भाई। ऐसा बोलता है। अबे वो रेड बुल भी पी रहा, कॉफी भी पी रहा है भाई। अभी उल्टी करेगा भाई वो। भाई वॉशरूम नहीं आएगा उसको। तब भी ऐसे सैचल मार रहा वो। अबे वो लोग जैसी मैप खत्म हो जाएगा फटफट जाते रहेगा ना वॉशरूम भाग के। हाँ ना भाई। फिर वो करके फिर कोच की आज गाली भाई सुनते रहेंगे, 400 फिर आते लाइक रहेंगे मारा वॉशरूम। मैंने। आप एक लेजेंड हो, आप एक लेजेंड हो। थैंक यू फॉर द लाइक भाई। मतलब ये है ना टेक पॉज 1 घंटा चलने वाला है, क्योंकि भाई वो बीच में वो एड वैड दिखा दी। वो नहीं चालू हो गया। Rolled over Cloud9 these last couple of rounds. They've taken a 1-round lead. RGL and JZZ have been leading from the front. Oxy has been really quiet. नहीं देखे रे सूरज। Again, is there something that they can do? Dre, you talked about how we needed to set up across the middle of the map. अबे यूजुअली है ना ये वॉल है ना, ये वॉल वो यहाँ तक डालते हैं वाइपर्स, लेकिन शायद ये वॉल है ना वो रीटेक के लिए डाला है कि रीटेक में ना मतलब पोस्ट प्लांट के लिए वो कोना रहे छोड़ने के लिए। अच्छा C9 winning the first 4 rounds. कोई तो एक ही बंदा क्राउड में ऐसा चिल्ला रहा है ना भाई, हैवी। The ladder after pistol, right? Yeah, 4 rounds after pistol, but चलो ये भी बाय नहीं है सर Cloud9 का। अच्छा इतना कुछ सब चेंज नहीं हो रहा है so insane how the momentum just shifts. There's no late lurk here. बाय नहीं है मतलब एक उन लोग ने सेव किया था वो है, और बाकी गन्स उन लोग ने कुछ भी उठाए ले। It's not like they have secrets or anything that I got to pop out of. They're just gonna push out of the smoke, dash forward out onto Jenny. घुस गए भाई, घुस गए। Ooh, that Molly tags his teammate. क्या मॉली था। ओ भाई स्पैम में मार दी। The buy's not great. He has a bucky. If he wants to find value out of that, he's gonna have to get into their lab. RGL committing to the spike, getting it planted. Ult online. गुड मॉर्निंग अमन। Are they aware of Artson? He jumps into the heaven smoke. Just so bold. अरे कसम। Bucky did damage, but it was not enough. RGL in the swing, dropping Oxy. अरे भाई आर्जिन भाई नशे कर दी। Oh no, Doug. One rifle remains for the defensive side. भाई वो आर्जिन बहुत डेंजर प्लेयर है। अरे ridiculous. 16 HP on one, 30 on the अरे other. But Artzin gets forward. आर्जिन बहुत ओपी प्लेयर है भाई। Not skipping a beat is Artson starting off 0-8. And then when his moment comes, he takes it. अरे गार्लिक नान भाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग। It gets a 4K. भाई ये गेम भी MIBR की लग रही है क्या मालूम भाई। अभी उठा हूँ राजमा चावल और दही कचौरी खाकर काम पर लग जाऊंगा। Catching C9 off guard. It's because you called him out. जेरी लगाने आया भाई सलाम साहब। अभी उठा हूँ खा के काम पे लग जाऊंगा। Hey, C9 played a great round up until heroics from Artson. They actually cleared mid. They understood FRZ wasn't in the flank. That has not happened yet. They finally did it. Oxy with the op mid. Yep. Continue, I'm sorry. And they were able to have 5 on A, honestly. It came down to a 4v5 retake that Artson just made a play on, but good play from Sentinels का C9. मैच इसके बाद है। Adaptation. And maybe with better weapons, it's a different result. Something like that. भाई मिड इतना जल्दी छोड़ दिया भाई उसने। वो लोग क्या वॉक किए भाई। But again, like MIBR not even using utility in this mid area of the map. अलार्म प्लॉट भी नहीं लगाया कुछ। Just until now, Oxy could have gotten tremendous value there. Zeppa. Short भाई Zeppa। There was something afoot. Cover going out. I mean, this got out of control very quickly. Oxy's still playing the opposite side of the map. अल्ट आया है जेजी पे लेकिन They're playing so slow. वो They're suppressed really है। throwing the brakes on this thing. Putting doubt in the minds of C9. भाई सप्रेस खत्म होने के लिए रुका है वो। I think C9 अभी is अल्ट aware खुलेगा though, क्या? because the person who was lurking mainly towards that garden side when the B hits came out was ये Mazda. क्या rotate and कर रहे Mazda हैं is ये now लोग? dead. So I think C9 is definitely aware no one's towards his A side of the map. Oh, that's a big seeker. Wow. They're going to try to get out. I don't think they can. FRZ falls. The spike is stuck in the middle of the map. This is a solo mission. This has to be huge for Oxy. And JZZ's got to get a massive timing. If RGL can win this 1v1, Hug there's दिया a shot इसने। at this. But it's a big ask. Oh, did he see the barrel? I don't think he saw स्पॉट नहीं किया क्या? JZZ's barrel. नहीं हम लोग जा रहे You're नहीं so patient with it. पर वो बहुत एक्सपेक्टेड है कि वो वहीं पे है, मालूम क्या, क्योंकि दोनों स्पॉटेड थे। I mean, how could he? He should know soon though. When C9 clears this cat area. Yep. Right on cue. Chaos introduced into the round. बट अभी वो लोग को JZZ not moving though. बहुत कुछ रहेगा ना क्लियर करने। Now they might think he's in A main, Doug. और प्लान भी है। ओ भाई वो देख अभी क्लियर ही नहीं। ओ नहीं हुआ वो। हुआ। But there's a little bit of help heaven. Oh. RGL again. Can he find a second? No.
JCZ left alone. The spam up in heaven's gonna give his position away. He's got to swing out to take the fight straight, getting it to half. अरे भाई क्या डाइव मारे ला है भाई वो मुंह पे was there to greet him. भाई अगर बराबर डाइव मारता ना वो Great comeback in the round from MIBR, but C9 was definitely in the driver's नहीं seat. आईफोन में नहीं आता जॉइन बटन से राइट क्लिक ही करता तो नहीं मर Doing his best, his absolute best. 14-7 and 11. क्या भरते हैं भाई ये लोग Just huge. This play was so well done. अरे गलत जगह देख लिया भाई सिर्फ There was going to be a challenge. Okay, let's go. Their scalp. The op is still in the hands of Oxy too. Here we go. उसका हैंड Vanity as his करने का ult. भी पूरा वो हो गया है रे हाँ जमा हो गया You hear Blades invested last round of the half. करेगा Look इतना at all of कमाते that killjoy utility B. भाई ए पे जा रहा है ऑफ लगाने भाई क्या है भाई क्या प्लेयर है Off of that timeout that C9 took. भी हो गया भाई No use अल्ट खेलेगा अल्ट खींचेगा भी है Backside setup. There it is. Instantly popped. There's the Hunter's Fury. Is he gonna find any? Might be on the spam, not able to land the shot, but he connects on JCC when it matters. 8 bullets left. Is that gonna be enough to drop the duelist? No. 4v4, the op now showing up, but they've lost control of the site. There he goes. Oxy dashing forward, trying to create space. Like a lamb to the slaughter. हाँ ना भाई ऑक्सी भाई थोड़ा सा डेंजर खेल रहा है आज Two that remain, and they're separated. FRZ, the one. एक मिड एक सिटी बचा है दोस्तों सिर्फ 4v2 है Pushing into the smoke, 7 bullets left. He tries to keep him at bay, and that's exactly Sad what way. they do. MIBR with 7 on the attack half. Frustration for the likes of C9. सैड वे Missing. भाई ऑक्सी को रीड अच्छा नहीं हुआ कि ऑप कहाँ पे लगाए या तो नहीं भाई वो हमेशा मिड पे ही ऑप लगा रहा था और घूम के जा रहा था समझ रहा नहीं है तो उन लोग का रीड अच्छा था भाई हाँ Not really able to make a play, and I've got to remind folks, eliminations on the line. क्या लिख रहा है क्रेजी भाई Up for grabs if they can pull it off. We're going to throw it down to the desk. डिफेंसिव मैप है भाई Take it away, GB. माजिन ये डिफेंसिव मैप है अटैकिंग मैप है पता 50-50 है भाई है ना सुना क्या जो टीम अच्छी भाई का आंसर सुना क्या मतलब इसमें अटैकिंग इजी है थोड़ा तो शायद अटैकिंग ही बोलेंगे ना उसको defending थोड़ा The defensive setup is from C9 based on where Oxy's playing. So when they see him try and jump here, Attacking you map kind ही of know that it's a weak A side hold, and that Viper wall kind of forces C9 into retakes if they feel like they're going to get hit. They tend to play in tree and away in heaven, which is what in that one round allowed Utsin to get up in भाई अपने कॉम्पिटिटिव ओपन खेलते हैं ना तो उसमें तो डिफेंसिव मैप ही है Exactly. Oxy's been doing a really good job at putting presence. नहीं भाई ई-स्पोर्ट्स में ना ई-स्पोर्ट्स में अलग है भाई थोड़ा And they have that cipher cam towards that B. अभी देखा क्या तूने उसने वो जंप करके राइट क्लिक किया बैक साइड पे Oxy actually started finding some तो उस टाइम पे वो भाग रहा था भाई उसने फाइट लेना चाहिए था crazy here. I feel like C9 and MIBR, this game was so scrappy. We talked about 1v1. हमारी टीम कॉम के ऊपर है but this game has been ओके आज भाई अब स्ट्रीम छोड़ के जा रहा हूँ थोड़ा स्टडी करके सो जाऊंगा लाइट भी कर दिया है क्या बात है It's such a scrappy game and I think it looks so good. फेलो कास्टर को ऐसा ट्रीट करोगे अरे सॉरी You are a Vandal player, जेपा भाई जेपा क्या खेल रहा है यार MIBR, C9, both squads really just showing that they एक बार गुस्से में चिल्ला के कह दो पढ़ ले साले अभी मैं चिल्ला नहीं सकता बेबी सॉरी लेकिन पाद ले भाई MIBR's journey continues, so they have to fight tooth and nail here, Uber. This is it. Yeah, absolutely. I mean, it would be wild not to see C9 advance here. That would be crazy, but hey, it's possible from this point. And MIBR could very well be the MIBR ones with to 3 do it. smokes Let's see what happens. and sentinels can defeat easily. Baby Bay and Doug. चलो भाई अभी the brutal nature of this tournament format demands excellence. CLOUD9 यहाँ पे अटैक करेगी और MIBR डिफेंड For Cloud9, it's चैट बताओ जल्दी 2-0 होने वाला या 1-all बताओ जल्दी बताओ There's a lot stacked against you here. So tough against this Viper. ये देख क्या कांटेक्ट खेल रहे भाई मिड पे मस्त नेवर माइंड भाई पहले ही पीक कर लिए You've got JZZ who's got the flash, you've got the pinch in from Cat. भाई क्या सैंडविच किए भाई क्रेजी क्या सैंडविच किए भाई The flawless for MIBR.
2-0 Putting a knife 2-0 सेंटिनल्स का मैच दिखा हुआ है। कल एग्जाम में आपके स्लैंग्स लिख के आऊंगा केमिकल रिएक्शंस में। शेमड़ा प्लस पावर इक्वल्स टू हर्ष भाई। शेमड़ा जरूर हाइप होए भाई। आज ऑक्सी का दिन नहीं है। Of his teammate next to him. It was such a good setup. भाई लेकिन सेंटिनल्स अगर सॉरी C9 हार रही है तो मतलब बाहर जाएगी वे। Right, like you can take ownership of this situation and make something happen. That's exactly what they do. You've got an outlaw in the hands of Artzin. भाई सेंटिनल्स नहीं घर पे जानी चाहिए बे, आज जीतनी चाहिए सेंटिनल्स। It's right now, dog. भाई वो लोग कितने सालों से नहीं खेले भाई इंटरनेशनल। ओ भाई साहब क्या मारा ये। Still doable, 2 guns. Yeah, Whippy should be able to upgrade a weapon. Jake got a little ahead of it. They're separated. Out. Outlaw finding a kill. Nice. That's all it is. Get the outlaw. Sentinels deserve more. It costs more than the Bulldog and the Spectre. MIBR का क्या एडवांटेज है मालूम? वो लोग का है ना, I mean, especially against the team of like C9. Yeah, for sure. For the most part, does like to go into these light armor. ये कितने सालों से हाँ वो नहीं खेले ना। Nice spray down from Mazen. With the molly behind them too, like they had nowhere to go. They were stuck. That was the एक ही बार तो गया क्या? Where are you from? I'm from Navi Mumbai. Early aggression. ये कौन नशेड़ी बोला? ये माजी ने भाई। They kept 2 weapons, dropped everything else. So Spectre and a Bulldog. Oxy getting humbled हाँ ना भाई। बराबर ही कर रहे हो उसको। Much weaker now. And again, Cloud9 invest. Taking the fight to C9 is MIBR, and it all starts with the duo in mid of हाँ खरीद सकते हैं मनीष भाई। JZZ, and that's a ओ huge भाई यार मिड पुश करके मार दी। numbers in favor of MIBR right now. Dude, that was a ghost and a specter, and they just destroyed him. No damage taken as well. What does C9 attempt to do here? What a cam! Info gathered. 2 caught mid. And you imagine here, as that cam sets up, you think through the rest of the half, there's a real good shot. There's an aggressive peek out of mid after that. अबे अगर esports में See if that happens later in the rounds. या Valorant competitive Positioning of Artson right here. अगर casters का आवाज बंद कर You're दिए gonna have to deal with this, और these सिर्फ trips in game without a go चलाए तो button. You भाई don't have क्या interesting a ton there because अरे भाई Artzin with a great position. कैसा हैकर माफिक मारते हुए लोग। They still haven't broken it. Yeah, I know that you do. It caused them to flip. It's an unbreakable trip, apparently. Trying to reposition and find their way in through heaven. It's chaos. Dropping down. Oh, this shot is so important for RGL. Oh, bhai. He knows he's there, but now he's alone, and that might be okay. Only one found. Mazina JCC still there. Oh, bhai. Why was spam kiya? Guardian. Spike planted. Into 2 Vandals. He's healthy. Has some util. That turret doesn't look at him in. You're right. टरे डेमन नहीं He's gonna be देखता able to भाई। creep up so far. He has 2 Viper mollies and orb. Does he invest any? He should know. But they're in hell here. Oh, forcing the swing out. Now they know where he's coming from. He lands a shot on the first vulnerable. You know for sure now he's not in the right corner, Doug. Thought he would have after the first. He's going to take the challenge to whip it. Oh my God, भाई! He does it. Oh my gosh! They went into the round. The heroics for MIBR continue. And again, I mean, you can feel it. The air has been sucked out of this arena. They वो खाली छुपा रहता तो They went into that with a spec. कोई turret भी था उसके पास। भाई! भाई साहब! Man. All smiles. Oh my gosh. Just the perfect scenario to be in as a Viper. You have 2 mollies and they're both in hell. And the turret. हाँ ना 2v1 में उन लोगों को पीक कर लेना चाहिए था शायद अभी। You called it out from the very beginning. Replacement was so bad. वो लोग हेवन के लिए रखे थे शायद वे। Crazy भाई, crazy. Still some to buy for Cloud9 here. Guardians, a Bulldog. Cloud9 left looking for answers. कैसा ट्रिप तोड़ता है? They played, it was close, but I don't think they expected to be in this position.
RGL is tucked. Look at the proactivity from MIBR right now, Doug. They're playing this defensive side beautifully. Instantly re-clearing the A main space after that pop flash. They should know Trip is here. FRZ is just unstoppable right now. The man can do no wrong. घुस गया ऑक्सी मुंह में घुस गया भाई 6 kills, having a really rough map right now. And I don't know that it's gonna let up. ओ भाई हेवन घुस रहा ऑक्सी तो दिख गया ना इसे हाँ दिख गया शायद भाई वाइड स्विंग किया था काफी एक नीचे से भी आ रहा है दो नीचे से आ रहे बाबा भाई उधर देख साइड पे मारे जा रहा है वो क्या भाई गेम गया जीजी 2-0 क्या भाई घर पे गए ये लोग जीजी लिख दो चैट में जीजी लिख दो MIBR in form right now. Leaving no corners unturned. Oxy तो झूल रहा है रे. हाँ ना ऑक्सी वाइड से नहीं हो रहा है. First from FRZ was great. भाई सी यार Cloud9 रहनी चाहिए थी वे मेरे को ऑक्सी को देखना था भाई. He just continues to step up. भाई ऑक्सी को देखना था यार और आगे. क्या ऑक्सी को माजिन क्या ऑक्सी को एक मैच में मतलब अच्छा खेला ऑक्सी इसकी वजह से उसको चढ़ा के रखा है सर पे. क्या पता वो उसके दिमाग में वो बहुत पटेल रहेगा शायद मालूम मतलब उसका खुद को एकदम वो समझ रहा रहेगा वो तो क्या हाँ क्योंकि वो सब पटेली मारता है ना वो ईजी के सामने भी वो मालूम एक राउंड में 1 टैप मारने को जा रहा था 1v2 या 3 ऑलमोस्ट निकाल दिया था उसने अच्छा अभी का बोल रहा है तू कल परसों का साले वो डीमन बनता नहीं वे कोई तो था राउंड में उसका गार्डियन था ना उसके हाथ में क्या मालूम है डीमन वन over till it's truly over. डीमन वन बोलता है कि वो नॉर्मली भी अच्छा खेलता है डीमन वन तो भाई पक्का है भाई डीमन वन बोलता है कि वर्स्ट डुअलिस्ट कौन है मालूम मैंने का बोलता ये अपना ऑक्सी क्योंकि अभी उसका डेब्यू है each other up. हाँ बट देख impact के हिसाब से वो नहीं खेल रहा mean your entire season is over. No. You are on a break for a long time though. लास्ट भी देख यूरो वाले मैप में तू देखा उसका एक भी हाँ बराबर on this attack side. जबकि ज़ेपा के कम खेलते बट उसने impact किया You know, we've talked a lot about how MIBR on this defensive side have played aggressively. They've been the ones to set the tone on the round. Not the case this time. Demon One तो भाई अलग ही And again, वो अलग ही है for real भाई. Aggressive hit on the other side of the timeout, but it just doesn't come. And these are the plays that I was talking about that I thought Oxy should have been doing on their defensive side. Re-entering space. This is really tough here. Our team has procced the dash, but there's no paranoia to clear him off of this. I think this is a little too obvious with that Viper Molly being there. And that's very wise of Artson to back up. तेरा क्या opinion है उस पे? They just dogged A long. It didn't tag anyone. So Jake should be able to fill some space. He also has the ult to flip the map. दो stream भी करेंगे वो. रुक इसके बाद बता बात करते हैं. Missed smoke? Yeah, there's a gap from RGL. Looks like it. They've invested the ult. Oh no! FRZ's there. Oxy not able to get out. भाई sad हो गया ऑक्सी का. He just can't catch a break this match. Can Artsy hold him back on his own? He's been tagged. Not able to get the kills. The Zeppa finds space. Vanity does too. The hero for MIBR. अरे भाई मारा उसने. Drops Vanity Jake on the flank though, and it's a big one. ये flank कब आया भाई? Great kill on the first. The paranoia is. अबे ये कब आया flank? Stay alive. They get to 6. अच्छा ये ult किया था, I guess. ये ult किया ना? शायद. हाँ क्योंकि उसके दो और सब भी आए 2 किल पे. तब भी सोचो भाई 2 तो साइड पे मैंने देखे थे. That flash was perfect. नहीं बे. देखना वो एक देख अभी अल्ट करके साइड आया वो नहीं कैंस अच्छा हाँ बराबर It does feel like MIBR has had a sixth sense in how this map has gone. So राम अजय राम संजय संयम गजबिलिटी बहुत अच्छी है MIBR की भाई मारे जा रहे यार सिर्फ अल्ट किया वो फर्स्ट टाइम आउट की धमकी मिल रही है आसपास फॉर द विन अरे पढ़ लिया अब मत स्पैम करिए मैं पढ़ता हूँ आपकी चैट ठीक है
Talk about how the life of a Jet is a hard one on a SEN. It's even worse when you have trips you got to get through into Cypher to play around. MIBR has been doing a great job as well of changing those Cypher trips up. Yeah. 6-11 क्या 7-11 होगा? So even if Vanity wants to use those shock darts to break them, you don't know for sure. You're guessing. And normally what you see is a lot of teams using Sentinel utility in the mid side of the map. Team Liquid का भी elimination map है. Nats offline है आज. Offline है आज मतलब? Team patient, not pulling the trigger at the first and punishing on the second. Nowhere to run. Hunter Fury's gonna get a kill. Jake pushes forward as well. He's on the site by himself. 30 seconds left. He stepped up big so far for his team, Doug. Doesn't want the dream. कौन डालेगा हेवन और ये चढ़ेगा I guess. Oh, but can he continue to do so? ये कौन डाल दे? कुछ तो डालो भाई, कुछ तो डालो. भाई अगर ये ऐसा ही जा गया ऊपर तो. Cypher util, excuse me, Zeppa's on the flank. He's gonna find a perfect timing here. If he plays his cards right. अरे अंधा हो गया भाई पूरा ये. ओ भाई. Drops Jake Vanity line and he can't. A 2v2 and there's the flank, but everyone's in you. Whippy on his own cannot convert. No way, Doug. हेवन वाले ने हाँ हेवन पे उस पे विफ किया भाई कोई तो. भाई वैनिटी ने 2 मारे यार हेल में. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? Everything he's doing is just जो फ्लैश हुआ वो. हाँ वो बहुत डेंजर था. I mean, Oxy. Having a rough map. Yeah. Can't get anything going. Enemy remaining. Everyone hiding. And to go back to the conversation we had at the beginning of this series, Oxy was the difference maker the last time they played. He was the X factor. Right now, he's been silenced. भाई I guess Oxy उन्हीं के साथ मचाया था भाई जब Oxy सब कर रहे थे ना. तो C9 versus MIBR ही था, I guess. To the plate when you're being shut down like this, like Oxy is. Cloud9 looking for a second lease at life. Oh, he gets legged. A little bit of luck this time. Yeah. But how much more are you gonna get away with? The paranoia was great. Oxy falls. And this Viper wall makes it so hard. I mean, what do you even do with it? You've got a pit on the other 16 side. assist है पागे. Oh, this is perfect though for C9. They know they have to retake wall है वो. ये बहुत जन करते हैं ये retake वाला भी. Retake भी और वो back side में वो wall. He's gonna die. Oh my gosh! He doesn't get detained either. There was भाई ये nothing. detain कैसे नहीं हुआ? And now he's back in. Cancels the ult. He's rejoined our team. They've played this perfectly. Look at that lineup, Molly. But Jake's up close. Jake's up close. He spots the barrel. He's gonna get both. वाह ये कैसा है अंदर पे? देख ना वो बैक साइड उधर बैठेगा अगर. हाँ. और खाली वॉल में जब मिलेगा तो भी उसको किल मिलेगा भाई. जंप कर दिया ना पब्लिक. Still, signs of life for C9. Jake has been playing like a beast this game, truly. भाई ध्यान ही नहीं दिया मैंने वो जैक कैसे अंदर आया. He's not done with this round though. भाई यार अपना ऑक्सी रोने वाला है भाई मेरे को स्मेल आ रहा है. Starts to flirt with the idea of doing this on his own, but it looks like he's gonna. स्कूप में वो डर गया होगा. बड़ा आ गया भाई बड़ा कुछ तो. बड़ा आ गया भाई कुछ तो. सेंटिनल्स का मैच कब है अभी इस गेम के बाद. I do want to point out that this comp from MIBR, they are so drilled that Mazin has a lineup from A site. देखा ये माजिन बोला कितना अच्छे से. With a Viper Molly. Oh, that's huge. Sorry to cut you off there. क्या बोल रहा है वत्सल? Whippy dying and Jake dying. The money's not great. भाई मतलब अगर मैं इंडिया से e-sports प्लेयर बनता तो ये लोग मेरे को कॉपी sees the barrel there. क्यों? क्योंकि बोलेगी ना इंडिया ने कॉपी किया इसका नाम कॉपी कर रहा है. ओ माजिन का हाँ हाँ. आधार कार्ड दिखा देता भाई. ब्राजील में ना जिन नाम बहुत चलते हैं. जिन लास्ट में ZIN. The map this guy was having 20 and 12. Yeah, he's going nuts, but you can hear it in the comms of Cloud9. It's not over. They're attempting to will themselves back into this. FRZ just has a sheriff. भाई मिड पिक कर रहे. ओ भाई क्या टाइमिंग. Mid play. They had an aggro cam on Cat looking into tiles and it was not broken. This allows them to creep up.
Seppa knows. Flash in his face, takes a quick step left. भाई पूरा गांव तो बीम इनके बाहर ही है इनके बाहर. Killjoy here. He should cause a re-clear from C9. I don't think they know JCC's here. If this forces them into the B site, you are going to run through Viper mollies and spams from Mazin, who has that Phantom. There's the first. And there's the spam. Whippy got tagged. The second molly. Oxy's got to know. अरे वाह. Oh, better lucky than good sometimes, I guess. ओ भाई दो जन आ गए फ्लैंक. The turret. शी यार क्या टाइमिंग. See some of these little things. Your turret's out of position. हाँ ना. Whippy trying to hold them back though. In the face of the Seekers. Paranoia's a little late. He gets the kill on the first, but it's traded. 3v4. Cloud9 still with numbers. चारों साइड खेल रहे भाई. And the round comes to a screeching halt as they wait for Util to come back up. As they mull over how they want to attempt this retake. Here. There's a dog in play. और इसको कैसे पता? माँ कसम 3v3 ला दिया इसने. कुत्ता इसके पास रे. Great smokes. Sanity with 2 shots. There are the smokes, but it doesn't seem to matter. Can RGL pull it off on his own? The first falls. Time is short though. Oh, 8-12 हो गया. Cloud9 refusing to go away. Wow. And Jake again. Nice of Luric crack OP by popping Omen ult. They thought he was flanking for a good like 10 seconds, Doug. खत्म करो भाई. भाई दूसरा चालू होने के लिए और आधा घंटा लेंगे वो लोग. As well. Yeah. Using those seekers into that in a 4v5. भाई तेरे को कितना बार बोलूं मेरे नाम में N silent है. संयम. And as the tension continues to संयम. build, संयम. trying to put a stop to it. संयम नाव है तुझं किती छान नाव आहे संयम. Think things over and talk them through. भाई बातें चल रही है. भाई इनको एंड करना पड़ेगा अभी. क्या 10-12 हो गया क्या? हाँ 12. ओ भाई हाँ 9-12 है शायद. भाई क्योंकि अगर MIBR ये राउंड आती है ना तो प्रेशर आएगा भाई. अभी ऑक्सी का हो गया भाई. अभी वो रोएगा. A huge fan, but only because I knew them. I knew एक राउंड के लिए टूर. ओह अच्छा 8-12. So much this team. एक राउंड के लिए टाइम आउट इसलिए क्योंकि भाई Cloud9 2 जीती ना लगातार. So far. Well, I think it was interesting, you know, in the arrival interviews with Bazooka, he said, you know, we've got some special stuff. भाई संडे को आ रहा है सीधे मौत के कॉन्सर्ट को. भाई मुंबई में तो लेट है. मुंबई में तो the last time MIBR played this map, it was a standard comp. And now they're playing this total off meta comp on this map. And bro, I think Viper is very underrated on this map, especially on that attacking side. Yeah, I mean, Viper is the goal. This is just naturally weaker on the defense. You don't have as much utility. Wireless. I mean, in the face of that, though, they won 5 rounds on this half. क्या बोल रहा है? Still up 4. क्योंकि वायर बीच में नहीं आता और वायर हल्का लगता है. From MIBR is not great. I think Artsin is saving for an दीदी मौत का एक गाना बताओ. to buy anything into it. क्या बोल रहा है? Little scrappy of a buy here. I mean, they have a runway to play with. They can afford दीदी मौत का to go गाना है ना something भाई. like that. ऐसा स्पीकर पे ना भुस्सी सुना. भुस्सी सुन भाई एकदम हैवी स्पीकर पे. भाई पागल हो जाएगा. I don't think so. There have been attempts. You might be willing that thing into existence. Silence across the map. Nobody wants to make a mistake right now. Info being gathered and already bomb being moved towards B side of the map. दिख गया शायद. तोड़ दिया उसने. भाई बी पे भी बहुत फॉरवर्ड आ गए. He's so far up and you've got a context. और उस पे ही फैंटम है. The paranoia. I don't know if Cam can see this angle early enough for this flash to hit. He's so pushed up. We're about to find out. भाई ये मरने वाला है फारजी मालूम. How they clear this corner. मरेगा. Need to be explosive. Forget the paranoia. Oh my god भाई. Any util, forget the cam. It's just gonna be up for Z's gun. 30 seconds left. हर्ट खींच दिया भाई उसने. Bring Zeppa back. They find the space. क्या फटी रहेगी ना बे. Sheriff in hand. And the trampling of Cloud9. Bro, I thought that's a collab coming. They've gotten through this pretty cleanly, all things considered. Nice from C9. Letting the KO go first. But this is where the game changes. Right? Because now MIBR have guns again. So जाओ. Up online. Genuinely पूछा भाई. हाँ मैं बोला ना भाई भुस्सी सुन भाई लाउड स्पीकर पे. काफी अच्छा लगेगा. पागल हो जाएगा तू पागल. He invested into this round.
but उसका नाम मजीनी है. I've got to mention from Zeppa, no double A. hitting the ult at just the right time, knowing there could be something a little bit more aggressive because they had no info on that. क्या? मेरे स्कूल में मेरे को मजीन बुलाते थे, मजीन. Here we go. Can Cloud9 continue to prolong this series, to prolong this map? It's a massive hole they've dug themselves. I noticed many players have iron or bronze gun buddy. Why? Because they are bronze. It's a very early dog in a main from MIBR. Op has been found. Oxy's really close here. And this is what I'm talking about with this guy. Takes an op shot, still jiggles it, he's still here. Holds. That's crazy. Hmm. He's just so confident and so bold. Does C9 read into that? कौन सी वाली बोल रहा है? नहीं 4 सेकंड नहीं है तेरे पास, वो नाइफ नहीं वो नहीं है, 4 second knife नहीं है मेरे पास. Usual pathing for Jets. When you take that op shot on Cat, is to go top mid, or go to B. सेम ही है ना एनिमेशन. Barton deciding to stay A, going heaven now. नहीं बे. I mean, if he tags anything with that dart, yeah, I thought the ult was going to be able to find more value, but it looks like it's just a distraction, just something to make some noise. But JZZ has the potential to spoil Cloud9's dreams right हाँ, champions का उसका बराबर. If he goes unchecked, it's a problem, but it's just one. Oxy dashing forward, Artsy is repositioned, he's got the op in hand. Down A. Numbers, MIBR. No ults to deal with for Cloud9. Nothing else there. Full Omen ये खत्म करो, टेंस का मैच देखना है, हाँ ना भाई. Probably hitting the likes of Jen and Hell. And the Odin. 4v3 scenario भाई लोग. Start to see some of the smokes. 3 जन ही बचे C9 के सिर्फ. तो ये क्या मॉली डाला इसने? ओह ओके ओके, क्लोज मॉली डाला है. MIBR send Cloud9 home in advance. And Artson, the X factor in the moment. Clean up कर दिस भाई. He needs to be for his team. And he was. Jumps out Jen into a Viper Molly with the op and gets 2. Wow, कसम. From MIBR. Shit. Great play. 2-0 हराया Cloud9 को. They took that personally. Dude, and you know, you and I were talking about this. भाई बेचारा यार. Twice, man. Yeah. It's hard to beat a team twice when you've learned your tendencies, when you've seen their tendencies, the micro adjustments that have to be made in order to come out on top. It's hard. JCZ 7 first bloods. That guy was cooking on the sky. What nerf? Yeah. भाई कितने cold है भाई ये लोग. You're 100% correct though, Doug. अपने MIBR वाले. MIBR changing their comp, taking a risk, playing to win. They said they had something cooked up, and we saw it. Both maps. Bind had a different comp. Ascent had a different comp. Crazy round, भाई. Crazy game. There's a lot to be excited about for this squad. खेले भाई, खेले हाँ, अच्छा खेले. What a game. छी यार, Cloud9 के लिए बुरा लग रहा है भाई. ऑक्सी के लिए बुरा लग रहा है भाई. चैट ऑक्सी के लिए यार एक बार ही वेल प्लेड. अरे भाई क्या कर रहा है? अरे एक बार ही वेल प्लेड ऑक्सी हो जाए चैट में यार. ऑक्सी के लिए रिस्पेक्ट टू ऑक्सी भाई. ऑक्सी भाई थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो योर गेम प्ले. थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग अस योर ओपी प्लेज. लव यू. मजा आ गया देख के आपको. वो मूवीज में एक चिग्मा स्पोर्ट्स टीम नहीं होती, वही MIBR है. जो ऐसी चलती है स्लो मोशन में. आप जा रही हो? हाँ नींद आ रहा है. अभी तो सेंटिनल्स का मैच है. देख लेंगे भाई, सोते सोते सपने में देख लेंगे. ओके. कैसा देखता है तू? डेंजर है भाई. ओए माजिन का ये रहे इंटरव्यू. नहीं वो माजिन नहीं है, वो है कुछ तो नाम है. मेरा नहीं होएगा रे, मैं तो इधर. Series to the next. There's a lot to be excited about for MIBR. सपने में क्या? सपने में मिलती है. ए भाई इसने क्या क्लाउन क्यों लिखा है ऐसा? And so with that we have to say goodbye to Cloud9, at least for now. No longer in contention and Kickoff, no longer in pursuit of a spot at Madrid. They put up bye baby fight, but it just was not good night enough. Just wasn't enough at the end of the day. There's a lot to look forward to for this team as well, Doug. They have a lot of potential. And I think Cloud9 घर पे गई दोस्तों. अच्छा Cloud9 लिखा है उसने. ओके. high pressure moments, controlling the mental.
We're going to send it down to the stage. Elizabeth is standing by with our चलो बातें कर रहे सुनो सुनो Thank you so much, Doug. Now, they once said it was just MIBR, but it's just MIBR, the winners against Cloud9, sending Cloud9 home. And I'm here with RGL Meister, an incredible performance. I have to ask you, you have faced Cloud9 before. What was the conversation with the team like going into this match? É só MIBR, né? Mas vocês estão vendo, mandaram a Cloud9 para casa. Qual foi a conversa que vocês bateram para esse jogo? Primeiramente, obrigado a todos, né? E a conversa foi basicamente, galera, vamos fazer o nosso jogo, não vamos nos importar tanto com o jogo do adversário, vamos focar no nosso, porque na primeira vez foi muito no detalhe, existia um mundo do 2-0, então a gente só tranquilizou, falamos, vamos fazer o nosso jogo e foi isso que fizemos hoje. RGL Mr. कैसा नाम है? You know, the conversation was just to focus on the game, and there was that fear for the first time of the 2-0. But we were just talking about having the best of our times, and if it works in the end. I have to ask you about the agent composition. Surprising for us on the talent side, probably the audience side. What was the conversation going into picking those agents? Qual foi a conversa para fazer o comp de hoje, para escolher os agentes? Nice question. Na Bind a gente tinha mais de uma composição e como a primeira não deu certo no primeiro dia, a gente colocou a segunda em ação. E mérito do nosso capitão, Mazin, que está sendo muito criativo. ट्रांसलेटर ज्यादा नर्वस है हाँ ना भाई ट्रांसलेटर को है ना अगर कुछ लास्ट के वर्ड समझ नहीं आ गए ना Since on the first day that comp didn't work very much, we changed the comp, and I think a lot of the credit goes to Mazin. He's been helping a lot, and he's been doing calls, and we're following him, his leadership in game. I'd love to ask you specifically about fraud and what fraud has added to the team, because Bazooka kind of dodged my question earlier, but I do want to ask you, what has fraud brought to this team? Quero te perguntar especificamente sobre o fraud. और क्वेश्चन पूछो अपना पूरा रात है इधर आप क्वेश्चन पूछते रहो É um coach incrível, né? Dispensa comentários, né? अबे रुकना लेमन e o Bazooka são dois coaches incríveis, então eles se somam muito. Então, por mais que tenha ideias diferentes, às vezes no fim do dia a gente sempre chega num ponto final. भाई दीदी क्यूट तो है हाँ ना भाई então a gente sempre sai com a mesma ideia e sempre somando as ideias. इसको टीम कॉम्स में दिक्कत नहीं होती सब ब्राजीलियंस है उनमें and he complements Bazooka really well. So even if when they have different opinions, in the end of the day they reach an agreement that is good for the whole team. And clearly a 2-0 win. Congratulations. Everyone please give it up for RGL Meister. An incredible performance. But stay right there because we have a lot more Valorant. We'll be heading to a break, but grab a snack, go to the bathroom, and we'll see you soon. बाथरूम जाऊँ मैं grab a chat, go to the bathroom. हैं? हैं? अब ये लेवार्टन वैसे सेंटिनल है ये और सेंटिनल घर पे जाएगी आज मुझे पता है भाई लोग तुम लोग को क्या लगता है कायडा दीदी क्या बोल रही है There were multiple times when C9 would go to retake and his molly would deny them being able to flood in. Like, he knew when to use... Like, dude. Fuck. Just good. That's it. That's all I can say. I actually played that. भाई ऐसा स्ट्रीम करना चाहिए यार मेरे को मैं तो क्या बोलते रहता हूँ क्या मस्त खेली भाई क्या मस्त खेली अरे भाई क्या मार रहे थे यार ऐसा बात करता हूँ यार मैं बहुत अच्छा खेले वो लोग एक्चुअली MIBR को है ना मतलब सेंटिनल्स को ना मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है गेम का मज़ा आया लेकिन एक्चुअली है ना गेम अच्छा था और होस्ट ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे तुम लोगों ने देखा ना ऑक्सी का माउस चार्ज नहीं था भाई बात तो सही कर रहा है तू बात तो सही कर रहा है रहने दो हॉर्स भाई टटी स्ट्रीमर ऐसा मत बुलाओ यार मेरे को टटी स्ट्रीमर मत बुलाओ भाई लोग हाँ टटी स्ट्रीमर मत बुलाओ देखो बोलते हैं लोग कि टटी स्ट्रीमर की टट्टी ऑडियंस होते हुए तो आप क्या टट्टी हो नहीं ना आप तो मेरे प्यारे
चुमकुलेस हो तो आप टट्टी नहीं हो, आप मेरे प्यारे लोग हो। 500 लाइक कर दो गाइस, 3 लाइक चाहिए सिर्फ 500 के लिए, कर दो। टिंग डोंग। डब्ल्यू ट्रिमर, ओपी ट्रिमर, हमें आप ऐसे ही पसंद हो हर्ष हग्गू। भाई मुझे तो ऑक्सी के लिए बुरा लग रहा है, बेचारा फुल पोटेंशियल परफॉर्म नहीं कर पाया। हाँ ना बच्ची? भाई चॉकलेट नहीं आई अब तक, स्ट्रीम देख रहा हूँ, नहीं चॉकलेट नहीं खा रहा हूँ अब तक। अच्छा लाइक वाला चॉकलेट पूछ रहा है तू? नहीं वो तो आपको परसों तक आ जाएगी, डिलीवरी को टाइम लगेगा। गाना अच्छा चल रहा है बैकग्राउंड में, वो चलने देते हैं अपन। हाइड्रा आसिफ, ये सिल्वर है। बंदा मार रहा है भाई। अबे इसका तो क्लिप देखा था मैं, हाइड्रा आसिफ का। सिल्वर बंदा है तुम्हारे। सिल्वर या ब्रॉन्ज चैट? सिल्वर या ब्रॉन्ज? सिल्वर राइट? सिल्वर या ब्रॉन्ज? सिल्वर 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 सिल्वर। गुड मॉर्निंग हर्ष भाई, यूनिक फ्रॉड, गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग? क्या बातें हो रही है? वो सेंटिनल लीग की बातें हो रही है। अबे ब्रॉन्ज है वे, ब्रॉन्ज 1 है। Talking, we're not making plans, and that's something we've been working on, and we've noticed in our previous match. ये भाई ये था ना, ये क्या था भाई? एम बॉट किया भाई इसने। Leviathan has very good individual players. Obviously, they added Aspas. Tenemos 2 campeones mundiales que realmente aportan demasiado al equipo, tanto en tema PE como en tema ideas, en tema comunicación, en todo sentido. Y eso siento que somos un equipo mucho más completo y mucho mejor preparado que el año pasado. समझ गया। Welcome back. टेंस की महंगी कॉपी कौन? टेंस की महंगी कॉपी कौन है भाई? ये देखो ना यार, ये साला एआई दिखता है भाई सिर्फ। भाई इसको देखो बस, ये देखो भाई एआई लगता है भाई ये बंदा। किधर देख रहा है? देखो हो गया उसका, जोन आउट हो गया वो। हाथ से देखो क्या कर रहा है। अरे भाई उसका नाक देखो, नाक भाई गो देवा, अलग ही है भाई थोड़ा। न्यू पोल लगाते हैं, न्यू पोल लगाते हैं अभी। न्यू पोल भाइयों, पोल लगाएंगे हम। सेंटिनल वर्सेस इकोनॉमिकल क्या लेविएटन 10 वर्सेस, पूरा स्पेलिंग तो अपने को पता नहीं है। 10 वर्सेस लेव, ठीक है चलो चालू। सब लोग अभी सेंटिनल्स करेंगे, लेकिन असल में तो जीतने वाली कौन है तुमको भी पता है। भाई श्राउड भाई छोड़ दिए क्या? नहीं कुछ और कर रहे हो, कुछ और कर रहे इंपॉर्टेंट कर रहे शायद कुछ। तो रैंक इन कमेंट्स फ्लिक इजी 1 टैप्स। ये टफ होने वाला है, ये टफ होने वाला है, मेरे को स्मेल आ गया इससे। बिल्कुल मेरी तरह मारा है भाई ने। देखता हूँ सेटअप फ्लेक्स भी भाई। भाई क्या मारा है यार इसने। डायमंड नहीं भाई, असेंडेंट ही मॉडल भी हो सकता है। क्या मारा है यार, डूइंग गुड। बस पेपर का है अभी टेंशन हो। लेविएथन वर्ड का मीनिंग भी हार्ड है। हाँ क्या, रुक देखता हूँ। चैट इसका रैंक क्या है फ्लिक का? उसने बहुत अच्छा मारा है वे। ये डायमंड या असेंडेंट है? डायमंड या असेंडेंट? मेरी डीगल ऐसी क्यों नहीं चलती भाई? हैं? मेरी डीगल ऐसी क्यों नहीं चलती? ब्रो फिलीपींस की आईडी से ई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं क्या? पता नहीं भाई। तुम लोग फिलीपींस का आईडी क्यों बनाते हो भाई स्किन विन लेने के लिए? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी वाली इस पे करो ना। हाँ जो कांडी करने के कांड करते हैं यार तुम लोग को, देख लिया मैं। रैंक गेस करो। i3 7 जेन है, 4 GB रैम, नो GPU है। i3 7 जेन जो मेरे पास पहले था, नहीं मेरे पास i3 3rd जेन था, और ये माउस पैड उसका बैड है, और ये जेई मेन की पढ़ाई कर रहा है, और ये कंबल ओढ़ के सोने के लिए जा रहा है। ओ ये देखो, ये उसका मेन सेटअप है, ये मेन सेटअप है उसका।
जहाँ पे टेबल है, कीबोर्ड है और माउस है। ठीक है ठीक है, मेन सेटअप वहाँ पे है। माउस इसका ओंगड़े ओंगड़े है। ये बंदा ब्रॉन्ज या सिल्वर है 100%। अगर ये ब्रॉन्ज या सिल्वर नहीं है तो मैं कभी रेडियन नहीं जा सकता। हाँ मैं सिल्वर तो मेंशन किया ना, सिल्वर तो मेंशन किया मैंने। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ से, और इस एटीट्यूड के कारण मेरा फ्यूचर खतरे में है। लेकिन मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये फ़र्क न पड़ने पर जो मुझे डर लगना चाहिए मुझे वो भी नहीं लग रहा। ये किसका विषय है भाई लोग? ये किसका विषय है बताओ? हाँ, ये किसका विषय है? ये तो अस हो रहा है भाई। साउंड तुम लोग को आवाज नहीं आया? कि मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ रहा। अस हो रहा है भाई। Shut up. Shut up, please. Shut up. Oh my god, brother. Oh my god. बिल्ला भाई का chat up OP in the chat. Sheesh, sheesh. Sheesh, sheesh. Sheesh. कैसा लगा बताओ? ओ भाई लाइटिंग, लाइटिंग झगमुग, लाइटिंग झगमुग, लाइटिंग सकले गले ओ सका। भाई ये आइकिया वाला टेबल लिया है ना आपने? भाई ये छोटा होता है बे टेबल, मेरे को लगा बड़ा होता है भाई। भाई कारपेंटर बहुत बड़ा टेबल बना के देगा वही प्राइस में आइकिया वाले के। चाइना जा रहे हैं वो तो कौन रे? कौन चाइना कौन जा रहा है? हर्ष भाई आई एम अ मेंबर। दो मैं व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हूँ क्योंकि तुमने वो सब डाला नहीं रहेगा। अगर डाला है तो वो आज या कल में हो जाओगे तुम। चेंबर इन बेड आपकी झलक देता है हर्ष भाई। ओह ऐसा बोलता है? ये क्या हो रहा है? New team and they're still developing, so I think for now it would be allowed, but we'll see. Okay. Who is Carrier, Leviathan or Zekken Sloud? also has a career as an analyst as well, because he was on the money with that one. I think that everyone felt coming into this one, Wyatt, that yes, you know, Leviathan are going to be a threat, but there was always that lingering thought in the back of your mind. This is still a new team from different backgrounds. What happens when they're tested? We saw that happen, and well, I mean, the results speak for themselves. Cloud जीती भाई Leviathan के against. कोई नहीं Leviathan जीती ना? नहीं मेरे को याद नहीं। कौन जीता था इसमें? Sloppy. It is not cohesive. Unexpected. At all. With different comps, they just can't figure it out. They went back to the old reliable 2023 comp. It was better than the Sova comp, but it still didn't work out. And you have to question, of course, yes, they have put together this super team. Well, one of the components is world champion initiator comp. But he came in really recently. And you could see the influence on the team. It's why they had the Sova on split, trying different things. पूछो भाई हर्ष भाई से क्या लाना है? Things to integrate and make him feel comfortable. अच्छा तुम चाइना जा रहे हो? They just didn't have a lot of time with him. So how much can you really expect them to be cohesive with that late? कभी जा रहे हो और कभी आ रहे हो वो बताओ पहले। I don't like cutting super कभी जा रहे हो और कभी आ रहे हो वो बताओ पहले। Okay. I think I will here. I think this tournament structure is जब तक टेंस जिंदा है VCT जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ मामा। तुम चाइना जा रहे हो क्या भाई? मार्च मिड में जाना है। मार्च अप्रैल मई मार्च नहीं, मार्च अप्रैल, मार्च के मिड में जा रहे हो। आ रहे हो कभी बताओ? मेरा भाई अप्रैल एंड में जा रहा है। ओह भाई मेरे कीबोर्ड में है ना, मेरे कीबोर्ड के एक एक की के नीचे पूरे घर का कचरा है। मालूम क्या? पूरे घर का कचरा। ऐसा उसको उठाऊंगा ना मेरा कीबोर्ड है ना आवाज करेगा भाई थैंक यू, ऐसा आवाज आएगा अंदर से मालूम, मजाक सेट के।
मार्च में ही आ रहा हूँ, 5 दिन में ही, 1 नंबर। तो मेरे को है ना भाई एक माउस पैड चाहिए आर्टिजन का और एक माउस देखने का है। अगर हो गया ना वो तो मैं दूसरे दिन रेडियंट। तो वहां पे बिल्ला भाई अगर आप गए, ठीक है ना, तो बताना आ क्या। और अगर आपका मतलब शेड्यूल टाइट रहेगा तो भी कुछ विषय नहीं है, मेरा भाई वैसा भी जाने वाला है। कितने का आता है पता नहीं, पता नहीं भाई अभी कितने का रहेगा वो। जा ही रहा हूँ, वीजा हो गया है, ओके। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर उसका हमारा विषय होता है तो। ओ ओपी चटअप ओपी, शपथ भाई कितने झाड़ उगाए तुमने यार, कितने सारे झाड़ उगाए। इतना मस्त चेटअप है। पानी का बॉटल ओपी भाई, इतने रात में अगर चेटअप पे बैठते हो ना तो पानी का बॉटल इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, क्या बात है। बाप रे 65 यूरो का माउस पैड है वो इधर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, क्या उसे कहते हैं, वो है ना माउस पैड का कंपनी जापान वाला है। तो वहाँ पे है ना वो मिल जाता है थोड़ा कम प्राइस में, लेकिन जापान चाइना में, ठीक है। बट यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि जापान का है तो चाइना में, लेकिन चाइना में सस्ती मिलती है चीज़ें आई फील, ठीक है। तो अगर माउस पैड आर्टिसन का ही नहीं तो भाई बेंक्यू का ही उठा लेंगे, ठीक है। 6000 का माउस पैड मिल रहा है ना आर्टिसन का यूरोज में। यहाँ पे इंडिया में अगर इंपोर्ट करने गए ना तो 10-15 हजार जाता है। नकली माल चेप देंगे चाइना में तो। चाइना भाई, चाइना है ना बहुत डेंजर है। मेरा भाई है ना गया है ना चाइना, वो 2-3 बार जाके आया है। तो क्योंकि उसका बिजनेस का उधर का विषय होता है कुछ कुछ, भाई वो बताता है मेरे को कि भाई तू गए जाएगा ना उधर तो बोलेगा भाई ये क्या विषय है भाई, कौन सी दुनिया में आ गया, ऐसा बोलता है। मैं वीसी करूंगा, आप जाके देख लेना जो समझ आए। हाँ ठीक 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 भाई। डीमन 1 का माउस कौन सा है? क्लर्च भाई बोले कि वो वाला लेके आओ, आने बोलो भाई। तो मैं बोला ठीक है लाते हैं। जी वुल्स हटी 4K, ये कौन सा माउस है यार? बहुत डेंजर माउस है क्या ये? भाई ऐसा कोई तो अतरंगी माउस एक लेके आएंगे उधर से फिर। भाई क्या दिख रहा है बे माउस ये, चिंटुकला भी है। मैं फिर डीमन 1 जैसा खेलूंगा। ओ in crucial situations we kind of like autopilot a lot and we don't make plans. I think it's a lot of the like mid-round situations, late round situations we mess up and people are not like talking, we're not making plans, stuff like that. So that's been pretty bad for us so far. Well, of course, have to see how John QT and the rest of the squad from सेंटिनल्स संडास टीम हो गई है भाई, तमीज से बोलो यार। चाइना से ये बेंटेन वाली टॉय वॉच लेके आए होंगे। इज्जत से बात करने का इससे, इज्जत से पप्पी दे रहा है भाई जेल्सिस। ओ भाई ये देखो struggling. He was the guy keeping the positive attitude for the rookies. भाई जेल्सिस का दिखता है अभी, lifting up their spirits when they were having some rough games, and that's हाइड्रा भाई ने तो एक चाइनीज मंगवाई है। Is becoming this positive leader figure in the team. मिलती है क्या मतलब? That was one of the main reasons, if not the main reason, they ended up going with him in the off season. Is there was a moment where they were down. चाइना से कॉकरोच फाई लेके आओ गिफ्ट रैप करके चलेगा। And he was subbing in and he, with his रुको भाई, डीमन 1 का है ना, ये देखते हैं अपन। डीमन 1
Demon 1, Lemon 1. Demon 1 mouse. Take hold. How's Japan? Japan is fire. Mouse दिखाना भाई. I'll find you. Got a nerd out here. अभी क्या कर रहा है? Unboxing time. Then you got a mouse pad. अबे क्या कर रहा है? Total. Let me try in the ring. कौन सा माउस पैड लिया इसने? Looks not bad. Then you got a mouse pad. Total. देखो ये भी GSR ऐसे यूज कर रहा है. और इसने भी आर्टिजन लिया शायद. The mouse pad feels good. I like the texture of the mouse pad. Let me try in the range. The mouse pad is not bad. I like the texture of it. It has grip to it. It's got good grip on the mouse pad. I'll say that. I'm cooking. Let me cook. वो भी GSR ऐसी ही है क्या? क्या कर रहा है भाई? आगे ढकेल. Wait, it's wireless too. आगे ढकेल. Audio and stuff like it, I'm assuming. Fuck it, I'm gonna use the mouse. अबे ये तो पनीर है भाई. But yeah. वे यार मेरे को लगा भाई अपना माउस दिखा रहा है साले. One more, left side, left side. ये पनीर है भाई. Anything? No. अबे ये देखो इसका क्या हुआ? ये देखो इसका माउस वही है, बस ग्रिप लगाया उसने. हर्ष माउस लेना, अभी असेंडेंट हूँ, इमोर्टल जाना, वाइपर मिनी ले लूँ या G4O2? भाई वाइपर मिनी ले, बहुत बहुत तगड़ी माउस है वो. तो नहीं बगू शकत तरी जाने 10,000 का माउस है ये वाला ना. ये वाला माउस 10,000 का है, बट वहाँ पे आई फील कम में मिल सकता है. अगर 6-7 हज़ार में वहाँ पे मिल रहा रहेगा ना माउस ये वाला, तो मैं ले लूँगा. और माउस पैड अगर 3-4 हज़ार में वहाँ पे मिल रहा रहेगा तो मैं ले लूँगा. लेकिन उससे अगर महंगा रहेगा तो आई एम आउट भाई, आई एम आउट. 5,000 के अंदर अगर आर्टिजन का माउस पैड ले रहा हूँ तो मैं ले लूँगा, क्योंकि वो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहेगा आई फील आर्टिजन का माउस पैड. क्योंकि वो भाई ह्यूमिडिटी का भी लफड़ा उसमें होता नहीं है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म चलेगा वो कितना भी, है ना. और माउस लेंगे तो पता नहीं भाई, माउस लेने का मन कर रहा है. एंड वो एक इन्वेस्टमेंट है समझो, क्योंकि मैं लूँगा ना वो, तो भाई मैं खेलूँगा उसके साथ, तो मैं एक अच्छा गेम प्ले, प्रो गेम प्ले दिखा पाऊँगा. फिर अगर मैं प्रो गेम प्ले दिखा पाऊँगा तो तुमको पसंद आएगा. तो एक वो इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट बोल के भाई सब पैसा उड़ा देते, क्या बोलते हो? थोड़ी फट रही है लेकिन देखते हैं. अबे गुड लक हो गया. पहला स्प्लिट है, फिर ब्रीज है, फिर बाइंड है. और ला ये क्या प्यारा लग रहा है. Riot Games Arena, we have a one-way ticket to Sen City. Give it up for Senno! भाई जेल्सिस गेमर है भाई. क्या दिखता भाई जेल्सिस. सब लोग मजे में. जॉन भाई थोड़े से ये है, स्नीकर्स नहीं देखे हुए मैंने. Y en la arena sube la marea porque juega la levianeta. लेविएटन मेरी फेवरेट टीम है भाई.
आज मेरा पूरा सपोर्ट लेविएथन को। आज भाई सिर्फ आसपास जीतेगा, सिर्फ आसपास मारेगा भाई। Don't forget all you beautiful people. Make sure you मुझे get your VCT 24 capsules to support your teams. तुम लोग को लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? ये देख भाई। Shocked to see a lot of these skins, especially because that Leviathan was dope in matchmaking. But Wyatt, you had said that you had things to talk about. You had actual analysis to break down. Yeah, so what do you have? I told you to send it straight. सोने जा रहा भाई, कल बताना क्या विचार हो। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम जाओगे ना वहाँ पे तो भाई ऐसा मैसेज कर देना, तो प्राइसिंग वगैरह तुम बता दोगे ना, तो उस हिसाब से तभी डिसाइड करके बता दूंगा, ठीक है ना। They kind of sucked with both, so that's good news for SEN. And then when we go from there, I don't want to get too ahead of myself, but Breeze is the second map. That was a map that SEN beat PaperX on twice. बराबर है मेरी स्ट्रीम भाई। Like, I think these first two maps are looking टेंस के आसपास नहीं दिखेगा स्पीड, आसपास। नहीं। And then we're in. अरे माँ कसम, ये क्या कैमरा एंगल था? Dude, I like to disagree with everything that people say usually, but I just have to agree with everything. Is that what it is? Every time we hang out, you just disagree with me? Yeah, I like to. आसपास रॉक सेंड शॉट। Split. I mean, that's क्या बोल रहा भाई? भाई लोग लाइक मारो। knows they're struggling with, and because they have a permaban, they have to contend with. And a team like Sentinels, who has been working hard in the ऐसे 360 कैमरा एंगल आना भाई। घुस जा भाई, अभी टेंस में घुस जा। आहा घुस जा भाई। टेंस का माउस पैड देगा क्या? आर्टिजन का है वो, समझे क्या? वो माउस पैड लूंगा और भाई टेंस को मारूंगा मैं। They do have Ospas, and I'm looking towards one thing, which is what will he be playing, and what will the rest of लेकिन भाई बहुत सारे e-sports प्लेयर्स का है ना GSR ऐसी माउस पैड होता है, तो अगर ये देखो ये माउस पैड, ये देखो ये हैं? अबे एक सेकंड, टेंस का माउस पैड आर्टिजन का नहीं है। अगर आर्टिजन का माउस पैड चाइना में महंगा मिला तो कैंसिल, अपन ले रहे भाई, थैंक यू। Amazon बेसिक नहीं है भाई, देखा जेल्सिस का भी GSR ऐसी है भाई। सेंटिनल सिंगल डुअलिस्ट खेल रही है। I think this is good. I think this is the only real choice that they had. The Sovacom did not work. It was not ready. Maybe in split one. अभी भी C9 वाला चल रहा है। हाँ भाई, C9 वाला ही चल रहा है। That you have when you have only one match left in this tournament to stay alive. And sometimes I get confused about what Horseby is doing. What do you mean, baby? What do you mean? I'm here. What am I doing? What am I doing? Razer mouse pad अच्छा है क्या? सुना नहीं भाई कभी। भाई Razer के माउस पैड मत लो। देखो जो जो प्रोज हुए उस यूज करते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं उस हिसाब से लो। नाम के वजह से वो लोग है ना हाइप कर देते हैं भाई साहब, तो उस हिसाब से मत लो। उसके फीचर्स देखो कि मतलब उसमें कैसा, यूट्यूब वीडियोस देखो भाई कैसा होता है, क्या होता है। तो नहीं तो भाई क्या तुम माउस पैड ले लोगे, तुम खेल रहे हो भाई पसीने में, तो वो रफ हो गया और फिर तुम्हें AC लगाना पड़ रहा है हर बार खेलते टाइम, तो वो नहीं चाहिए ना। ये देखो ये वाला माउस पैड सेल्सिस जो यूज़ कर रहा है। Yeah, real quick, just want to let everyone know, quick mouse issue on the stage, and then once we are good to go, we're going to jump into the action for क्या फायदा इनका भाई, 2 करोड़ के माउस लेते हैं और माउस तो इशू है भाई। टेंस एक माउस फेंक के मार उसको। किसका माउस इशू है भाई? Now, if you were to hypothetically engage in a little like, what do you think is going to happen? What do I think is going to happen? अरे भाई ये कौन ऐसा खेल रहा है घुस के? Personally say that on the mouse front, I would say it's Ten's mouse. अभी टेंस का जो माउस है वो कितने का मिलता है इंडिया में? मैंने एस्केरोसी भाई ने लिया है ना टेंस का माउस, वो एक बार हाथ में पकड़ा था, काफ़ी लाइट वेट फील हुआ था भाई, और शेप भी काफ़ी क्रेजी था। मतलब वाइपर मिनी से है ना, सॉरी वाइपर अल्टीमेट से थोड़ा मिलता जुलता है और थोड़ा हाइट में कम है, तो वो शेप है ना मेरे लिए तो परफेक्ट है। मेरे को दूसरा शेप ट्राई करना है,
जस्ट कॉज आई वॉन्ट टू। जैसे इसका रहता है लाइट स्पीड का, इसका लाइट स्पीड बोल रहा हूँ, सुपर लाइट का रहता है, बट फाइनल माउस, हाँ 44,000 का माउस रहता है वो। स्किप 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 भाई स्किप, 20,000 का स्किप है भाई, स्किप है, स्किप है। 10,000 के आगे नहीं जाना मुझे 10,000 के आगे नहीं जाना भाई। 10,000 का माउस पैड भी लिया, माउस अगर लिया भी ना मैंने तो वो EMI पे लूंगा भाई। क्या ले बाबा आयुष भाई, भाई के हाल चुम्मी है, आप बताओ कैसे हो। थैंक यू फॉर द 40 रुपए। टेंस ट्राइंग सो हार्ड कि वो देखे ना उसमें। हर्ष भाई आज मेरे पापा ने ऑफिशियली मुझे अपने फैक्ट्री पे बैठा दिया है और अभी मुझे महीने का 40,000 मिलेगा और भाई अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा और एक 1.5 लाख का PC बनाऊंगा 3 महीने में। Sentinels versus Leviathan elimination game, Josh. Here right now, and it's all on the line to play for that play-ins, a chance for that lifeline of Madrid. You think about the expectations for both of these rosters. Congrats, bhai, congrats. High. On one side, you've got an assembled attempt at a super team from America. मजे बराबर, मजे ही मजे. Sentinels that's retooled this year. Neither of these squads want to be going home. It's such a tough. पढ़ाई कर वे पहले वत्सल। हर्ष भाई YouTube के अलावा कुछ करते रहेंगे या फुल टाइम यूट्यूब है फिलहाल, और अगर काम 25 होता है तो फिर देखेंगे, बताऊंगा तुमको ही कि काम 25 हुआ तो। High expectations set on the shoulders of each of them. And you see Sentinels running a pistol round at the beginning here, where they're going to. Sentinels डिफेंड कर रही है, लेविएथन अटैक कर रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। OP गेम प्ले। Don't even interact with each other for now. पड़ गया। Thank you for the 40 रुपए। आयुष सिंह I love you. Yeah, their defensive retakes, they're so good over towards A. Really nice. पूरा रीटेक यहाँ पे लेविएथन। They've gone for heaven here. Now a refight will be on the cards. Out towards ramp now. Everybody side by side, shoulder to shoulder. Oh sorry, सेंटिनल्स पूरा रीटेक कर रही है। आसपास भाई ने थोड़ा सा पूफी कर दिया। Paranoia followed it up, and now they're finally at least taking a bit of that space, but they've got to refight past this wall, waiting for it to go down now. Clearing it. SEN are trying to be extremely thorough here, but the more time इसका माउस $190 का है। It's going to be just an end game checkmate. मतलब 15,000 का। Just holding it down straight into the elbow. You can't remove it. ओ भाई जीते बे, क्या बात है, जीत गए भाई लेविएथन। Spectacular individual stuff from King to open things up. Crazy round. Really struggled in that opening match, and I thought, that's not a great sign for Leviathan's season. क्या बात है मनीष। This star player, super fragger IGL. Snacks भाई पे भी वो माउस है टेंस का। He was amazing in the match against Loud. Yeah. Scar, thank you for the 20. Good morning, love you Scar भाई। फर्स्ट सुपर चैट Scar भाई का, हैप्पी बर्थडे हो जाए Scar भाई के लिए। There is potential for some kind of crunch over towards B main. They're going to go for this smoke and flash setup. ओ भाई आसपास भाई ने गार्डियन लिए, ठीक है अब देखते हैं कैसे मारते हैं। अच्छा भाई बोर्ड्स मेरे हैं और पूरी रात आप जग रहे हो, साले पढ़ाई कर। लर्क कर रहा है किंग यहाँ पे ए पे, लर्कर कोटी गेमर लर्कर। It's not just in Americas as well. वो देख लिया आपको, Happening globally right now. आप यहाँ आ गए, हम तो आपको गुड मॉर्निंग कहने आए थे। Rotated, expecting some kind of pivot. मर गया भाई, लड़कर मर गया। Yeah, but no rifle dropped. He was only running with a ghost, so it's not a huge. वापस रीटेक खेल रही है सेंटिनल्स। डिले रिफ्रेश बाद में करते, राउंड होने दे। हेवन पे कोई नहीं है ना, ये लोग हेवन ही जा रहे पूरा। ओ भाई विफ कर दिया आसपास टेंस पे। व्हाट विफ कर रहे भाई,
नर्वस है क्या लेवियतन वाले? Down onto the site, you feel the pressure mounting onto Com, has to really adjust the aim here just for the boom bomb, but the damage. भाई पीछे आ गया भाई. From the back here, pull. First भाई हेडफोन भी. Dissuading this from the plan, but Aspas taking damage. Mazzino with the rifle. This is scrappy and weak and winnable. No planted, out wide. Second with the ghost, that was earned a little bit earlier. Sticking! Sassy! Oh my goodness! It's unbelievable. The consistency in the ecos. And I think the biggest playmaker, yes, it was still tight towards the end, but the biggest playmaker in that round is Tens with a classic, in my opinion. हाँ ना भाई, Tens ने low किया कितने जनों को. I mean, obviously King goes down early, but it's this one. Double ये shot बहुत important था भाई उधर. So much damage there onto Aspas. Broke Leviathan's attempt to go and take some other portion of the map. These second round kind of eco wins have been more than 50% higher than they were last year. I think that's absurd. It's ludicrous. I think it's because teams 4 बजे तक हम जग रहे हैं, नींद में ये लोग लग रहे हैं. Instead of just relying on hero plays. बजट 2000 के नीचे चाहिए और 450 400 चाहिए. आप बता दो कोई माउस पैड. भाई इस कार मेरे को जेन्युइनली इन्फो नहीं है भाई इतना. मैं अभी धीरे-धीरे सीख रहा हूं. Once the carnage is cleared out through mid. Leviathan playing this eco round as the sisterhood of the traveling vandal. पड़ा दी भाई. Dropping the gun around, seeing if anybody can make use of it. It's Texas' turn. Free aim in the right spot there. Through the wall, no bullets connecting. Flash with the repeat. Oh भाई क्या 2 flashes आए back to back. Util still creeping up onto the angle, but will crosshair placement. Down दे दिया Zelsis ने. Lots to manage, lots to watch out for. That is a nice. dirty Okay. angle. Zelsis, he wants a little bit more here. Pushing all the way. Wow. Up. Clearing out the players. Nice, clean round, clean round, clean round. Clean round भाई Sentinels का. भाई देखो मेरे को चाहिए कि लेवियतन ये मैच जीते, लेकिन मेरे को है ना ये नहीं चाहिए कि सेंटिनल्स घर जाए. ठीक है, तो इसलिए I'm supporting Sentinels भाई. मुझे Sentinels को देखना है भाई. Masters में. So that's a big area for us to be paying attention to as Leviathan start their attack side. They need this one, otherwise their economy is going to be flat again. Close game चाहिए. हाँ, close game तो चाहिए. Skirmish breaking out now, out into B main. Refresh हाँ, अगले round में refresh करने बोलो. Oh भाई. Used to get out of dodge, still holding close to the corner. That is Sassy. Aspas free नहीं खेल रहा है बे. Just a trailblazer gets confirmation that there are a few players tucked still now into B main, losing control of it. That's extremely early in the round for Aspas to be using. Party बदल दिया साला. To be able to get into sight. It does make it difficult to run this burst dive comp without. आपको best player कौन सा लगता है? फिलहाल तो Demon 1. Are they actually able to use the other minute on the Lemon 1 to go and take some space and make it easier for them to get into sight? भाई एनआरजी का वापस एक मैच देखना है भाई. कोई तो मजा आया था उस दिन देखने. Trailblazer being held into his hands. Not going into the direction of market though. Zelsis doesn't expect that. मर गई आप तो. खाली बुकट पुश की यार जलशीश भाई. खाली बुकट पुश की जलशीश भाई आपने यार. It's given that first kill advantage now. हम तो आपको गुड मॉर्निंग कहने आए. 38 seconds. It's ticking down. टीमन पे स्पॉट हुआ फ्लैश में, इसलिए वो वापस बी पे आ गया. But now you might just see a bit of an explosion out towards heaven with the flash. Sets that one up. Taking all that space off angle by Zekken. What can he do with a rifle? Satchel. Seems to delay and deny. Nice. Sassy with the Spectre still. Double drop down, too much to deal with. Playing close to the pillar. You got a crossfire setup from Sen. They're really just trying to evade capture. Aspas, भाई आसपास का POV दिखा दो. Tens alone on the side. Tens gets one. Especially with Tens holding close. Oh भाई John Cutie ने मदद की भाई. Has to be the committal. No time. Did time? I'm not even too sure. I'm not too sure. Did it have enough? It's a win. Oh, dude. Oh भाई जीत गए. जीत गए भाई. भाई well played Tens. Well played Tens. Tens ने निकाला round. Tens hiding in a corner, dropping the spike plant, allowing John भाई to Tens play ने निकाला in, round. and then John just hides. I mean, if we can get a replay and look at the milliseconds on the clock here, it's got to be like single-digit milliseconds that made the difference. It was extraordinarily close. क्या हुआ? आँख में क्या हुआ? मेरे?
Nail by सारे rounds close गए थे, हाँ ना भाई. The defense side is going to be where they're favored. They put a lot of work into this, especially on split, like the analyst was saying. भाई भर दिया आसपास को अब नहीं जा रहा भाई. Tex ने मारा भाई Tens को. And that's very good awareness from Leviathan. Tens fights A-Ramp super aggro in a lot of these rounds. Aspas, seen him do this one before. Up draft, over the top, now a dash as well. Follows it up before the util. Oh. Sassy, he's still alive. Just maintaining that Oh, ground. भाई सब from the OP. rest of his team. It's connecting onto Oh भाई OP. everybody. Blind as आसपास भाई anything. किसको तो मार दो जरा. Through the main angle. आसपास भाई आसपास भाई. He's a lone player. Left to do so much here. Aspas, we know he's capable, but he just cannot land the Blade Storm. And it's another lovely round from Sen. They were aware when the fight start of the round, and then Sassy's anchoring is excellent because it not only does it find him a pick, but it also creates so much pressure on. आसपास भाई का ब्लेड स्टॉर्म आसपास भी नहीं लगा यार. बैड हो रहा है. Already starting to be a little bit. यार चैट मैंने जब से ट्रिम किया मैं क्या लग रहा हूँ ना भाई. ये देखो ना. Shit. Oh yeah, should have been a guarantee round number 2. God, the round where they आसपास मेरे जैसा खेलता है. are able to get to the spot. एक राउंड के लिए तेरे जैसा खेला है साले सिर्फ. इससे अच्छा जेट तो हर्ष भाई खेलते हैं. Favored in that post plan situation. It's really tough for John to win unless he wins by time there. भाई मैं तो लॉजिटेक G402 और मेरा डेल के साथ आया हुआ फ्री का सस्ता माउस पैड यूज कर रहा हूँ. क्या बात है. इतनी रात को हैंडसम क्यों दिख रहे हैं. अगर मैं हे केलं ना भारी केलं की नाही. नागनाथ 50 साल से पूछ रहा है यही चीज अजून गेला नाही. ऐसा है क्या वत्सल. आसपास भाई आसपास मार के मर गए. भाई इतने दिन से वही कोट पहना है. नहाते नहीं हो क्या. नहीं नहाता कौन है. हर्ष भाई हेलो डार्क ओपी कैसी हो. All grouped up, 4-1 default. Zeno on the opposite side of the map here, but LEV probably going to be going for a familiar play, maybe a fast play up through ramp, or possibly to the site with the ult. Who knows? Ramp control. That's what they're aiming for. Again, this kind of play designed to bully Tens, who is often going to be in that spot. He's actually made the swap over to B with John Cutie. So coming out, the timeout from Leviathan, Sentinels change up how they're running their defensive side. It's common enough angles that are just being spammed down here, but given a lot of room to breathe. They put the wall up. Methodical with the clearance. Oh, that's काट दिया बे. allowing the dog there. X के पास ult है बे. It's given LEV a much happier time over in heaven. Yeah, full control of it. Still worried about Ben. Oh my god. That's a huge pick. B heaven वाला kill मिल गया भाई इनको. अभी B heaven पूरा clear है. They can be in B heaven right now. But पूरा instead, mid LEV, it Zelsis looks पे like रहता the था. best call of action here is to go from heaven to sight with Tex's ult. And it's gonna be so हाँ बे टेक्स अगर अल्ट किया ना तो सैसी मर जाएगा साइड पे. भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया. He still gets one. Wow. Spraying and praying. Only with the phantom though, it's damage. Bullets going भाई सैसी भाई मरते मरते एक को मार रही है. पिछले राउंड में भी मारा. गुड ब्लाइंड. दोनों ब्लाइंड हो गए यहाँ पे. सेकंड already in straight into elbow damage. Weakened. Second on 12 HP. How did they get themselves into this one? It's almost an impossibility. Maybe with the satchel to set up the play, but nobody wants to peek for it. Leading the charge, Zekken. How? Player showstopper. And fired! 2 Why versus 2. Zekken? You're gonna move on here. Players round. Oh my god, this guy! Still. And trying to do it versus the star player of this team, Aspas. He bides his time. He waits it out. He knows he's got a cross, but he misses the initial shot. No way, right? Baiting, but ice cold from Well Aspas. played, bhai. He knows Well that played, way out. Aspas. Too good. This guy is too good, bhai. This guy is too good. This guy is too good. Bhai, Zekken played it too well, bhai. क्या खेला Zekken. Not in that moment, making sure that LEV get on the board. Insane round, bhai. क्या round था ये. भाई गेम है यार. गेम है. मजा आ रहा है देखने. For LEV to be able to get into the site. ये देख क्या मारा बच्ची है. Zekken really made a try of it there though. All as the lowest player. अरे really did make it look dangerous.
Leviathan are putting an enormous emphasis on dominating ramp control at the start of these rounds. Same play almost every single time, just with the pull comboed up, hoping to catch the play. And it might just be overextending, like you said, you know, 10's playing in that position. Lucky था, कौन lucky था? आशीष क्या लिख रहा है? Extremely reminiscent of the game that Finesse called against EG last year. All of this pressure A ramp opens up mid. I mean, you look at it. भाई लोग FNS किधर खेलता है बे अभी? FNS नहीं खेलता क्या? वो एनर्जी में खेलता था ना? To make sure that there hasn't been a deep lurk. L streamer भाई, L streamer, टट्टी streamer भाई, टट्टी streamer, टट्टिया कलाइया streamer. I think this round, Brent, Com's भाई सैसी अभी A पे नहीं खेल रहा है. There's nobody anchoring A. If Com decides to use it at some point, content creator. Post plant Viper's pit down. Look, all of the seekers going up there. Yeah. Actually, FNS and Solomon break. Does put some concern and consternation into it. Celsius spraying down with a kill trip. Close angle. Oh भाई धप्पा wall किया है. Nice kill king. Get loose a king. 30 seconds left. Still there with Celsius ने attack alt किया है defensive alt. Onto the approach, spamming all the corners, not into the usual places, but it does allow them to get into the site. This is so difficult, so awkward for Lev. यार थोड़ा danger है भाई. Sassy though has no flash. भाई heaven hold कर रहा है king. Magical. The reaction times. Fire on all cylinders. Oh nice one Celsius. What? And King. Celsius. Onto the high ground here. Cage tapping away. Half on the defuse on QT. He will be removed. The molly on top, but is it gonna be well enough? played. He won it. Potentially Celsius. Decay and vulnerable, but already half on the defuse. Sentinels. अबे क्या हैकर माफिक मारा ये? And an amazing round from Celsius. That ult, I love it. भाई उसने आसपास को क्या मारा है? Put so much pressure onto people trying to play any kind of post plant positions, trying to get the spike ये देखो ये देखो. And the flicks he had inside. अरे ब्रो उन लोग ने आसपास का किल नहीं दिखाया ब्रो. छी. Beautiful awareness. भाई उसने वो फर्स्ट किल लिया ना साइट, उसके बाद में आसपास को उसने स्पैम किया है. Instantly. I mean, when you win one and lose like that and just get rid of all of the loss bonus, devastating. Yeah, detrimental. Working with scraps here. One of the ways that Leviathan were able to put some pressure on Loud and cause some of that chaos was by getting these lurks in through A. Aspas 10-5. It's so much more difficult to do that when there's a Cypher on the other side. You don't know when you're going to hit a trip or a cam. This time though, John. कोई साइड नहीं खेल रहा है ये बार. ओके वो लोग लो बाय है. Could be inside of it. Certainly. मतलब बाय नहीं है. I hear that dash here. Full control. अकेले सेकंड पे गन है भाई. ओके इनका सेव है, लेविएटन का सेव है. मैं क्या कर रहा हूँ? The actual spike. They're committing the cosmic divide into this. It's on a weaker buy round, a really all-in approach from Lev. फिर भी अल्ट किए वे वो लोग. Still with the blade storm, smoke dropped down. He's just trying to sow some chaos into it. Make sure he can play the distraction, but it's all being watched for. Two players there. Still भाई मजीनो. Mazino attack onto this one, round to the back, and he does bite back. Half on the defuse. Half हो Celsius. गया. The pull wasn't in time for this one. Re-smoked off as well. That's going to be putting this all on the line. The pressure there. Sentinels. They're under control. Nice one, Sen. That's really bizarre from Leviathan that they weren't allowed Ash भाई आपका favorite गाना? any pressure there to the defuse. They had the pull. The pull was a little late and already allowed half to come on. And then there didn't really seem to be a game plan for the follow-up. The retakes from SEN are calm, controlled, they go through the motions, ensure that they punish anybody that tries to refight for heaven or swing onto that diffuser. I love them. They're looking strong, yeah, for real. But आसपास भी सही खेल रहा है वे. Really well drilled. They alternate that defensive setup. भाई ये attacking map लगता है मेरे को. Looking around the ults, so they might have to. I guess this is the first round. ये लोग slow खेल रहे हैं. Second and 10s were both there, ready to fight it. Being recleared. Yeah, Dog is going to re-clear out King, but I think this should make it obvious that Lev are playing for mid as well. You don't see anybody over on this side of the map. Bots. King. Hoping for the timing. That's a showstopper. Around the side 9. Help King. Oh my goodness, going to be holding your breath. He's 9 HP. Tagged up, delayed. Celsius is there with the snake bites, still trying to just lock down control of this heaven area. Now, there's going to be that pressure onto John QT. Has to play within his cages, backing away.
Maybe you can point straight to the traces. They're going to be swarming his position on from the high ground approach. He doesn't know which angle to watch for. How does he get that kill? It's precise. भाई कैसे मारा टेक्स को उसने? King takes a cheeky ओ one. भाई किंग ने Bites off निकाला. the apple, backs away, doesn't overstay his welcome. भाई क्या मारा जॉन क्यूटी ने वो? Put his players in an advantage situation. SEN are going to find it difficult here. Squad. Heal on line 2. Top these players right back up. Crossfire. All into spawn. How do they deal with this? It's all watched into main. The movement turns, attempting to jiggle and force that fight out. सेव करना पड़ेगा भाई इनको खतरनाक. FNS को खुद की टीम बनानी थी, किसी ने एग्री नहीं किया तो ब्रेक. To get themselves back onto their feet. भूख लग रही है. A really important. They've got to keep these guns intact. Yeah, it is भूख लग रही है. They're pretty fine in their current situation. They would still be fine. कॉम सोवा क्यों नहीं खेल रहा है? अभी कॉम ये क्या उसे कहते हैं? अभी इनिशिएटर ही खेल रहा है ना, तो ये वाले मैप पे सोवा की जरूरत नहीं रहेगी. Pick the attack side to begin with, right? And this composition, often we've seen it go really well on the attack side. Nice shot. The double duelist can be explosive, difficult to deal with. But SEN have got a very nice idea of when they want to play retake, how they want to slowly clear out the rest of the map and put pressure on LEV in the post plan. But when you heard the devs talk about the map pool, अभी A की तरफ sorry B की तरफ में काफी ज़्यादा Leviathans के players हैं. Okay, they are trying mid. They are trying mid again. The amount of attention that SEN A पे हल्ला करना बंद ही कर दिए भाई. For sure, this was an amazing map for them during the off Zelsis B heaven ना खेल के A events खेल रहा. But you could have said that for both. Bro, he almost spotted him. Extraordinarily tight group B. SEN are picking this time into reclaim. भाई बाहर आ गया Zelsis. Isn't something they've done. काटेगा, कुत्ता काटेगा अभी, कुत्ता. On both sides. Misses. नहीं काटा. Oh, stun. Can't link that one up into a follow-up, so Zelsis. Silo खेल रही है, Silo. Oh, flash. Advantage. Wow, भाई Zelsis. Absolute insanity from him. Luckily, traded out for LEV. You could see there they expected Zelsis to be back in vents. They were trying to put some pressure on him with a flash and a double blast pack. Sassi takes contact over here. He's got Tens and Zekken, the young'uns of the squad, to back him up. And again we see King in a position. A जाने का कॉल दे रहे वे, लेकिन King को कुछ यही नहीं मिला, कंट्रोल ही नहीं मिला A पे. There's only 30 seconds here. They have to try mid to A. Where John could again play to try to win the round through time. There is very little on the clock. The cage as well to partition up a section of the side. 20 seconds. Gonna move on. Destroyed. Dash forwards by Aspas, clearing it up and cutting it up into the side. He wants to take the peek. Trying to play the anti. Wow! Bro, he has done his job. He's got to drop down here. Mazina got to go for this plant. It has to be safe. Oh my. No way. King. भाई King ने मारा 2v2 लाया भाई राउंड ये. 2v1. खतरनाक राउंड भाई. Almost लाया था राउंड ये लोग ने. I thought the way that Leviathan were coming through heaven was भाई really साहब. nice. The flash, Aspas coming forwards, and John just takes a swing timing that completely catches them inside of their utility. भाई John ने जो मारा है साइड पे. Plays there from Zelsis and from John stepping in front of the util to some degree. In क्या दिखा रहे हो? Aggression. वाह भाई क्या रिप्ले था. वाह मजा आ गया देख के तो. अरे भाई. It's another round where SEN are able to get off a retake. हो गया भाई Pacific. बस कर zoom करना. Great position. Yeah. ए भाई हो गया है. No hesitancy when I heard that spike going down. I realized I could take the fight of one player out of the action. It's one of the bread and butters of the success of SEN. भाई लेव को सपोर्टर हूँ. RCB का भी सेम सीन है. Making sure they make those correct decisions. भाई आज वो हरमनप्रीत ने ना ऐसे उल्टे बैच से एक ये मारा भाई. रिवर्स स्कूप. I'll have a few rifles online into this one. Just Aspas and Com. Potential playmakers. Nade. No भाई Zelsis BT दे रहा है भाई. Zelsis BT दे रहा है. अरे भाई BT दे रहा है भाई. अरे भाई 2 मार दिए इवेंट्स में. 3v3 आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट पिक लिया भाई लेक्स. बाय शील्ड्स नहीं है दोनों पास, जिनके पास भी राइफल्स है. Maintains a little bit of pressure over towards A heaven.
In the meantime, TenZ is walking out B main, just using that info and having some bravery to go and take a risk. You could argue it's unnecessary in this kind of round, but LEV have picked up 2 rifles. It's quite even. अभी return ticket करेगा For TenZ. the walkout. Sees it, first shot. Not quite landing to the dome, but it's damage done equally. Has to back away and respect this now. Plant onto B. Section to the side here. LEV seeking to reclaim a bit more ground. Pushing forwards into... This ult is so good. Big ult. It lets second and TenZ know whether or not they're being pressured. Oh, on a small phase. बेचारा भाई क्या timing हुआ इसके साथ. Better angle. It's all onto Tex really with the rifle. King, what can you do? Only with the Sheriff wrapping around. Attack onto the defuse. TenZ. Oh भाई. Oh भाई क्या crazy retake. क्या crazy retake. Crazy retake. But Leviathan का ये buy अच्छा नहीं था. ये नाच रहा क्यों है भाई? Super seriously. Drilling all of these setups, protocols. MIBR जीता, yes. They're decisive with each other. आज एग्जाम में इसलिए सुबह उठा था. तू अभी भी स्ट्रीम कर रहा है साले. Even when TenZ makes this repush Literally भाई. पूरा दिन स्ट्रीम ही कर रहा हूँ. मजा आ रहा है लेकिन जो भी हो रहा है. And you hear there's Zelsis drilling out what his team needs to be looking out for in round 12. बस Zelsis IGL करता है बे. मेरे को लगा Sassy John क्यूटी IGL करता है मेरे को लगा. Potentially again using that showstopper, but it's the सब लोग इनपुट देते भाई. How do they take it? Early flash being utilized by SEN. 3 जन 2 जन रैम्स देख रहे. अल्ट खोल दे भाई Tex. Ground like they were hoping for, but now taking it in a different direction. Cosmic Divide playing in front of it. Sassy's there backing. Now away. Kill trip. Tex just trying to hold this one for us, but he's lit up like a Christmas tree, and you can play Ring Around the Roses, weaving in and out. The Cosmic Divide, it does not matter, will not protect him. हाँ commentary करता है भाई ये. Called here by SEN, pushing down now with the Trailblazer, flash forwards. It's all being utilized. खत्म कर दिए भाई Leviathan को. As difficult as possible for LEV, but with the plant down, maybe they can have a go of it. Still, all the players in position onto the post. Christmas Eve बोल दी इस भाई साहब. Complete control for SEN, and it's slow. It's the way the siege goes here. 5 players, they can pick them apart, but Aspas might just be the first one to do it. King alongside him, filling up the feed and ready. Need more where that comes from. It's all down to Aspas. नहीं यार. Unlucky भाई आसपास भाई. सारे headshot ही तो लग रहे थे भाई. कहाँ गए bullets क्या मालूम. Putting pressure on the people as Plant was going down and then setting up that advantage retake. These have worked so nicely for Sam. And their defense has, I think, generally been a bit better on split. So there's still chances for LEV in the next half. But in general, this has just been an outplay. Guys, like मारिए दोस्तों, like मारिए. 1000 लाइक. अगर आपको अपनी फेवरेट टीम को जिताना है तो लाइक मारिए, और अगर आपको अपने मोस्ट हेटेड टीम को हराना है तो सब्सक्राइब करिए. ए ज़ेकन की मम्मी. I'm here with Mama Zekin. I don't know. Let's go what? Let's go Zekin. Let's go Zekin. Now I have to ask you. We really watched Zekin grow up as a player. We saw him while he was in high school playing. What has it been like as his mother, watching him grow up as a player? As a mom, I feel so blessed because Zekin really works so hard, and all the teams too. They're so good, and you know, he's born to play. He's been playing sports since he was 4 until now. So he's really born to play and win. Let's go, Zekin. Let's go, Zekin. Now I have to ask, because as someone who's also from the greatest state in the Union, New Jersey. ऐसे माँ बाप इंडिया में क्यों नहीं होते? भाई luckily मेरे हैं भाई. I know it's a very भगवान की दुआ से. state. So having Zekin move literally across the country to achieve his dream, what was that like? It's a lot of hard work, to be honest. You know, we gotta like make sure that we get in touch with the school, the management, and everybody. So, you know, he's a very professional esports player and a very good A student. I feel so blessed that he finished high school with good grades, like A student. I'm so blessed. सुन रहे हो क्या? And until now, you know, make your dream come true, guys. You know, dreams really can happen, you know. Yes, they Facts. can. Now, Facts. If Zekin could hear you right now, what would you want to say to him? Zekin, we're so proud of you. Have fun and kick butt. Bring home the trophy, boy. Okay.
simple words. Well, thank you so much, Mama Zekin. Can we give it up one more time for Mama Zekin? The sweetest. And it has been a wonderful halftime, but we have a game to get back to. So Brennan Saito, please take it away. Thank you, Liz. क्या बोली सुना क्या? 14 and 5 straight. उनकी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा यही चीज कि ज़ेकन ने अपनी भाई पढ़ाई कंप्लीट की अच्छे मार्क्स से। समझ रहे हो भाई, पढ़ाई करो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको चाहिए तुम पढ़े लिखो। सालो तुम पढ़ते नहीं हो, बोलते हो भाई मुझे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। अबे जाए ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन के आज पैसा कमाएंगे, कल नहीं कमाएंगे, फिर रास्ते पे आ जाओगे। क्या करोगे पढ़ाई नहीं किए तो? Look how quickly Sentinels have taken fence control. Second early bit of damage applied here. Takes one straight to the head, but the heal's online. So back up to 100. King with a jump spot, holding the molly to snakebite. Here's the rumble with the footsteps and just slows it down. But this is a lot of utility and a lot of players being pulled around at the minute mark. Sen are still really flexible in terms of where they can end. Celsius looking to apply some pressure. This Viper Orb is lovely. Very difficult to work around. You need two players watching either side of it. बहुत crazy lurking smoke है वो Celsius का. And Sen have created a nice opening for themselves over towards A. तीन जन B की तरफ है. ये flash शायद बता देगा and that's why they'll go. We've seen many players pop off from this spot, but can he do it too? Look at a draw with that one, but he'll take it. Sassy, drop down and out of the fight now. Will be the plant. Safe position. Forwards. Second, actually giving up the ground when he hears the flash and the footsteps. तीन जन सीढ़ी से आ रहे एक और दो रैम्प से. The refight called. He's still holding this one, hoping for the right clicks. Tex finding it. A stun. Now applied. Finding this one difficult. Risks have to be taken for Sentinels because it's all LEV right now. Nice one, bhai. Round into the corner. Oh, bhai, क्या control लिए ले. Bhai. It's 4 so far. Ace. Available, ready, and waiting. The crowd is chanting. They want it, they can feel it. Tex shuts it down, but the damage. 18 health, sticking half on the defuse. Oh, bhai. Round है यार, round है. Sentinels pulled that pistol round away. They were in a 2v4, I think. भाई क्या round निकाले. Should not have been possible. नहीं भाई 2v4 कहाँ पे था? Finding that value in terms of the way that they were playing off each other, using one of the jump peaks in order to set up the other. My mom best Candy Crush player भेंडी 7000 level. हैं? Forced to force here. There's no grind बोलते grind. You're down 10-3. जॉन क्यूटी ओपी है भाई. मैं जा रहा पढ़ने हॉर्स बच्चों को फेल कराना चाहता है. जा साले पढ़ाई कर. All in. This is without the plant money. LEV on defense side. Revealing her hands with the early bullets coming through straight through mid. But Sentinel's not eager to fight there. Just that pressure applied. Concealment. Set the sights onto B main. Jiggle. Not punished by Mazzino. He grabs that info. Poison orb emitting. Look at how annoying this Viper Orb is. Gives some ground into B main, and a call is being made here right at the minute mark. Sentinel spy man push करते हुए. To cross into the site, and they're trying to flood attempt to defend this one left. Will it be enough? Force किए बे. Just run straight wide there. अरे भाई एक दूसरे को देख रहे कैसे. Smoke. Playing off of instinct. Fat. I'll push back. 4 players up now. Ult online with a neural theft. That's going to be spotting out where any of these potential players are. And second, of course, he jumps on the chat. On remove. 2 players left for LEV, and it's everything that has to be invested. It's a miracle if they win this one. They're going to go for it. You have to at this point. But a crossfire set up as Jiggle peaks, watching for the high ground angle. They know where the last player GG लिख दो भाई लोग. GG लिख दो. For King. GG लिख दो. GG लिख दो. He'll do some damage, but that's about it. भाई लेकिन कुछ भी बोलो यार, स्टिंगर ऐसी गन है ना भाई, मेरे को प्यार आ गया स्टिंगर पे. आ गया स्टिंगर, बहुत प्यारी गन है. GG हो गया भाई. GG हो गया. सेंटिनल ले OP on going on everyone's top. चुम्मी रे चुम्मी This gameplay. version of Sentinels looks like they've learned from the game against Loud and come out with something even better.
कुछ टाइम आउट वाइम आउट लेने की पद्धत है लेविएथन को हैं? कुछ अरे हारना है मतलब। You're right, Josh. You know, have to invest it all every single round just to stand a chance. Cautious at the beginning. Seeing that jump spot now. There. No Kings playing into this tucked angle. भाई सेंटिनल्स तो बाहर जा रहा है आज। As soon as the orb goes down. अच्छा भर रहा है आज बोल रहा है। Okay, sorry. They've been waiting for it to go down. That is No way. Doing the damage again. The kill team. What is happening? Into the feed. Tex. With that one, Aspas round to the side. Oh भाई trade for trade 2v3 आया। Storming and सेंटिनल्स के 3 बचे भाई। But they back away. Call in for the pause in the round. भाई मेरे को मूतने जाना है तब से, लेकिन इतने फास्ट राउंड्स खेल रहे हैं ना ये लोग। अभी मूत के आ सकते हैं अपन आराम से। चलो मैं आया। Both of the players clearing different routes on the way to from B to A have completely missed the pathing of SEN. Be an incorrect gamble, and this makes the round almost impossible. They'll be in a disadvantaged situation with no idea where the Sentinels players are positioned, trying to pull off the retake, and they've got to go for it. You can't save 2 stingers into the next and play for overtime, 12-3 down. You got to go for it. Few advantages here for LEV in this situation. They've got 2 flashes on comm. It's planted in a safe tuck position, so the post plant might be able to dealt with. But you really expect Zekken here onto the high ground, drops down. Hearing that one, Mazzino should be comming that one to his team. Information Phonepe with the cage as well, splitting this one up. Now comm doesn't want to use Util, doesn't want to reveal his hand. He's contacting up into it, spraying through, but leaves it just down to Mazzino. Early peek here. Smoke propped up, didn't even tap this one, didn't even force the swing and face out SEN. The 12th round is theirs. One more step, that's all they have to take. This is an absolute outclassing from SEN on this map. And yeah, these last few rounds, Leviathan's economy has been put in a bad position, and they're having to send whatever they can. I mean, the way that SEN are bursting through what Lev are doing on the defense side, it's so nice. Every idea is there and tight for Sentinels on split. Kill them. And Zekken continues to dominate on the entries, 17-7. He's the spearhead for the team. Being set up for all of this, and he's delivering. Tap, tap goes King, but the bullets don't land. I threaten. Orbs over the top, having controls already. There's Paranoia. Connecting onto him, but Zelts is also being brought down. King into the elbow angle to help him. Good movement in the end. GG. Traded Wait, new bait 2v3 है. I mean 3v4 है. Spike planted. All of these players. This is imposter. क्या किया उसने? वो नेड किया last round इसलिए. Awkward for them. Positioning is. It's a nasty one. You have to try and take the fight to them. That's the cause of that flash out wide. Stun still up. It's being covered. Showstopper. It's well earned now. And out wide, playing for the fuse time. Oh, भाई ये time काफी buy करेगा ये showstopper. What? But has he bought enough time for the slam dunk Sorry, finish? Chad. Ripping the head off tens. In through the back now. Second. Nowhere to run, nowhere to hide. Double dunk. Dodging and juking. 1v1. Time is not on their side. Sentinels winning map number 1. And what a way to finish with Sassy putting down Aspas. The superstar player from Leviathan just never got an opportunity into this game. Complete team outplay from Sentinels. Looking immaculate there on split. This was the map where we expected Sentinels to have the best chance against Leviathan. But I don't think we were expecting it to be this one-sided. 13-3 indicates that SEN should have great chances even when the map pool gets more difficult later on. This was an outclassing. Pure domination. I mean, how many situations does SEN find themselves in? Either with a man disadvantage or what, but even a positioning disadvantage. भाई लोग यार सेंटिनल्स ने बता दिया उनको कि घर जाओ, तुम्हारा काम 25 होने वाला है, तुम लोग घर जाओ, ऐसा बोला है। लेकिन है ना, ऐसा विषय भी हो सकता है क्या कि आसपास भाई का जो एम है ना वो अभी ठंडा है,
अभी ये गेम में ना, ये गेम उनका वार्म अप गेम था, अभी वो हाथ गरम कर लिए, अभी मैच चालू नहीं हुआ है तो अभी वो और हाथ गरम करेंगे धीरे धीरे, और फिर गेम में आएंगे ना गरम हाथ के साथ तो भाई फोड़ेंगे, ऐसा मेरे को स्मेल आ रहा है। वो सब मारने वाले। नेक्स्ट मैप क्या है मेरे को पता नहीं एक्चुअली भाई। बोर्ड्स के बाद जिम ज्वाइन करूंगा, कुछ टिप्स एंड प्रिकॉशंस लर्निंग बता दो फॉर बिगनर्स। हैवी मत उठाओ ज़्यादा, देख के कि भाई सब लोग हैवी उठा रहे हैं, मैं 2.5 का उठा रहा हूँ। फॉर्म इंपॉर्टेंट है। लो क्या उसे कहते हैं, कम किलो भी मारोगे ना तो भी ज़्यादा रेप्स मारा करो, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर जब लगे कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब हैवी करोगे, लेकिन एकदम भी हैवी नहीं करने का दूसरों का देख के। चलो नेक्स्ट मैप कौन सा है? ब्रीज है। नेक्स्ट मैप ब्रीज है, इसका मतलब कोई यूरो खेलेगा। टेंस यूरो नहीं यार, टेंस को ये लोग भाई केओ दे देंगे भाई, हट यार। शेन इज कुकिंग, हाँ ना भाई, शेन कुकिंग, शेन कूट है। हबीब शेख, क्या प्यारा सेटअप है भाई। हबीब भाई आप गिटार बजाते हो, क्या बात है। आई लव गिटारिस्ट्स। हाय, मेरे कॉलेज में ना एक बंदा गिटार बजाता था क्या, और भाई वो गिटार ऐसा और गाता था क्या, गिटार गाते बजाते बजाते गाता था। तो भाई उसके आजू बाजू है ना, उसके आजू बाजू नुस्ते लड़कियां भाई, नुस्ते भाई। एक अलग ही वेपन है वो, मालूम क्या, वो जहरीला वेपन। अगर तुमको ऐसा चाहिए ना भाई, गिटार बजाओ। बहुत स्कोप है भाई, बहुत स्कोप है, मजाक से हटके। वाह क्या गाता है। तू अभी पढ़ाई कर रहा है मेरे भाई? अभी इस समय 5 बज चुके हैं। अच्छा हाँ, अभी तो उठे रहेंगे ना, सही बात है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ये टाइम पे उठना जरूरी है। You think a couple bad days is gonna stop me? Ha! You think a couple bad days is gonna stop me? Ha! I eat bad days for fucking breakfast, you understand me? Ah! क्या था पता नहीं, मजा आया देखने। इस रिवील हो गया भाई साहब, अज्जू भाई ओपी। लो कर लो बात। एक्चुअल रैंक पीक, एक्चुअल रैंक क्या होता है भाई? हाँ स्मर्फर साले, एक्सक्लेमेशन डिस्कॉर्ड डालो, वो वाली लिंक चलती है। अभी फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा, कुछ क्लिक क्यों नहीं हो रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों आ रहा है, क्लिप क्यों चल रही है फिर? शॉर्ट शॉर्ट असेंडेंट, असेंडेंट या इमॉर्टल है। लो कर लो बात। डायमंड भाई, डायमंड, वो देखने के बाद डायमंड, वो देखने के बाद डायमंड भाई, डायमंड। अब भी इसका रैंक डायमंड है, पीक इसका ही मॉडल 3 है। सब हक दिया मैंने, सब हक दिया।
ओके डीमन, मैंने लिख के रखा है फोन में भाई, अभी नहीं भूलूंगा मैं। नेट क्या कर रही थी, क्या मालूम भाई, क्या नशा कर रही है। The word doesn't exist in the dictionary of Sentinels, clearly, according to the coach there. But you क्या know, बोल रहा है? I think that they have plenty of reason to feel confident because they came into that matchup and absolutely mollywopped Leviathan. That was just not even close. चैट, तुम लोग को मालूम है क्या, मैं ना कुछ नहीं, ऐसे लोग रहते ना जो अभी जैसा मैंने किया ना, ऐसे लोग रहते ना, उनको मेरे को है ना भाई उधर जाके ऐसा चापटी मारने का मन करता है, मालूम क्या। मैं ऐसा जाता हूँ और उनका मुंह ऐसा ना ऐसा खोलता हूँ और बोलता हूँ बोल बोल भाई बोल, पहले बोल, ऐसा बीच में नहीं छोड़ने का। भाई आग लग गई। नाइट चेटअप भाई, नाइट चेटअप यार, थोड़ा लाइट दिखाओ ना मेरे को, है ना पूरा चेटअप देखने के लिए अच्छा लगता है। मतलब टेबल कैसा है, टेबल के अंदर क्या रखा है, टेबल क्या, मतलब सांबर चौकशा लगता है मेरे को। मैंने इतने सारे चेटअप्स देख लिए, ये सारे चेटअप्स देख लिए भाई मैंने, है ना। अच्छा भाई पीसी अभी बिल्ड करूँ या थोड़ा वेट करके 1 लाख तक का पीसी स्पेक्स बता दो भाई लोग, बताओ जरा, सागर भाई को कोई हेल्प करो 1 लाख के पीसी का, मेरे को थोड़ा सा नॉलेज कैजुअल है। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड भाई, तुमने माइक काफी अच्छे से लगाया भाई, अच्छा लग रहा हो। बाकी भाई लोग लाइव चल रहा है अच्छा, या क्या सीन। कॉफी पीने पड़ेगी भाई, मेरे को ब्रेन डैमेज हो रहा है। भाई साहब ये ब्लैक कॉफी है ना, मेरे दिमाग में ना एक करंट छोड़ रही है, करंट छोड़ रही है भाई। भाई मेरे पॉइंट्स देखो कितने हैं, तुम्हारे पॉइंट्स कितने हैं भाई, तुम्हारे पॉइंट्स कितने हैं भाई। ये सब चाहिए भाई यूट्यूब पे भी, है ना, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स करना पड़ता है भाई गरीबों जैसे। भाई थोड़े अमीरों जैसे कुछ ये करो। $40,000 4K का क्लिप है भाई, टाइम लग रहा है यार, पैसिफिक में बहुत फटफट चालू हो जाते हैं मैचेस। Rena's here. Gold. Gold. Don't. Nice throw. She went away, bro. Silver. Wait. One enemy remaining. My ace, bro, my ace was there. Reloading. Watching CCTV always. Silver. Bronze gamer? Bro, the bronze gamers are actually going good nowadays, huh?
लाइट लगा दो यार विनय भाई, क्या दिख रहा है इसमें यार? आपकी आरजीबी और आपका वॉलपेपर देखने आया हूं मैं। मतलब पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ भाई, ये टेबल पे पढ़ाई होती है? ऐसा लग रहा है पढ़ाई छोड़ के सब हो रहा है भाई। इधर खा रहा है, ठीक है, इधर गोलियां भी ले ली भाई, इधर आइसक्रीम भी खाए जा रहा है वहां। अरे भाई क्या क्या कर रहा है भाई यहाँ पे तू? पढ़ाई छोड़ के सब हो रही है। और मैं खाऊंगा गोली और उसके बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगा और ओपी ओपी हो जाएगा। अरे चमन, Is that what it is? Is that really what it boils down to? Just the individuals because they should be going into roles that suit them here? Well, no, it doesn't, but that would at least get them a few Tens more rounds. on KO, let's go. ये तो मेरा favorite agent है. Obviously, the strategy going up against Sentinels, you have a lot of footage here that you can go back against, but not really anything for Breeze that you can really do. I mean, Breeze is a very simple map. I mean, it breaks down to a couple of ये क्या background music बज रहा है बे? वो तो hard background music बज रहा है. Complex than that, to be honest. Which isn't a bad thing. Let's be honest. No, that's just. सुन रहे हो तुम लोग? Background music सुनो. About individualism needing to step up, right? I think that's good. It's simple. Totally agree. Totally agree. And there you can see compositions. You're not really getting anything all that out of the ordinary. There's a way to play this map, and they're doing it. Exclamation Discord वाला link चलता है दोस्तों. Exclamation Discord डालो chat में, फिर वो link आएगा, वो चलता है. It's going to be a tall task as well for the Sentinels team, but if there's a squad that is up to the task, it will certainly be them. We're ready for map number 2, Riot Games Arena. I can't speak English. Thankfully, these two commentators can. It's Brennan Sideshow. Let's see if LEV can stand up to the test then. It's elimination on the line. One map that stands between them, continuing this series, continuing that lifeline. ये ज़्यादा खाते हैं ना अगर? To go to Madrid, or is it all going to peter out right here? अगर ये ज़्यादा खाते हैं ना, पेट में जल होता है और सुबह है ना ऐसा काम 25. How people view these teams, you know, when you lose here and you don't have an opportunity to impress people further, that's it. The beginning for Kickoff. That's how people are going to remember you, are these match losses. So LEV need to dig deep and pick themselves back up. Acid reflux हो जाएगा. Reflux. Default compositions on both sides. पानी ज़्यादा पियो. Very interesting to start off. You have Aspas. ये भाई ये देखो ये लोग चिकन मटन खा रहे आई चका. ये भाई वो ऐसा गोल गोल करके कौन दिखाया? On the attack side for LEV. Make usage maybe of the range on the map, the long distance duels. Sentinels, hello. Oh भाई पीक कर रहे फ्लैश के साथ. और perfection. You're witnessing it. There go two of the sheriffs. Yep, painting a master class before. जमा भाई जमा. गेम चालू होने से पहले मैंने रिजल्ट बता दिया 2-0 on Sentinel list. That was a nice double peek on top of it, but जमा निशा खाता बीसता. भाई बोर्ड से आज all the best बोल दे, all the best team. Leviathan taking control of B here. There is still a trip on the site. But you've got to imagine with how comfortable Sentinels look playing retake on split that they've drilled these retake protocols here on Breeze 2. चलो मैं पढ़ने जाता हूँ. जाओ जाओ. As well. ओ भाई ए से Zekken का ए से. Zekken का ए से. Time holding it down and then they re-clear mid together with the peak all the way through. I mean these players. Do they stand the chance? भाई बैक साइड वाले को लो भी कर दिया क्या Zekken ने? ए से भाई Zekken का. More than the goods here, the King. How is King gone? King भाई King? He's King. अब वो तो नहीं दिखाएगा ना ऑब्जर्वर. भाई अचानक 1v2 आ गया. He's weak. 1v1. Doing it, spotting him into main, but King, you got to think he's favored. It's all him. You got to bow down before that. How has he pulled these kills off? कैसे भाई? They came into the round with 3 sheriffs. 2 of them dropped to the floor instantly because Sen had that और lovely उसने 3 body shots में 3 जन को मारा है. Sen looked again disciplined, controlled on the retake. Doesn't matter. King with 4 in the round. भाई मतलब ठीक है रिप्ले नहीं दिखाना है आपको. हाँ ठीक है हम सोच लेते हैं कैसा क्या हुआ. ठीक है समझ गया. अच्छा wow. You know, idea or play or team play that really wins that. Wow. But the individuals on Leviathan pulling through. Ooh, through the wall. That's a lot of damage. Up down to 5. Never attempted. Wow, miss flash. You're being picked up. The protocols seem a little bit dodgy by LEV, even though the one क्या round. scene भाई क्या scene?
लगातार दूसरी बार ये चीज हुआ बे अडैप्ट करो यार अडैप्ट करो And that's a really common setup as well. It's not like TenZ is innovating there with that flash. No, it's pretty simple. My camera is destroyed. Same kind of feel to this as the pistol round. They haven't lost as many players, but it's still disadvantage for Leviathan coming into B. SEN happy to play retake. ऐसी 1 HP है भाई सेल्सियस भी 1 HP है कैसे इनकी इतनी HP लो गई अच्छा वो लोग ने वेन पुश किया था shot Aspas the job done for Aspas reload reposition I've dealt with on top of it 2-0 भाई ओ भाई it just looks curtains here for SEN really going down Aspas giving this guy easy access to the ultimate for a future round Aspas the gamer We haven't really seen anyone tear it up with the Outlaw recently. वॉच भाई इतना सुबह वॉच पार्टी सुबह का भाई पूरी रात वॉच पार्टी चली है You'd rather keep it. भाई दे देना एक शॉट दे दे अरे यार आर पर शॉट दे देता भाई I believe yeah And the SEN players playing to deny those ult orbs that Aspas would love to have gone online. So a somewhat shaky beginning to this as Leviathan go up 2-0 and yet get caught by this play in every time. So that's got to be something that they're aware of. In general, I think this map on both sides you're going to see the same kind of combo. The primary smokes players for both teams have swapped over to play KO, to play the initiator, going back to roles where both are comfortable. And they're going to be trying to set up the jet on various different angles. Walking off setup. The flash and the dart. Lobbed over into mid just to feign like they're taking that early control. Now that Outlaw, will it get any sort of value? It does force the full armor purchases from SEN, so nobody's in danger of being one shot. Creeping around the map, it's Aspas. अरे ड्रोन हो गया यार हट Spots him. One left for it would have to be to the dome for the kill here. Now you start to see it. Util. भाई क्या फ्लैश डाल रहा है भाई टेंस टेंस कुछ भी फ्लैश ओ भाई टेक्स भाई ने मिड से आके मारा है गुड फ्लैश अब बाय टेंस अगेन He's getting out of there once more. To safety now in numbers, playing with the rest of them. This one is going a bit skew. Wait, मारा आसपास ने टेंस को कैसे मारा पता नहीं क्योंकि ऑब्जर्वर भाई थोड़े they don't really have to worry about the mid presence as much, but player disadvantage for Sentinels. So वह पीछे से इतना क्यों खेल रहा है बे? वो मिड से आ रहा है ओके bonus underhanded flash Mizzino pushing forwards the reposition Aspas still there active into the fight 2v3 है भाइयों ऑलमोस्ट बोनस जीत रहे भाई ये लोग एक मिड से आ रहा है such a wide face and Leviathan bonus जीते bonus round baby very good idea there from Lev. I mean you can see that they've put some serious thought into how they're going to approach this map. There was an opportunity there for Aspas मेरे निन्ना अंधे हो गए ये सुन के आज भाई सनग्लासेस कहाँ से लिए ये लिए है लेंस कार्ड से On the defense side, it's really difficult to cover all of the lanes on Breeze. नाइज़ू इसमें डिले नहीं होता ना ऑब्जर्वर क्या ही कर सकता बात तो सही है Rocket said increase the tempo, but here we're seeing a nice slow round played pretty well. ऐसा है ना ऑब्जर्वर्स के लिए एक स्पेशल ऐसा एक डेक आना चाहिए तो जिसमें ना तुम टच स्क्रीन सब कुछ कर सकते हो फुल टच स्क्रीन एकदम मतलब ऐसा कि भाई टेंस दिख रहा है टेंस पे क्लिक करो सीधा पीओवी ऐसा We don't see a trip at the end of halls and there wasn't one in the previous round either. It is fairly uncommon to have people full push down halls into the defender's spawn. Here. But having that trip there is just such peace of mind. Weak enough. And there you see Zekin is forced to jiggle peek it. No utility to hold that area. Punished for it. And this, I think, for Leviathan is going to really start conditioning Sentinels. They're either going to want to fight over halls themselves at the start of the तुमको round. मालूम अपने को है ना सिर्फ 20 फॉलोवर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे 18,000 फॉलोवर्स के लिए आईपीएल जैसा होना चाहिए कि खुद कैमरा सिलेक्ट कर पाओ Look at that, plenty of targets to choose from. Looking the other way, but finally adjusting with the aim. आसपास के कोई आसपास भी नहीं आ सकता. Another clean one here for Lev. Make their way up to 4.
which is already more rounds than they got in the entirety of Split. Yeah. So you can see here that the map making an enormous difference. The money and also is booming. just momentum making an enormous difference. You think back to Split, they weren't able to convert off the back of the pistol. Here, huge amount of momentum coming in because they're 4-0 up, but now they're also starting to get ultimates that can भाई benefit the F1 economy जैसा है ना further. वो होना चाहिए Aspas, 8-1. इनका है ना He's a player हर एक का POV ठीक है और कॉम्स F1 जैसे भाई साहब मजा आ जाए Nice work from Leviathan. क्या दिख रहा है वे छावा देखना There's that answer that we were expecting into map number 2. Breeze their map. 4-0 हो रहा है बाबा 4-0 OP let's go sheesh sheesh Set up to allow them into sheesh the sheesh site. They do choose OP to go over towards B, which LEV are putting their sights set over towards us. Nice भाई shot क्या down. बात है भाई वो शाउट ने कैमरा तोड़ दी Now an attempt to exit. एंड ये नाइफ में कोई नहीं आया एंटर किया The knife is आसपास ने fantastic there. It just tells Aspas that there's nobody playing towards sight in an anchor position at all. So all is focused onto the back of the side as soon as that wall goes down. Tens has a lineup over towards ladder. Doesn't catch onto Aspas, so the Blade Storm's still online. Spike planted. Man off for Mazzino. ब्लेड स्टॉर्म मतलब अच्छा ये Tap. Warning shot. Second. Hello. On the other side of the map. Just with the knives there. कॉन्ग इतना डीप क्या कर रहा था भाई वाओ डैम भाई स्पैम में मार दी ओए गो Nasty business. Aspas, Mazzino. Cool, calm, collected. 2 versus 2 though. Still, you got to think time on the side of LEV here. It's ticking the position, and they don't know where these players are. Nice one, Tex, bhai. It's offset. Zeltas can't survive. Gun picked up. Dash still there. Second. You'd have to be handed so many more after that, and King with the perfect swing. भाई वो क्या शॉट दिया ना वे उस सिटी वाले को क्या शॉट दिया भाई इसने आसपास ने मां कसम बच्ची इमरान हाशमी लग रहा है कुछ भी into the site again for retake. You probably want to be so 13-0 नहीं पे कमबैक तो आएगा हैवी कमबैक आएगा ओ भाई दोनों ने इक्वली चुम्मा शॉट्स दिए भाई भाई इसने क्या मस्त मॉनिटर रखा है देखो ना नीचे Sentinels to get into good retake positions early on. Now Zekken, because he had the Blade Storm online, now has जोर से नहीं बोल सकता रे रेमो Zelsis locks down B with a trip to try to help him maintain control in this area. Sentinel's defense just got a whole lot scarier with the ult and the op. Lots of half armor targets though, definitely danger. Aspas still holding on to the outlaw. No one looking for a fight into mid though, at least on the defensive side for SEN. Grouped up, 3 players stacking over in A. धीरे धीरे ए पे जा रहे 2 जन लेकिन 3 जन मिड से आ रहे 4 जन ए पे भाई सेंटिनल्स के और एक तो ऑफ भी कर रहे हैं There's a gap in it. Still with the ult online, it means that Zekken actually can't dash out of there. He's kind of trapped. नाइस वन भाई कोई ड्राई पीक कर रहा नहीं है कितना अच्छा खेल रहे हैं वाओ वाओ John QT to try and reply here, but there's already players approaching the position, and look at that, the plan going down without any issues whatsoever. हम वापस मिड लर्क कर रहा है Into the post, perfect molly, forcing them back out into the open. You've got to try and double up here. For SEN, it's just looking too damn hard. They need some picks early on. Com is in a great position to just win the round towards the क्या end. कर रहा क्या है कॉम Molly. This time from SEN though, pushing the players out of the default spot. But you're right, they do need these picks. And Oh, Com gamer है भाई. Difference maker. An attempt there with the Oh, trace low as he कर gets दिया it उसको. online, but he's just one man. What can he do? Back क्या away. बात है भाई क्या Escape with राउंड your है life, यार potentially an upgrade. फॉर्म क्या खेला है भाई उधर And look at how much थर्ड the map मैच change makes a स्ट्रीम difference for करोगे these देखते हैं teams. I mean, LEV are completely in control here. Tom's the Sentinels rat. was going for an Chuha gamer anti-KO YT. setup. Chuha. Where Chong QT had put down a trip on B, rotated over towards yellow, and they were stacking on A. Cam was watching the middle of the map. इंग्लिश का पेपर है भाई जी आज सोचा था सुबह उठ के रिवाइज करूंगा देखो कर ही रहा हूँ आपके इंग्लिश स्किल्स सुन के भाई सीरियसली पढ़ाई कर फिगर ऑफ स्पीच वगैरह रिवाइज कर ले ठीक है रिवाइज कर ले भाई फिगर्स ऑफ स्पीच And it's unusual because we started out this map with Sentinels actually being the team to bring it on defense. Those flash peeks into A main were catching Leviathan off guard. When they went for early round aggression on defense, it was actually working. Yeah, they didn't win the round towards the end because King got a crazy 4K with the Sheriff. But the idea
made sense and the idea was working to set them up with an advantage. Now SEN are holding far back, sometimes full retake on one of the sites, and they just don't seem to have an ability to get back in. LEV are so happy to fight them as they're trying to take that space. They are really, really just backside positions being held by SEN. Perhaps that conditioning that you were talking about earlier with the halls lurks, I'm feeling like they have to just attach many bodies to try and watch that angle. I mean, to go for that push. I think that round was a good example of it there in round 6, because they had a camera set up in Nest that could have watched that area, and then they had Sassy watching it as well, and John Cutie in a passive position over towards yellow. So many people kind of ready in case. Figure of speech तो आते writing skills के tips दे दो. राइटिंग स्किल्स के टिप्स क्या भाई ग्रामर कम मिस्टेक्स करो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज कम लिखो It's all the way to round 7 half armor targets galore. Yeah, they've won so much आप that तो it's फंस become गई incredibly useful again. Yeah, and just bang flourishing, booming. And look, they go for this conditioning up holes again in the anti-eco, so using these anti-eco rounds to condition their opponent. Hence his hero kills है तो क्या हुआ भाई? This is one of the first times where we're seeing Sentinels go for like a contact re-clear, and Tex should get caught off guard there. No way, just about escaping. Sassy though. Drops down and locks down. John QT with a very wide face. There was nowhere to hide for Tex. Ult online. Couple of guns भाई granted. सब मिड पुश किए देखो सब फ्लैंक आ रहे हैं सब पांचों के पांचों जन फ्लैंक आ रहे हैं एक मिड से आ रहा है अभी They're the team pushing the tempo. One player to try and take the fight as John QT will pick his time. वाओ भाई जॉन क्यूटी क्लीन है भाई Oh my god John QT, absolute beauty with that one. Wow. Sassy opens the door wide. What a round by Sentinels, what a round. For SEN to get onto the board. And if SEN are looking to be that mobile and aggressive on their defense side, then it's going to catch Leviathan off guard a little. It's a huge thrifty to get them back into the game. They're still at an enormous round deficit. 11 now going to have to adjust a little bit. Tex was not ready for that push at all. He had a cam in elbow, could have been tapping in. Could have been thinking about अचानक दरवाजा खुला भाई See if LEV make any adjustments here. घर के रास्ते खुल गए लेमचे मौका सुल गए It's been placed for double doors and A. Retake setup. अमी जे ए नहीं ये गाना नहीं गाना चाहिए भाई Draft. आसपास कितना फर्स्ट से वो पीक ले रहा है देख रहे हो ऐसा ड्राफ्ट करके मैं जेट खेलूंगा ना तो वैसा पीक लूंगा अगली बार से Where is this Hunter's Fury being offloaded to? Where is the direction? I mean, it's such a large map. You're not going to get lucky. Nobody into mid. Tag up. Zelsa's backing away. A weird start, a weird beginning. That's super bizarre. Cam does see all. And this is where the whole spot अरे भाई हेलो It could, and it needs to come in right now. Clutch, surely for the team. क्या अरे मार्कस मास्टर्स मर गया ऑफ लेके जा रहा था यार वहाँ पे Finding it through the wall. Zekken, he's doing the जी most. भाई जी There's a lurk on a lurk happening here. Tex manages to find his way up and around the back, but he can't अब तो get a kill टॉटी out खा of ली it. Zekken has dominated this round. With shots. Reveals a position. They know exactly सब where टॉटी Tex is. कर At दिए least. It's going to be hovering around mid. Spike drop down as well. Hello. One opened up. Tens goes down. Surely there's no chance. Surely. 35 seconds left. यार ओ हॉल्स में हुआ क्या अब ओ भाई नो स्कोप करते भाई ज़ेकन नो स्कोप करते Definitely thinking about it. You can hear the footsteps onto the sand. They're rustling around. And yeah, he's just dropping into his face! Awesome round from Zekken though. Incredible stuff. As soon as दोनों का सिस्टम हैंग हो गया था एक सेकंड के लिए There's a lot of threat in the round because John Cutie could easily get overwhelmed. And actually, you saw Aspas with an op. Sorry, not the op. I think it was still the outlaw, wasn't it? Just peeking through here. राउंड आए भाई इन पे टाइम आउट के बाद से ना Either way, for Zekken to be able to grab that kill is enormous. Now Zekken's going to have the operator. SEN still need to play aggressive off the back. टाइम के बाद से भाई ये टाइम आउट के बाद से भाई इनका आ गया है गेम प्ले
सेकंड ऑफ निकालिए भाई। ओ भाई कोई नहीं है मिड। पीमेन पे 50 जन रिवील कितने हुए? 2-3 तो हुए रहेंगे। पीछे जा रहे हैं। Yeah, and also the knife. Tens with a lineup knife into elbow caught almost everybody on Leviathan. No opportunity for them to go and use that timing to exec. जेट है वो भी रिवील हो गई थी ना, तो फिर उनको पता रहेगा ऑपर इज बी। Good protocols here, but there might be something being cooked up. That's a close angle being held into main by Zelsa's flash re-clearance. A little bit off with the timing, but not for Sassy. At least he does. Claim the one. Backs away. अच्छा Sassy था क्या? Sassy भाई OP है। Close to the door opens up. Back to safety. Very nicely navigated there, but there's still danger. Double doors, Texas and win it. Reactions from Tens. अरे भाई साहब कैसे? Sassy just didn't know. He's just operating purely off the timings that he expects there. 30 seconds roughly in the round for Lev. 30 seconds left. But they still want to go for this. Tap. Nade forced out, going wide. Aspas still has the dash here, but well, can't contend, can't contest. His former teammate, a championship title. They earned that one together, but they shut the round down. OP. So much more proactive from Sentinels in these last 3 rounds. Starting from the timeout with that eco push, but there in round 9, you see them get back into B after realizing that hit. लेविएटन का टाइम आउट आ गया क्योंकि बैक टू बैक सेंटिनल्स ने 2 राउंड निकाले वे। भाई क्या स्प्रे ट्रांसफर क्या भाई? ऐसा पटेल ही मारेगा क्या भाई? तनिष भाई ऐसा पटेल ही भाई लोग। मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम क्या? इतना बड़ा माउस पैड लूं और सेंसी है ना 0.27 करूं और पूरे माउस पैड पे हाथ घुमाऊंगा भाई। मेरी है ना सबसे डे 1 पे ना सेंसी थी 0.27, उससे ही मैं इमॉर्टल 3 गया था सबसे पहले। तो भाई मैं पूरा हाथ घुमाता था मस्त भाई की। क्या बोलते हो करूँ 0.27? लेकिन अभी है ना अगले महीने आएगा माउस पैड, ठीक है ना? अगले महीने या उसके अगले महीने आएंगे माउस पैड्स अपने, अगर लिया तो अपन ने, ठीक है ना? तब तक वेट करेंगे, तब तक अपन कैसा है इमॉर्टल आराम से पहुंच जाएंगे। फिर रेडिएंट के लिए अपन दूसरा माउस पैड यूज करेंगे। चलेगा? तुम लोग चलेगा बोले तो चलेगा, मैं करूंगा, ठीक है ना? नहीं तो फिर रहने देते। Lead, like you said. इतना बड़ा माउस पैड लो कि उसकी चादर बना के सो जाओ। Managed to get themselves onto a side, potentially the Hunter's Fury of तेरे जोक्स कौन लिखता है भाई? उसको मारूंगा बहुत ज्यादा मैं। When he's playing on EG, he was cooking up all sorts of plays with it. ए भाई अल्ट है, कॉम पे अल्ट है, कॉम भाई, कॉम ने चॉम करके दिखाओ भाई। And I actually think one of the things that Leviathan is missing a little bit Yoga are those aggressive lurks that you would potentially expect from some of the others on the team. But Texas अरे सेकंड भाई बेबी काम डाउन। Here's the peak up over the top. Second did this in a prior round as well. 2 बार लगातार सेकंड ने ये किया है। अगले राउंड तो ऑब्वियसली उनका वो पीक एस्पेक्ट करेंगे। दिख गया दिसे लागा भाई। अभी कोई पीक ही नहीं करेगा भाई टनल। Yeah, there's a massive gap right now. In theory, Lev could have walked into Nest. And so Sassy's taking this timing to re-drone holes and walk down. Sassy's taking some portion of the map away, but again, in theory, there could be a lurker all the way deep for Lev. भाई Sassy बहुत फॉरवर्ड है, इसके वजह से ना बी ऑपर छोड़ेगा ही नहीं। कॉम को है ना अल्ट करके ही उसको भगाना पड़ेगा ऑपर को जो बैक साइड है। कॉम भाई अल्ट खींच दो अल्ट। नाइस शॉट। टीवी हो गया, भर दो इसको, भर दो। नाइस वन भाई, क्या एग्जीक्यूट था, क्या मॉलीज भाई, खतरनाक रे, खतरनाक गेम प्ले। Lev forced to work for this post plan, much more than we saw in the first 6 rounds. But they've done an excellent job. अरे भाई, there's another punish onto Tens. दोनों टनल की तरफ facing this pit, unless they're able to get some random spam through. It looks very difficult. क्या ब्लाइंड है यार मजीनो। क्या नाम रखते भाई कंपनी, मजीनो। Overall, we've seen that defensive combo of the Cypher and Jet work out really well for other teams hard anchoring on B. But instead, they looked like they weren't really ready for Aspas doing the updraft dash setup. चंचिटी, गुड मॉर्निंग क्लोर गेमिंग। भाई आज इंग्लिश का पेपर है, सब आता है, फाड़ क्या होगा। एक बार विश कर दो ऑल द बेस्ट भाई जिसका भी इंग्लिश का पेपर है। और
फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ाई करके जाओ और जो भी ग्रामर है ना सब एक बारी गो थ्रू करो और पेपर अच्छे से सॉल्व करो थोड़ा फास्ट करो सो दैट राइटिंग स्किल्स को टाइम मिले राइटिंग स्किल्स अच्छे से लिखो राइटिंग स्किल्स में स्कोर कर सकते हो मस्त भाई की ठीक है स्कोर मतलब एकदम हैवी स्कोर तो नहीं कर सकते लेकिन पेपर कंप्लीट करो एटलीस्ट ठीक है ऑल द बेस्ट You know, leaving both of the sides to play a retake setup, but one where they can push mid, try to target Leviathan's lurkers, of which they'll. आज भाई ने सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है नहीं बे वो है ना हर पैराग्राफ में एटलीस्ट हर इसमें हर पोयम के इसमें ना वो क्वेश्चन आता है और एक्सप्लेन करने बोलते हैं और उसके मार्क्स ज्यादा रहते हैं भाई दोनों को डैमेज दिया उसने ट्रेड फॉर ट्रेड है क्या है 3v4 है ओके 3 जन बचे सेंटिनल्स के 2 येलो है 1 मिड आ रहा है 2 बचे अभी सिर्फ Tens वर्सेस आसपास लेट्स गो आसपास विंस इट बिकॉज़ Tens वाज लो 3-8 हो गया ये किसी बात हुई भाई ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते बोल दिया अरे क्योंकि बेबी राइटिंग स्किल्स में फुल मार्क्स नहीं देते पूरा अटेम्प्ट करना पेपर छोड़ना मत कुछ चाहे कुछ भी हो एग्जैक्टली चाहे कुछ भी लिखो टॉपिक रिलेटेड रेलेवेंट लिखो लेकिन पूरा मैच पूरा पेपर कंप्लीट करो दैट्स इंपॉर्टेंट पहले से ही फास्ट लिखना चालू करो पहले से ही फास्ट लिखना ट्राई चालू करो भाई क्या ब्लाइंड डालता है भाई वो लाइनअप रहेगा उसके लिए कोई अनिमेश बैटल हो रहा है भाई एनिमेश बैटल खत्म होते हुए जेट को कौन मारा मैंने देखा नहीं मैं थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया मेरा 3v4 चलो ये भी राउंड हार गए सेंटिनल्स 4-8 हो गया Might be being watched here. Sen got to have some level of awareness for it. He can hear them. Pin to pass with the footsteps. They reveal the perfect position. खतरनाक भाई लाइनअप की जरूरत ही नहीं. Very dominant from Leviathan. Anytime they got towards the site, they were able to execute. Aspas coming online. If it was Zekken that dominated map 1, Aspas is finding his moments, and plenty of them map 2. Mazzino just straight back to looking awesome on flex. Yeah. Hasn't missed a beat with it really, has he? Absolutely insane stuff. Well, let's send it down to Golden Boy. He's down in the crowd. Ye kaun aaya hai? Again, shall we? Right now. In any case, so guys, we got Sentinels fan, we got Leviathan fan, we got a hot crowd. How you guys feeling today? Oh. Sweet. Jesus. All right. Well, okay. So Leviathan are looking fantastic right now. What do they need to do in the next half to keep this momentum going? Aspas gotta be on fire, man. It's all about the Aspas show. It's about the calm show. Tex, King, Mazzino, they're all gonna be on popping off tonight. Let's go! Let's go! That's what he says. Okay, Sentinels, though, they gotta come back. What do you think they need to do? Okay, so it's all about the coaching. Kaplan, Drew, my boy Drew, he's got in the bag, especially in Zaddy, of course, and you know what? So 9-3 Kurz, the usual stuff, and Aspas got nothing on Sen Society, nothing on Sen City. Nothing on the Sen Society, Sen City. Okay, we have a lot of new faces on these teams. Who? I know you mentioned Aspas before, but who else on this squad are you just absolutely stoked to see on this stage? Gotta be King, man. He's a king for a reason. That's right. I couldn't agree more. What about for you, my friend? I already said it once. I'm gonna say it again. It's all about Zaddy. It's the entire thing going on. Okay. It's all about Zaddy. It's about Zelsis, and I mean, you know what? Ten's got something going on too, and then a little bit of John QT, Saucy, the ball buff. I mean, we got everything going on for Sen City right now. So. Well, as someone who also has the ball buff, I do appreciate you mentioning my guy Saucy over there. All right, but we got a little bit of time, so why don't we go ahead and get a temperature check from the crowd? Who do you think's gonna win? Sentinels? Sentinels! Or what about Leviathan? What about Sentinels? Oh man, the crowd's hot down here. It's going to be awesome, but for now, we're going to send it back to two of my favorite people in the world. We got Bren and Sideshow. Give these guys a massive round of applause for coming up here last minute.
Take it away, boys. भाई फेस कैम ऊपर मैंने तुम लोग के लिए किया था भाई, तुम लोग का भला कर रहा था मैं सालों। And I was wondering who's that referred to. Then I found out it was Zelsis. Absolutely. मैं तो सुना ही नहीं भाई, कैम स्टक नहीं था भाई, मैं तो लुटपुट गया था। Pistol round for Sentinels. Aspas still buying the sheriff on the pistol, but this time on defense. चलो ये साइड स्विच हो गया है, अभी अटैक देखते हैं सेंटिनल्स का कैसा होता है। अबे चिल्ला रहे क्यों इतना? There's a lot of support for Sen in the crowd, and I'm sure भाई लेकिन इंडिया में लैन में भाई साहब जो माहौल होता है। सच भाई तुम इंडिया में कोई अपने लैन पे गए हो कभी? They are going to have to work to get this one even back to close to even. Starts with a pistol round here, Lev. Trying to put a stop to it. All over the place at the beginning of the defensive setup. It was like a series of ants just losing track of the pheromones. Celsius. Com being caught there onto the lurk. It's a big one. It's an open sight on top of that. So Sen will get that plant down. Nothing to push them back. Nothing to play away from this. And it looks like a chance potentially to play into the back of the site. Two players close to default. Tens in second with a jump spot. One flash still available. This is where Leviathan were fighting aggressive and finding moments to put pressure on the retakers. Pop flash, no one to receive. No connection there. Nothing to link that one back up. And here, swarming, pincering into the site here. Has to be all coordinated together. Lev might be able to find something for this. Hello. Guns, Tex! Whips that one around, doesn't he? Shock darts, buying time, lineups, buying time. The players losing the fight, ticking. GG. Down and nice down. try. Aspas realizing he can't quite stick this one. Has to be. Watch for! King! No way! Sentinels barely holding on. There were shock dart lineups coming through. We had Celsius in spawn, sending over the molly into his orb. What a round! What a round! भाई Celsius शॉक डार्ट लाइनअप आ रहा था, वाइपर मॉली लाइनअप आ गए भाई, क्या राउंड था भाई। तुम लोग किंग का ये देखे क्या? किंग का अगर वो है ना अटैक नहीं करता ना, मतलब अगर Celsius पुश नहीं करता ना, किंग स्टिक कर दिया था, मालूम क्या? Celsius ने पुश किया, इसके वजह से किंग ऑफ हो गया, नहीं तो भाई ये जीजी होता, ये राउंड 10 हो जाता भाई। और ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट था सेंटिनल्स को, इफ दे वांट टू कम बैक। They're gambling that this one's going to finish on A. Some of the teams that have had the most success on defensive breeze just been stacking the opposite side to their Cypher utility. पहले ये होता था, पहले सेकंड थर्ड राउंड में ना, मतलब सेकंड राउंड में अगर जीत रहे हो तो सेकंड राउंड में ना वैंडल निकाल देते। अभी सारे डुअलिस्ट है ना ये निकालते भाई, गार्डियन। बड़े मैप में ऑब्वियसली nothing given away. Up through mid, still 50 seconds left. They hear that jump spot. I don't think Com saw anybody. Celsius may have just shot that. चार जने वे एक नेस्ट है, अकेला बी पे नहीं, बी पे कोई नहीं है। ओके या प्लेइंग रीटेक ऑन बी। A nice flash from Tens as well, thrown from tunnel to allow Zekken to come out of his cloud burst just in case there was any danger on site. लाइन खेलना है, If you're thinking there's any chance here, खेल भी सकते हो क्लच भाई, अगर ग्राइंड करे तो। कोई भी एक फील्ड में, लेकिन तुम्हें तो भाई स्ट्रीम नहीं करने का है भाई, बिना ना स्ट्रीम कर लेते यार क्लच भाई। मैं जब बोला तब भी स्ट्रीम चालू करते तो मैं रुक जाता भाई शेड्यूल करने तक। वैसे ही आदत बनती है, मालूम क्या? अभी कल भी है ना, तुम लेट उठोगे, लेट उठने के बाद है ना आंग में वो एक लेजीनेस होता है, जबरदस्ती खुद को है ना लेके जाने का भाई, और स्ट्रीम करने का चालू, जबरदस्ती खुद पे करने का, जबरदस्ती। चालू होने के बाद तुम ऑटोमेटिक करते हो बराबर। That's a bit of a win in the round for them, denying the ult points away from Sentinels. That takes a potential tool out of the hands of Sen that they could have used, like I said, to continue that momentum. I'm really looking at how Sen try to apply some pressure. फिर क्या यार, रेमो भाई, रेमो डिसूजा गेम प्ले। Bonuses, you tend to have weaker weaponry. Guardian in the hands of Zekken. Sorry. 5-9 स्कोर हो चुका है
Scanning ahead. Still passing by straight overhead. ये Zelsius blind हुआ, ये blind नहीं हुआ कैसा? And John Cudy's making his way up halls. So while Leviathan seem to be conditioning the threat in halls early in their attack half, SEN have not really gone there, and now are trying to potentially make use of the fact that भाई काफी rich है भाई Sentinels. अगर ये हारी तो भी और ये माँ कसम ये क्या एंगल लगा के रखेला है? बच्ची भाई वो डंडी पे बैठा है वो आसपास. And this is quite a passive setup, right, from Leviathan. आसपास उतरेगा ही नहीं उधर से मालूम क्या? One of the big weaknesses with this defensive setup from Lev. ओ आ रहे मिडी आ रहे भाई ये देखने मजा आएगा. Covering multiple different lanes. अबे ये recon नहीं करना चाहिए भाई main से. Sees the footsteps, gives him the right timing. Aspas. There's no way. He doesn't win the fight. Should have been set up for it. Surely you'd imagine. So King anchoring round to the back there with the door open. Ah, John QT instantaneous with the swing in the trade. 2v3 10s 1 HP है भाई. Ready for Sentinels. The conversion on this bonus could be right. दंडी फुटली भाया. दंडी फुटली. Still chances for Lev, of course. अरे ये तो असमोमेंट हो गया. हेलो लाइक मारो ना. अगर 1000 लाइक नहीं हुए ना यार तो मम्मी मारेगी. नेड था. पेंस किधर है? अच्छा हॉल से आ रहा है. ओ लास्ट हॉल्स 1 HP 5 HP है भाई. Great awareness there from Leviathan and the spray down. चैट मैं बस मस्करी में अभी लेविएटन को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड मैप देखने का है भाई. इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है क्या? मचांड देखने के लिए मजा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? मेरे को थर्ड मैच देखने का है भाई. G2 वर्सेस क्रू तो मैं बस मेसी भाई के लिए देखूंगा कि मेसी ने पैसा क्यों डाले क्रू स्पोर्ट्स में, बाकी कुछ नहीं. Took a gamble down a few rounds, got into a favored post plan. एक ही मिनट भाई आपका स्क्रू ढीला है क्या थोड़ा? Couldn't win those duels to hold on for Tenz's post plant lurk. You can see what that means. Kaplan's expression there. आपको ये बड़े टूर्नामेंट्स में हिंदी कमेंट्री के लिए रखना चाहिए. सही मजा आएगा. नहीं भाई लोग मारेंगे मुझे मारेंगे. मैं किसी ई स्पोर्ट्स प्लेयर को अगर शेमड़िया बोल दिया ना वो मेरा शेमबुड निकाल देगा उधर. Making sure that they can't get punished by this KO ultimate. Sentinels अगर ये राउंड हारती है ना तो भाई मुश्किल हो जाएगा उनके लिए मालूम क्या? फिर 12 हो जाएगा लेविएटन का इजीली. ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है सेंटिनल्स के लिए. Bro, how is he alive? How? Chasing down the kill. That's a disaster. He's still alive. They should have had Aspas kicked to right. This guy is oh still my here. God. He just can't be removed from this position. Finally, Sassy. Aspas ने एक और मारा. It's a disaster right now for Sentinels. A disaster. That's a GG. That's a GG. That's a GG. That's a GG. GG हो गया भाई लोग. अभी 12-5 होएगा. That's an eco for. Tens flashes for Zekken to be able to enter. Hey, that's not an eco. Eco ही है. He's out in the open. 40 Sentinels का time out है. Taken him down, blinded up, and I don't think so. Sentinels उनको match point देगी. And John and Tens both decided to push through the wall to try to fight him. He's got backup and he hits a nice guardian shot. Chat, क्या लगता है? ये सेव होएगा? मेरे को लगता है 2 जन बाय करेंगे and 2 जन कंप्लीट सेव करने वाले हैं. और सेंटिनल्स क्या करेगी भाई? क्या अटैक करेगी? क्या अटैक स्ट्रेटजी करेगी? हॉल्स लेने का ट्राई करेंगे वो लोग ऑब्वियसली. लर्क करेंगे. मिड हमेशा उनको मिल रहा है. मिड हमेशा मिल रहा है तो मिड तो वो लोग कंट्रोल रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली. मिड और हॉल्स पे ही वो लोग पिक्स निकालने का ट्राई करेंगे मे बी. ये वहाँ पे कंट्रोल उन लोग को है ना दे रहे वो लोग. भाई इनका ये जो कोच है ना ये ऐसा दिखता है ना एक विलन दिखता है. विलन सेव प्लस बाय होएगा. अकेले ज़ेकन के पास वैंडल है बाकी ने हाफ शील्ड डीगल किया है. Zekken can afford to hero rifle because he'll have the Bladestorm online no matter what next round. But it is an enormous uphill battle and it's looking more and more likely with every round that passes that we're going to be heading to bind as a decider. Would that be something? Extremely comfortable territory for both teams. It would be an explosive finish to this series and to this group. It's been a weird one so far, both one-sided affairs on either side of the maps. No way!
Aspas! How does he still get one in that position? It's just filthy. Magnetic to the dome. He just shouldn't be getting one, should he? But he does, just Aspas things. It's not a weapon that's particularly System recoverable. hang! They still have Zeken's Vandal, so Zellsis can work with that. And Lev double pushing down halls to try to reclaim some information. This is a very good push. This is a very good push. But ये expect करना चाहिए. Last round भी किया था उन्होंने. Okay, last round नहीं किया था. This is the first time they have pushed this. This is so fast. Lurking through, the tempo increased. Sassy, he's gone. Dark close, drone now. Second guessing himself, calm. और अकेले कॉम का इन्फो है तो वो मैसिमो तो मजीनो तो बाद में आ सकता है. Flash, push, anti-flash by Com. Great awareness. Very well aware. Players now approaching the position here, diving onto them. Zelsis here. He's got to do so much here, but there's 3 players rapidly approaching the position. And no easy fight here from King. No easy fight at all. Lev up to that 12th now. And he's one-sided maps. It has been a bizarre series. Clearly both of these teams are up towards the top in terms of America. दोपहर में हर्ष भाई 4-11 से कमबैक कर रहा था, अभी क्यों नहीं हो सकता? अबे हाँ बे, भाई मैंने 4-11 कमबैक किया भाई आज. अच्छा क्लच भाई तू थे. भाई क्या मारा यार इसने. It's so strange too. We started this और उसमें भी 10s को 10 HP कर दिया था. Flash plays into a main. They were so hyper aware there. Mazino was playing anti-flash the entire time, fully expecting 10s to go for that. The punish was immaculate. Here. Cleaned up their game. And Sen have got to win आसपास 7 के in a पास row. ऑप है. One more round. वो B पे what the? Misplays. Well, not quite a misplay actually. It was Mazino's flash that landed into Zeken's face, stops him from pushing forwards. Oh, he's hopping elbow. Tenders this time. Aspas out in the open. Wide as anything. Going for the repeat with the dash. Still there. Crouch. That's 10s. Dash. Avoiding, evading. Mazino with the swing. He's definitely. करना 10s को मारना भाई. 10s को मारना मजा आ जाएगा. Tagged up trap. Cannot evade it. You cannot dodge it. For Sentinels, everything is just Sassy भाई, आपका अल्ट तो भाई 10s और एक मारा. Play there by Com. I think he must have heard the call that they were committing to B, because Com just sprinted out through double doors and has given this away for his team. 3 versus 3. Neural theft, revealing all. King with the reposition. भाई King expect नहीं किया लोग इधर घुस गए तो. Okay. King को पता ही नहीं, खबर ही नहीं क्या हो रहा है. Does buy a bit of time though for Sen with this plant. Getting down 2v3, can't let it slip. भाई मजा आ रहा है वे देखने, मजाक से हटके. थोड़ी नींद आ रही थी बीच में, अभी भाई अभी आ रहा है entertainment. Oh, what a flash on backside भाई. What? 2 players to support him in through main, and a possibility for Mazino. Man, I'd have to toggle in this spot, and yeah, not happening. And Sen have got to convert those kind of rounds where Leviathan make unforced errors. I am still confused. There must have been some major communication issue there with what Lev. नमन भाई 10s bottom frag इसलिए है क्योंकि Sen have just taken some mid control. Leviathan बहुत अच्छा खेल रही है. Wow. Nice shot on a weird So clean भाई, so clean. They knew that 10s was there. तुम next match भी देखोगी, मन तो है. देखते. Com and King lost track of what was happening entirely. That's the first of what would have to be, again, 7 in a row in order for us to go to overtime. So many other chances for Lev, but their economy, kept honest, has now been knocked down. Still, you gotta think. So much breathing room for Leviathan. भाई ये 10s को जेट क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि Zeken अच्छा मारता है, and 10s को उनके कॉम्प के हिसाब से वो लोग इनिशिएटर ही खिलाते हैं ये मैप पे. मतलब KOE किसे खिलाते हैं? But as the comeback starts ticking up, things can get very real very quickly. Poison's off. भाई पेपर एक्स लोटस में रेना खिला रही थी भाई समथिंग को. They are taking a time of it. They're worried about walking into a potential stack of Leviathan. Now we've seen this angle before. And we have seen him hugging as well there before. अरे यार ये ड्रोन भाई हट. Yeah, has to respect it. Tops down, Tex. Close to the corner. Bonnie hopping away. Zeken. He made a footstep. Mazino knew he was there.
Even the sound cues betrayed by it. Up through mid now, different भाई direction. जॉन क्यूटी का पोजीशन बहुत अच्छा है. Left. The rotation has been pulled by LEV. Look at it. They've got so many bodies just sitting into halls, expecting that to go in that direction, but all of them now regrouping up, recognizing what's on the line. John QT. Nice trade, bhai. Perfect for Leviathan. It gives them another gun to work with. Sassy. लग गए. Sassy's gone down. All of this is गया राउंड गया. Yes, the Vipers fit it up. 1v3. You got a lot to do in this spot. 3 players. Guns acquired. And that one round that stood between them, LEV, they can feel it now. Under their control, in their grasp. A chance. Map 3, and we will get it. LEV on a thrifty, pulling it away. Dashing the chances of SEN to get any kind of comeback going. So dominance from both teams on their map picks. Clearly understanding the map veto really well, considering this is the start of the year. Bind awaits. Oh yeah. भाई अभी तो बाइंड होएगा बच्ची, अभी तो बाइंड होएगा. Throw in there with the changes thrown into the mix a little bit last minute, heading into VCT, but clearly working out here for LEV. Get them right back into the driving. कल्याणी तू सोती नहीं है क्या? अब बाइंड 10 यूरो आएगा. 10 यूरो खेलेगा क्या इस पे? For sure, both teams feel super. क्लच भाई बताएंगे. क्लच भाई 10 क्या खेलेगा? Should be explosive. Well, time for a quick break. When we return, the analysts are all going to be getting us nice and ready for that critical, crucial map number 3 in this elimination game. यूरो खेलता है 10. ओके. आज भाई योरू का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है. अरे क्या अंडा बना रहा है भाई आज. ओ भाई यार, लव यू गाइस. भाई मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा ये. भाई अपने दोस्तों के साथ ये अपना स्ट्रीम देख रहा. भाई क्या बात है यार. डब्ल्यू स्क्वाड. लर्श भाई एक फेवर चाहूंगा. क्या आप फ्री हो और आप पीसी पे हो? क्यों भाई मैंने क्या किया? हाँ क्लर्च भाई. क्या आप डिस्कॉर्ड पे आओगे और आपका स्क्रीन शेयर करोगे? मेरे ना पेट में भाई अचानक से ना दर्द देने लगा है. मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा शायद 10 मिनट. क्लर्च भाई को तुम लोग अपने सेटअप भेजो और उनसे बातें करो. तब तक मैं आता हूँ सिस्टम करके. क्लर्च भाई जल्दी आ जाओ. क्लच भाई खोल दो. ये खोलो ये खोलो. ये खोलो. ठीक है भाई. ठीक है. मैं बस आया 10 मिनट में. हाँ हाँ आराम से आओ भाई, आराम से आओ. भाइयों मैं आया. यो व्हाट्स अप चैट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्या आप लोग चाहते हो कि सेन अगला मैच जीते?
तो फटाफट से अपने सेटअप हमें भेज दीजिए। फालतू कुछ भी बोल गया मैं। कोई ना, इग्नोर मी गाइस। मेरी अभी अभी सुबह हुई है। अबे सेटअप वाला सेक्शन किधर है? हाँ, सेटअप सेटअप ये रहा। नाइस भाई, कहाँ से देख चुके हैं अपन? नीचे से चालू करते हैं। आइए सुबह सुबह देख के सेटअप। रेट माय सेटअप। भाई चाइल्ड अब्यूज कर दिया। क्लिप्स देखो क्लर्स भाई। अबे क्लिप्स देखो भाई, क्लिप्स नहीं भाई, सेटअप देखने बोला है मुझे। क्लर्स भाई 17 का टेबल सुनाओ। 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34, 17 थ्री ज़ा 51, 17 फोर ज़ा 68। शिट भाई आगे नहीं आता मेरे को, इसके आगे स्कूल नहीं गया भाई मैं। लेफ्ट जीतेगी? अरे भाई ऐसा अपनी अपनी टीम सपोर्ट करो। ये तो देख लिया, ये भी देख लिया। ये क्या है भाई? ओ भाई साहब, ठीक है ठीक है। माउस रेड गियर का यूज़ कर रहा है ना, यही गलती है, यही गलती है ब्रो। ओके चैट, तुम लोग बताना मेरे को तुम लोग ने कहाँ तक सेटअप देखा है, ताकि मैं उसके ऊपर कुछ और देखूँ फिर। भाई साहब ठीक है, लैपटॉप गेमर। फिर ये भी रेड गियर का माउस यूज़ कर रहा है। गाइस अब स्पॉन्सर गया, अब मत यूज़ नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। ओ भाई, अबे ये सेटअप कहीं तो देखा है भाई मैंने। नेवर माइंड, पर तुम्हारे पास फनाटिक का माउस पैड है। मैच शुरू हो गया? इतने जल्दी शुरू हो गया मैच? सही में क्या? ओ माय गॉड। पर अपने हर्ष भाई तो पूपू कर रहे। भाई मैच शुरू हो गया तो चैट बता दो। वाओ। भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा माउस अच्छा है? लॉजिटेक G102 यूज़ करो अगर बजट में देख रहे हो। पहले गेम कैरी करने पड़ते थे, अब स्ट्रीम कैरी। अरे भाई के लिए तो जान भी हाजिर। भाई मांग के तो देखे जान। नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। पहले मैं यूरू में था, आपसे इंस्पायर होकर ग्राइंड करके डायमंड पहुंचा। फिर मैं वाइपर मेन बना, किसी से इंस्पायर होकर अब गोल्ड 3 पर हार्ड स्टक हुआ। अरे सिल्वर भी आ जाऊंगे जल्दी। भाई दिस क्लीन भाई, ये ऐसा सेटअप है जो मेरे को हमेशा से चाहिए होता है। भाई क्या वाइब होगी ना। रेजर डेथ एडर वो भी अच्छा है। मैच लगा दो। अबे मैच तो है ही नहीं, आई मीन चालू नहीं है। क्लिप्स देखनी है, क्लिप्स देखनी है, क्लिप्स भी देख सकते हैं। क्लिप्स वाला सेक्शन कहाँ गया भाई? शेयर क्लिप्स, शेयर मीडिया नहीं, ये रहा क्लिप्स। रैंकस भाई 5:55 पे। ठीक है। अरे गाना सुनते सुनते खेल रहा है, और यूरू खेल रहा है भाई ये। ओए नाइस आउटप्ले। ठीक है ठीक है, पर ये आउटप्ले नहीं था। ओ भाई, ये क्या फ्लैश है? हाँ, क्या लैग हो रहा है भाई इसका क्लिप? ओए नाइस, क्लीन क्लीन 4K, क्लीन 4K। प्लस रैंक क्लिप नहीं, अडल्ट वीडियो चलाओ। हर्ष भाई को देख ही रहे हो, इतना इतना अडल्ट। नेवर माइंड भाई। संभाल के भाई, लिंक करते वक्त ओपन। हेलो मोड्स, तुम्हारा काम होता है डिस्कॉर्ड का, तुम पहले ही लिंक के फिल्टर कर दो। प्लस फेल्ड बट गॉट एन एस नेक्स्ट राउंड। भाई 2 मिनट का क्लिप? यार 2 मिनट का क्लिप तो लेफ्ट राइट हो जाएगा भाई। कोई ना, अपन कुछ और देखेंगे। इजी टैप्स, रैंक इन कमेंट। ठीक है।
ही मिसेस मी नाम है इसका, ठीक है। 1 2 भाई मैकेनिकल कीबोर्ड है भाई का। ओह नाइस, गुड 4K। अब अपन को इसका रैंक गेस करना है। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर हर्ष भाई होते तो वो क्या गेस करते, ये गेस कर लिया है, पर मैं भी कर लेता हूँ ना गेस। अबे ये कैसे गेस कर लिया है बे? प्लैटिनम 2, चलो वैसे भाई अगर गेस हो चुका है तो फिर मैं क्या ही देख रहा हूँ, फिर देखने के लिए क्या है भाई, देखने के लिए है क्या, बचा क्या देखने के लिए फिर? भाई क्या है हर्ष भाई के डिस्कॉर्ड पे देखने के लिए? ये देखो भाई, तुम ये देख रहे हो, ये है ना, नेवर माइंड। क्या देखना चाहते हो आप लोग, क्या? नहीं कुछ नहीं, सो जाओ। अगर मैं सो गया, टैरिक का वॉचिंग देखो, टैरिक का वॉचिंग देखें भाई, टैरिक का वॉचिंग देखते हैं भाई। 80,000 लोग देख रहे हैं टैरिक को भाई साहब, क्योंकि ऑफ कोर्स सेंट्रल्स का मैच चल रहा है। सब देख लिया उसने ऑलमोस्ट। हाँ यूट्यूब चला। अबे शिमलो मीम देखो। नहीं भाई मीम सेक्शन मैं नहीं खोलूँगा, मैं खोलूँगा ही नहीं मीम सेक्शन। भाई ये क्या चल रहा है? एनीवेज हमें जो काम दिया गया हम वो काम करेंगे। आलतू फालतू की पोकेमोन क्विज, पोकेमोन क्विज क्या होता है भाई? अरे खोलो भाई, सेफ है, सेफ है हर्ष भाई का मीम सेक्शन, ठीक है भाई। पर हर्ष भाई ने, भाई मैं सब बिना परमिशन के कुछ नहीं करता भाई, कल को कुछ लेफ्ट राइट हो गया तो मैं फंस जाऊंगा भाई। भाई सेटअप फ्लेक्स डालो ना, सेटअप्स और ओके ओके, 2 नए सेटअप है, 2 नए सेटअप है। इसका मतलब ओके नेवर माइंड। ओके इसका सेटअप क्लीन है, लैपटॉप गेमर भाई, इसने लैपटॉप से सब कुछ कनेक्ट कर रखा है। शिट काफ़ी लोड पड़ता होगा। कंफर्म स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है ठीक है, स्टार्ट हो गया। और किधर है भाई? बट मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता, अब तुम लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा। टेंस ऑन योरू साउंड दे रहे। अबे मैं साउंड कैसे दूं भाई, उनके पीसी में घुसना पड़ेगा मेरे को। साउंड नहीं आ रहा आपकी स्ट्रीम का, क्योंकि हर्ष भाई ने मेरी स्ट्रीम म्यूट कर रखी होगी ना। हाँ वो बोलो उनको, उनको बोलो। आ गया, मैं आ गया। हाँ हाँ भाई करो, तुमने साउंड नहीं ऑन कर Here, King and From playing close, defending the smokes. They won't cross past that line. It was drawn straight through the sand. A good opening. Now Lamps seeking to try and grab that one, but right into the crosshair. एकदम right time पे आया बे मैं। Nasty stuff. TP. It's going to be called for the rotation, but with 40 seconds left, you can pick and choose your destination. आ गया chat। Looking to re-clear into short. They can hear it. Aspas hears it. बहुत जल्दी कर लिया। हाँ भाई। Calling for the flash of him and his team. No. Oh भाई। No clearance out. Oh my god. Here to stay. Here to Oh play. भाई। And a round win for Lev. Pistol. भाई ये कौन जीतने वाला है? ये सेन भाई। चैट अभी मैं पोल और एक डाल रहा हूँ, ठीक है? और एक बार पोल डाल रहा हूँ मैं। Sassy's going to be staring across the stage, thinking, "What have Sentinels? I done? How That can I Leviathan. unleash this monster upon the world?" It's a mad science. भाई साहब गेम प्ले हो रहा है भाई। I mean, Aspas able to pick up that kill भाई so cleanly and भाई कितना evil दिखता है ना आसपास। beautifully timed. This is a position he loves to play from. You'll see him on top of truck constantly. Great for dodging utility, going for a little peek out, trying to punish somebody, walking up. Stay loyal बोलता। By since you are a professional analyst, analytical paragraphs or resources. Tend to fight over B long and showers at the start of the rounds.
We'll see whether LEV just give it to them. This Jama, Jama, bhai, Jama. Spike down A. Wide out in the open, seeking at least a bit of damage done here. You to them. I mean, players going down. Still, Tens is weak enough. You got to think there's not as much danger. John QT. That's really bold from Aspas. If he had been punished for that push, makes the round eminently more winnable for Sen. Forward position. Spike. जा रही हो आप कल्याणी? Regained. Good night, take raise. They know that Aspas is here on A. They now know that the Sky is in some kind of area around here. This is triggering the spike to go over towards B, but Com flashed and immediately. क्या हो रहा है यहाँ पे? Don't think Tens will be anticipating having to deal Oh with the bhai, Sky oh over bhai. here. It's just an unlikely fight to win. Just being jiggled onto the corner by Com. Yeah. Jama. Spike मिल गया. The round pretty much over. John the cutie gamer. How many John भाई मरने जा रहे. Going to hold on to the outlaw. That's what I'm looking at because he started off on Breeze. I don't know what point it got taken out of his hands, but Just kept rebuying it. Yeah. I don't think he cared. He's been tracking the economy. He was getting so much work done at the start of Breeze. Where's this match going on? Seoul, Korea. Apart from John Cutie, actually, who if he Hey, 11K मेरे. रुको यार, baby, calm down तो करो. Yeah, and so he goes for it. सिखाया नहीं तुमने क्या रे सुनियो? भाई लोग लाइक मारिए यार, लाइक मारिए. लाइक मारिए, important है 1K likes आज complete करने. अगर आज 1K likes नहीं हुए तो मैं रो दूंगा. But having said that, they have been giving Sentinels showers control at the start. पहला buy round Sentinel लेगा. Flash. Oh, Tens Yoru खेल रहा है. Twice about that approach. Trailblazer is broken. 2 shots landed. Mazino. दो बार टैग किया. Kill there onto second heal. Still online. TP into Lamb, so there's no real prior. क्या TP किया भाई तू? Just goes down. Simple as you go. 3 players now. Call is made to reclear. They are just trying to run this one down into the close quarter. Weaponry. Straight up brawl being taken. Trying to overwhelm it with the firepower. Molly's cross side. That's seeking to delay a potential plant onto the default spot. आसपास भाई peek करोगे? Till out, but the pause in the play that's called by Sen maybe rotate कर रहे. pivot into a different direction. Com is there, ready and waiting. Should they? भाई peek क्यों नहीं कर रहा यार बाहर ये हगासा. Looks like a very good setup at the moment from LEV. Pow gamer YT. Noise is. यार आसपास भाई peek करो ना यार बाहर please. Alive here. Zelsis with the plant gets it. और. That's a big win for Sen. Being able to get the plan down without taking any damage. There's a player disadvantage. Sen overpeaking themselves a little bit there. John QT going down. Only 2 of them left. Second. Has got to try and hold it down here with the reload. They're going to start to know he's in there, anticipating with the double face. Still, he needs some damage, he needs some kills, he needs something, at least anything right now to make this winnable for his team. Swarmed and overwhelmed. Too much pressure. And left with the bonus round conversion. bonus round blinding start here, map number 3. And there were some amazing moments in that round. Leviathan gave showers, but then crunched it afterwards. Com put the dog through the teleport. defense है यार attacking vibes क्यों दे रही है? And that's how the teleport ended up coming through. This TP भाई is ये because क्या Tens TP है got भाई? showers crunched. हाँ? And ended क्या up just TP है having to भाई go for तनिष his भाई? teleport, thinking, hoping that Lamps was safe, got punished. And then John Cutie got one shot by the Outlaw because he had that light armor. Good morning, Philosophy. 2 really important moments there that allow LEV. आसपास looks so dangerous कि उसके आसपास कोई नहीं आता. Oh, क्या बात कही है, wow. Minutia in the round. And I mean, look at this. Sentinels can't afford to invest that heavily in this round because they don't want light armor in the next. Makes them all the more susceptible once more to Aspas, but he's not in the direction they're heading towards. Ult, dimensional drift, picking up the ना stinger winger लेके भाई किए भाई. They don't want anything to do with this one. They're willing to give up the site. Flying. Looking to push them back. मेरे तो Phantom निकालता. Smokes fading. अरे भाई जमा. Lovely timing for Tex to क्या catch. timing भाई. They would like to have Com Seekers here, but he's pretty far away. LEV are going to be late into this one. अरे क्या क्या कर रहा है वो? भाई मारा. That's Tens. Yeah, नुस्ते flash आर नहीं तो पार. Still alive. Lamp's control needs to be held. Lamp control मिलेगा इनको? एक stun हो गया. Tens help करने आया. Wingman. Llamp लिया ही नहीं साइड आ गए. Oh, what a kill by Tens. 2v1 नहीं है? 2v2 है. दोनों ये shot. Oh भाई. यार लेकिन खेले, अच्छा खेले, काफी अच्छा खेले.
एक्चुअली गन निकालते ना कोई एक भी निकालता. They looked like there was so much danger in that round. And Sen were making plays. I loved the flash peeks into backside. भाई काफी अल्टीज आ गए, मतलब ऑर्ब्स आ गए काफी. The bounce Alt flashes. points. The One sided match है. नहीं जरा भी नहीं. It's just so good. But at the same time, Lev played passively most of it. Controlled the areas. Oh भाई tense भाई cooking भाई. One enemy remaining. And they're out to a 4-0 start. देखो ना, अगर अच्छा गन रहता ना वो पहले ही वाले बर्स्ट में निकल जाता एक बंदा. Yep. ये क्या है इसका मॉनिटर? हाँ ना, क्या डेंजर मॉनिटर रखता है. About Sen not wanting to invest मैंने too वैसे heavily in try the previous किया था round. They are actually all on light armor. So मेरे को भी वैसा रखने का दिल है भाई, लेकिन मेरा ये साथ नहीं देगा मॉनिटर. एक्स के पास अल्टीमेट है, यहाँ पे आसपास के पास भी अल्टीमेट है. अल्ट आ गया भाई साहब. और काटा कैसे मुझे? Yeah, I think it's really important there that the Trailblazer actually found a stun on that. क्या मालूम, मेरे को भी नहीं समझा. दूर तक जाता है क्या उससे? Good awareness by Lev. Look at that. Celsius just got his ult up. भी आ गया. On QT, 2 players. They just miss him, but he doesn't claim the kill. Doesn't confirm it. Flash. It's dodged, but he's तो साइड पे तो प्लांट तो मिल गया भाई. So the flank is compromised for the rest of this team. Is going to throw an extra element into the round. Potential disarray. भाई जॉन क्यूटी गेमर है भाई. One would have done it there for John QT, and they are cleaning up the players. खत्म है राउंड. Section of the map. This retake from Lev no longer playable. No life, especially now that King has fallen. Bill counter वाला मॉनिटर. Being able to dismantle that trap that Aspas had set up with the showstopper. Bill counter वाला मॉनिटर बोलता है. Lev chose the timing afterwards to go and re-explore hookah, and Sen just wandered into the site. They didn't even have to use Celsius post-plant utility, the molly or the ult. They still भाई टेंस तो संडास मचा रहा है. क्या लिख रहे हो यार? A good round to get on the board early for Sen and not allow Lev to become a runaway train. भाई तुमको तो इंडोनेशिया का एक प्लेयर था जो कि ऐसा मॉनिटर ऐसा भी नहीं पूरा लेटा के रखता था और स्पीकर पे खेलता था. स्पीकर पे? हाँ, ईयरफोन पे भी नहीं खेलता था और वो प्रोफेशनल था. बहुत मारता था भाई. छोड़ दिया उसने. मॉनिटर आर्म मेरा Amazon बेसिक्स का है. और यहाँ पे सेंटिनल्स शावर कंट्रोल लेंगे. टेंस भाई शावर टीपी भेजेंगे अपना. ओह डिकॉय भेज रहे डायरेक्ट. Tens is a monster if you do try to fight this area. And it's hard to know whether he's there on his own or has incredible backup, as is the case in this round. So now Zekken gets the showstopper online. उन्होंने देखा रेज ने पहले और टैप किया so that बीमन सॉरी ए शावर कोई तो पीक करे और टेंस ने उसके बाद में फ्लैश डाला. भाई क्या टाइमिंग्स ये लोग करते हैं. सिनर्जी बोलते हैं भाई इसको. अरे दोनों ब्लाइंड है. टेंस के फ्लैश में ब्लाइंड हुआ क्या वो? भाई यार बेचारा सेकंड 50 बार अल्ट हो गया ये. 50 बार ब्लाइंड हो गया. Nasty stuff. Feeling it now. Want to try to take the fight to the my god. That's takes just offloading into the Oli, just creeped himself forward. क्या हुआ? Punishing him there. Heal online second. Back up to 100. Line up है. 4 versus 4. Zeltis, remember, has this ult in the post line, has the molly, sends it कर दिया line up. It's going to be pushing away. Lev, under that time pressure. Under that time pressure indeed. But already ये ult गलत है वो line up. Pretty rapid way. हाँ पता है ना यूएल में गिरा वो. अर्र. Peace of mind granted to Sentinels here, but still there's that feeling at the back of their heads. A tap from Mazino. Anybody overstepping themselves? Definitely kills to be claimed and found. Flick towards the side, but now it's run out. All the tools that we were talking about prior. भाई खेल लिए भाई. कुछ भी मॉली डालते क्या भाई? Very nice post plant by Sen. Every tool used to perfection there. The ult, the molly coming through. Second, even finding a timing. सबसे ज़्यादा कांका का tilted रहता है मॉनिटर. He's raised nade. मांडी डाल के खेलता है भाई वो. Now what is? I think that's part of the ult animation. Just pushes it into Zekken's POV there. It's like carting it out. Yeah, that's brutal. Oh my, the molly missed. That's why he used the ult. Did not. तभी उसने अल्ट किया भाई. Looked like the molly had landed, but yeah, great catch from the observer. वो नहीं वो अल्ट तब भी करने. वो अल्ट तब भी करने वाला था क्योंकि टैप किया था ना तो वो पैनिक हो गया.
अरे एक सेकंड वाइपर हमारा जॉन क्यूटी है। King has a judge to hold Shit, hookah. मेरे को लगा जब से SEN have not been putting उसका a कैम lot क्यों of दिखा pressure रहा on था फिर वाइपर hookah. में? They're not the kind of team that tends to do, 5-person hookah bursts. They're expecting something in this round, though. Very patient beginning. Most of the time, SEN's timing is based off that gate crash. As it starts to get low, as you see here, TenZ moves his way over. An A-leaning default turns into a B-lean. Half predictions. LEV, though, got the read, and Aspas is already on his way. Already fast with it. 7-5 to LEV. Really clear this one out. Aspas. It's out wide here. Damage bullet spraying going wide still. They haven't contained hookah. क्या हो रहा है? Takes him to the back, and he tends to hit the transfer, but only one kill. Oh, bhai. Still. Dodging and juking with the movement, not quite enough there, and there's a reason why King wasn't swinging. He's only got the judge to his name. They've navigated this perfectly. What a mid-round ओ भाई वो A पे चले गया। Center off to A. Oh, we are good. King hasn't been spotted. और B पे भाई वो लड़क आ गया। Any chance he gets this kill? He's close. He's close. Away! And he's going to get a rifle upgrade. Hold on. Chances for LEV. They get one more, but Mazzino is being 5 seconds. Oh भाई expect कर रहा है। Off the charts right now. Awareness. No way, dude. Charts missing the timing. Zekan. Stalking his prey, King. The fuse half, but as they all fades away, so does his life. And after a 4-0 beginning to this map. क्या हुआ है भाई सिटी पे वो? छी भाई चैट हट यार। उसका कले कॉम्पले हो गया यार उधर। Nicely getting into sights. The engage there was really strong. हाफ प्रेडिक्शन बताइए आपका। हाफ प्रेडिक्शन बताइए भाइयों। हाँ ना वो क्रॉसर मेरे को भी नहीं जमता भाई। हाफ प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ भाई। And with the flashes coming out from TenZ and Sassy are very difficult to try to hold on against. 8-4 SEN 6-6 6-6 actually हो सकता है। TenZ in that position. He's not interested. He's got the ult, got a shorty, and got his eyes set on punishing Como King. Big crash at his back as well. That's his exit strategy. Spots one. Giving information out to the rest of his team with a howl. Going wide. Does TenZ want to make a go of this one, or does he respect them? Looks like the respect is being shown through the TP now. पीछे आ गए आप तो। ओ भाई कैसा पिक निकाल रहे। क्या भी पिक निकाल रहे भाई अभी ये। Boombot at his feet. They know he's there. Nade's going flying forwards, avoiding. Doesn't bait the shot out just from the decoy jump spot, seeing if they can hunt him out. He's got a nade in his hands. King, he's jumping right through the air with that. Judge found. Dropped to the floor now with the rifle. The Viper's pit. Deep Shroud is going to be coating the rest of this point. Makes it very, very difficult now. How do you... अब तो लाइनअप खेलेंगे। Flanks might be the keys. Zelta's shoulder to shoulder, shoulder to shoulder! And Zelta's with 2! 1 versus 1! Being approached! Oh boy, sub round! How have LEV managed to pull that out? Shit भाई मेरे को तो कुछ समझा नहीं क्या हुआ है। Hold off the flank from Com. He got cut off by तंको सकेरा जंप नेम समझ आ रहा है धीरे जंप का इंपॉर्टेंस। हाँ ना वो एपिक्स लेजेंड्स फोर्टनाइट जैसा जंप करके जज चला। भाई ये क्या एंट्री था भाई। ये देखिए एपिक्स लेजेंड्स। एपिक्स लेजेंड्स अरे बोलना नहीं चाहिए वैसा यड़ा है मैं। Sentinels are going to take a timeout here. What are they going for? Valorant OP, Valorant OP, Valorant is the best game ever. Valorant is the goated game. Valorant my love, Valorant my life. Valorant on top of everything. Zelsis has the Brim ult online. Another ये देखो भाई Zelsis का भी माउस पैड वही भाई। The game plan should still be जॉन क्यूटी का लेकिन जॉन क्यूटी का वो है भाई अपना वाला वो जो लेना है। भाई की यार मेरे को है ना कीबोर्ड कोई ये नहीं करता भाई। क्या उसे कहते हैं कीबोर्ड मेरे को कोई अट्रैक्ट नहीं करता भाई। क्योंकि देखो वो जो वूटिंग कीबोर्ड है ना हर्ष भाई ऑलमोस्ट हर एक प्रो यूज करता है वो। वूटिंग बोले तो वूटिंग कीबोर्ड है एक मतलब ब्रांड है। हाँ। तो उसका कीबोर्ड आता है वूटिंग कीबोर्ड तो वो हर एक प्रो यूज करता है। उसमें तुम लिटरली बटन का एक्यूटेशन पॉइंट सेट कर सकते हो।
हाँ क्या बोले मतलब क्या होता है? कि कितना प्रेस करने पे कितना प्रेस हाँ करना समझा पड़ेगा, सब कुछ भाई, और बहुत अच्छा है वो, पूरा चीट है भाई वो You're beginning of the season, your chances for Madrid are all on the line against an opponent that, on either side, मेरे को तो माउस से मतलब है भाई। देख रहा था पर इंडिया में कस्टम वगैरह सब लगा के 20,000 20,000? हाँ मतलब नॉर्मली वो कीबोर्ड 10,000 का है, पर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी फिर कस्टम्स सब कुछ। Hotly contested group that they are in. Com, jiggle peeking. मस्त वो मीता भाई, आप बता कैसी हो? We've seen teams get punished for going for that. He's just trying to maximize his utility. Doesn't want to use Maximize the flashes. Maximize the Kupshimize the Kapshimize. Grab a little more info towards B long. Viper's picked up down into A short. It means that really you can place a lot of players here from left. Look at it, 3 of them. Crossfire setups, a call made to potentially re-clear it and refight this one. Yes, with the dizzy. Wow. Catching a dizzy by Sassy. He's dropped कैसे blind नहीं हुआ Sassy? इतना अच्छा यूटिल डाले थे यार। Into the tube. The second who doesn't overstay. अरे रे। Just gets the info and waits for the rest of his team to really collect. दो फ्लैश डाले वो Sassy blind नहीं हुआ। Leviathan wanted to fight forwards there because Sentinels have such a great composition for getting into side, and then when Zelsis has his ult online, वो वॉल से the चिपक post के is going to था be फुल। very difficult as well. So I understand, बस respect भाई the जाता choice हूँ there हर्ष from भाई, Lev to पेपर go है, for a हैव re-clear फन। ए ऑल द strategy. बेस्ट But the कार players भाई। didn't appear गुड to be मॉर्निंग on the हर्ष भाई, same गुड page with मॉर्निंग the पार्थ timing. भाई। There were 3 आप रहने people दो, on आपको the नहीं team. हेल्प One करेगा was holding कीबोर्ड। back, not involved in the play, and the timing from Tex and Com a little off. Doesn't help that they shot 10's clone either and got a flash to the face. ये आ जाए शॉप में। So Lev not quite being able to execute their idea of how they wanted to stop Sen. And the great thing about that from Sentinel's POV, didn't even have to use the Brim ult. Yeah. This is still going to be a massive tool for any other potential post plan. And if that threat forces Lev to increase the tempo on their defense and they can't handle it, they can't execute it, then Sen are going to be rewarded more of these opportunities to punish the errors. Real fight back here from Sen. I mean, almost evening up the rounds. And you just see it from that POV there from Sassy. He's actually in a fairly comfortable spot. आपका गेमप्ले इंप्रूव करने के लिए अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा। He dodged both of the flashes, and he just is able to सारे सिस्टम हैंग करेंगे हम, सारे excellent angle, really सारे सिस्टम। nice position to भाई avoid that reclaim. अभी वापस प्लांट करेंगे, पोस्ट प्लांट खेलेंगे। 500 अल्ट है। Xena throwing out a couple of variations of this early wall. Either one for the TP and A short, but this भाई one... साहब आधा सेकंड भी ज्यादा अगर ये कर दिया ना वाइट स्विंग, डायरेक्ट हेडशॉट। have been putting 2 people into showers to try to stop 10. This is the first time he's gone there. गायब। And again, गायब और लेके A गायब। default turns into a B default, putting pressure onto Com. So much information gathered from that Trailblazer. Wasn't broken by Com, still is holding it down into elbow. Seeking an attempt to pop out with the reflash attempt. Sassy, he was there. कहाँ से फ्लैश किया रे वो? But the player's trying to flood in through the back. That was Aspas with the rifle. Still, Wall's going to be cutting up the side here. Oh, nice trade. Oh भाई, what? दो मारा वो। King. Late to the party here with just the judge in hand. Don't think he's going to be able to get access to too many more guns, but maybe. Oh भाई। Good try. Lemonissimo. The more I'm thinking about this, Bren, the more Leviathan's composition, I think, is particularly टीम आउट आ गया, टीम आउट आ गया। dealing भाई with अभी Sen's तो राउंड BXN. खत्म होने The वाला है और reason I टीम say आउट that डाल is लिए भाई। The big thing that's weird about how Leviathan have structured their buy composition is that they don't have a brimstone in there. They don't have somebody that can smoke off hookah with a smoke that kind of blooms out around. It's just walls, right? It's all walls from Mazzino and from King. What that means is you can't hide inside your own hookah smoke to dodge flashes. Good morning, Ajay. Good morning, Riddles. Riddles. Good morning, कैसे हो? You set one player in the tube, one player elbow, one player under hookah inside the smoke. Everybody's anti-flash. भाई ओपी गेम तो चल रहा है, ओपी गेम तो चल रहा है। कुछ भी दोस्तों, इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब। That isn't an option for 5-5 मैंने बोला था हाफ टाइम 7-5। चलो देखते क्या होता है। 7-4 Sentinels. Struggling to come up with an idea of how they can defend B in a way that involves crossfires. Unless they're going to fight. Okay, I guess I won't stream the next game. I am done. How do you hold a crossfire setup that doesn't just get cleared out by Sentinels, flash plays,
by the way that Zekken and Tens are getting into the site, by the ults that are now online. There's been many approaches by LEV. I mean, you think about that one round. हर्ष भाई तुम मत जाना VCT, वरना सारी टीम पहले ही बाहर हो जाएगी. And Sen have done a great job सबसे of मेरे को ऐसा avoiding लगा every 20 kind of मार play दिया for B long. कौन? अच्छा Tens ना. Even the reclear, the fight that was a little bit prior, a few rounds back. This is in the finals. नहीं ये decider map है, मतलब decider games है, मतलब जो हारेगा वो घर पे. Ten's gaining a lot of ground just by himself here out towards Showers. But look at it. I mean, there's no real changes or shifts in terms of the way they're playing this. He's not scared. Default ही हो रहा है भाई. He's not at all. And he knows it because he's been given so much space. Yeah, I think there's only been one time where he tried to fight back. Yeah, I think the way that Tens plays Euro on this map is pretty immaculate. He creates so much cross-map pressure on the Same कर रहा है क्लर्च बोल रहा हूँ. It's the same game plan. Why would you change it if it's working? नाविद भाई ने 100 रुपए भेजे. रुको नाविद भाई पढ़ता हूँ. Entry for them, get good information here with his ultimate. He will be pinging them out. Recall too that the last time Tens used his ultimate. What's up, Harsh bhai? Been here for from 5 now. Gotta go. Got my under 18. Three of these players out. There's a attempt down A short at the same time. Fights happening all over the place. This is what they did last time. Shuts down Zekken. Look, attempt there, not working out. Yeah, what's that fake? भाई नहीं मारा यार अल्ट में किसी को. There's only 2 players here. It's Mazino who just shuts down any funny business. Got my under 18 states boxing match representing West Bengal in heavyweight. Bye, see you. Take care. Oh boy, so all the best, bye, all the best. Close. But Sassy there, Flash pushing forward. Good flash, भाई क्या पीक किया है. Finds his mark, finds his target. Aspas roundabout, straight through. Oh my God, भाई क्या close आया था. Shit. Sassy should never have had a chance. भाई ये क्या close था यार. But the lineup almost made a believer out of me. Aspas puts him down. Congrats, Navid bhai. Thank you so much for the huge 100 and all the best, bhai. All the best, all the best. Take the lead, but it's this kill that's really important. You know, Mazino's going for a peek there, thinking, you know, this is really similar to the last time that they used the Euro ult on B and then they just walked down shore. Fool me once. भाई मेरे को लगा जमा हो गया अभी. You can't fool me again. Classic. You gotta love it. Standard Molly. Seen that one before. Zekken. A rocket here. Good answer back. That is so fast. Come on. It's been jump spotting that a lot, but a jump. Oh, head taken off. Another rocket just in case there is one extra straggler. Zekken. भाई लोग शायद 7-5 नहीं हो रहा है. Into the very final moment, but there's good discipline here by 6-6 हो रहा है. Be falling victim to it. Still, 3 of them with a lot to do. Maybe Aspas can do it with an ult of his own. I really like an aggressive position here from Tens. If you can try आसपास का अल्ट आ रहा है. I mean आ गया है. आसपास भाई अल्ट दिखाओ एक. Last round चलो ये मारो. So nice. It's so difficult to try and retake into this. The wall and attempt at least to try and again partition. Segment up there. It's blinded up. He doesn't know where to fire it. Cove to try and get themselves out. अरे भाई. Texas drops to 4 HP. Nice. And so now क्या अल्ट किया भाई? एलिमिनेशन मैच यस क्या अल्ट किया भाई वो किधर अल्ट मार रहा है बच्ची हाँ बच्ची किधर अल्टीज किधर अल्टीज खींचिंग ऐ शपथ 6 on Breeze 6 guys good half and you saw Sentinels really well adapted to what was going on in this. They just ended up be-execing over and over and over, and there was nothing that LEV could really do to stop them. Nice, boys. Good half, boys. Good stuff so far, giving us that competitive game. Let's send it down to the desk to break it down so far. This is exactly what you would want to see in a match as competitive as this one. 6-6 tied in a half, and fun fact, a little behind the scenes, Bala called it, which is kind of crazy. You are a wizard. सेन जीती तो सुपर चैट करूंगा कितना उस हिसाब से मैं ये लगाता हूँ क्या उसे कहते हैं. I'm pretty smart. You're so smart, Bala. Look at you, the smart. But I don't actually think that that's going to be enough for Sentinels there. Really? देखो भाई आसपास अभी भी शुरू नहीं हुआ है. बात तो सही है. अभी तो हाफ हुआ है. अभी तो अटैक करेगा आसपास. अभी 10:30 बोर्ड का एग्जाम है और प्रिपरेशन के नाम पे तुम्हारा स्ट्रीम देख रहा हूँ. थोड़ा विश भी कर दो. ऑल द बेस्ट भाई. लेकिन अभी प्रिपरेशन थोड़ा करो, ग्रामर वगैरह रिवाइज करो, हेल्प करेगा काफी. नहीं तो फिर भाई पछताओगे कि यार स्ट्रीम देखने के एवज ही थोड़ा पढ़ लेता तो.
भाई 11 बजे बोर्ड पेपर है OCM का, टिप्स दो जरा। आदि भाई थैंक यू फॉर द 40 रुपए। आंसर्स बड़े देखो। नया क्वेश्चन है तो नए पेपर पे चालू करो। टीचर को सप्लीमेंट मांगने में ये मत करो, हिचकिचाहट मत करो, और पेपर कंप्लीट करो मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और जो फीचर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं आता है एटलीस्ट फीचर्स वगैरह लिख दो। और अगर नहीं आता उसका फीचर्स वगैरह तो मन का ठोको, ठीक है, मन का ठोको, लेकिन खाली मत छोड़ो, कुछ भी भरो, पेजेस भरो। OC is OP. It was against 100 Thieves when it came down to the wire at the very end. Saucy was that guy that stepped Clutched up. up. World champion Saucy. He's got the ice in his veins. He doesn't Thank you for the pressure in 40 मतलब। situations. We'll have to see if it pays off for him. This is it, folks. Whoever wins this उधर is चेम्बर moving आके on. बैठा Let's है। send it right back over to your cast. Anyone's game still heavy emphasis placed onto this pistol round. चलो भाई, attacking map, sorry, attacking side for The flash dizzy combos into Go to Gamers they're so Leviathan. difficult to hold against. But Sen have got a strat for this pistol round. 4 players grouped up over towards B as only Tens grabs info and then has a gate crash out to heaven. Long distance cove. Lands, creates some space here. Wingman to plant inside. But guess what? Tens is right there waiting for the time to strike. Gives it up actually. Lets the plant go. क्या कर रहा है भाई? Yeah, that's an कोई है ही नहीं उसके आजू बाजू। prioritize kills instead of plant denial. हाँ वही। His team's trying to find some solid retake spots here. Sen do have showers control. It's going to be important. अच्छा डिसीजन था। Sectioning off the map. Only one part available. Flank आ रहा है भाई। अरे हैकर साला। ओए। He sees it. He saw it. Oh nice. QT wins it. Nolly at the feet. No way. Oh भाई। Can't get away with that surely. 1v2. 3v1. Just up to text. Okay, 3v1. Yes, it's planned for him. Always an opportunity. Always a chance. Cover. Tens. Half of the defuse. No way. He's got to stick it. He's got to stick it. He's got to stick it. What a great attempt from Tex. क्या round था भाई? But Sen somehow managed to come away माँ with that one. कसम। क्या round था भाई? सीधा जाके बैठ गया वो। Somehow Aspas went down to a molly as well भी नहीं from गया। Celsius. Not exactly sure how that one happened. And it's ये still round था came भाई, down ये to round the था, ये round tightest था, of ये round था। margins. That's an important one for Sen. आज भाई लिख लो, मैं 2100 रुपए दूंगा अगर 11 जीता तो। नहीं तो तुम हर मैच सेन को सपोर्ट दोगे, ठीक है डन। Got to be wary of these kind of spots because if Tens grabs one, he's going to be tough to trade. He's going to be out of there real fast. Oh bye. Okay, crash fades. He doesn't actually have the exit strategy anymore. इको राउंड है भाई सेंटिनल्स का। कैसे खेल रहा है आपका स्टूडेंट हर्ष भाई? अनिरुद्ध भाई अच्छा तो खेल रहा है। अभी देखते हैं, उनका बाय राउंड है, स्टिंगर लिया है, उसको बोला था स्पेक्टर वगैरह बुलडॉग वगैरह ले, लेकिन लिया नहीं है। अभी देखते हैं क्या करता है। थैंक यू फॉर द 40 रुपए। The more likely it is that Tens has used those teleports and they've run out of time. And that will put him into कुत्ता काटीज भाई लॉन्ग पे। Look at it, it's running out. Seeks to try and take the peak with the wall. Dog in his face. Yeah, okay. भाई क्या कुत्ता डाले भाई, क्या वॉल है यार वो। Flash, nice. Oh boy! Right through the smoke, the correct कैसे? angle and play, but they have given up part of the site. No rotations from Sen just yet. They're thinking they could have pivoted through the TP. They really still choose to. 30 seconds left. And leave that territory for John QT to contest and contain. 25 seconds, still no signs of the spike even being planted. 20 seconds left, got to get a move on. A fight into the back of the side. और भी 3 है भाई उनके। अरे भाई पूरा अंदाज हो गया भाई, 2 ही जन बचे उनके। Players either get the spike down or they need to go down, and they अरे माँ कसम भाई एक गन गया बस। Throughout that entire round, Celsius puts down so much pressure on the plant just by popping down a smoke. It just makes Lev so uncomfortable to be able to get the भाई plant टेंस ने क्या स्पैन किया यार वो। when they have rifles on board is really going to want to clear out the entirety of the site. खेल रहा है भाई टेंस। Just kind of got stuck there. That's the smoke I'm talking about.
10 seconds left. मेजर खेल रहा है, मेजर खेल रहा है, हमारा स्टूडेंट मेजर खेल रहा है भाई, ओपी ओपी हो रहा है, मजा आ रहा है. The flash with the dizzy to fight in general on A. Now that they've got rifles on board. Goal is showers. There's an orb there, ready and waiting for the taking. Texi wants to get his ult online. Tens. He's got gate crash. This is an attempt to fight this onto the bonus round. Shots fired. Second. I don't like this spot. No way. Mazino can clear it. Surely. The dog! Oh, bhai. Oh, it forces the issue. Mazino. कैसा मारा He stood Mazino? up there when he heard the dog coming through the TP, but he still catches Zekken in that one and done. Wall now. Straight up and through. Full position by Zelsis. Oh my, he's Oh detained. भाई, फिर भी मारा यार Saving Zelsis. grace to him. Tens is at the back, but he's only got the sheriff. Still Nice. lands the second shot. Trades it out. This is a very, very awkward spot. Lev finding difficulties now. Onto their buy round. 2v3 है. Doesn't have the spike. I mean, Tex is just unaware of that one. spike He was नहीं looking उसको. like he wanted the right click to try and get it online. Finally picked up. Plant. Sassy denies it. They're everywhere, man. They're in the walls. They're in the walls. King. 1v2. Drops tens. 1 versus 2. एक U-Haul में, out in the एक open. shower में. Was default John crouched. Do they have anybody eyes on to watch this? खेल लिए भाई. Round है भाई. Sentinels OP. Of this attack site. The desk was asking the question, was 6 enough for Sentinels? But if Lev are playing like this, it's easily going to be. हर्ष भाई अपने स्टूडेंट का टीम सपोर्ट नहीं कर रहे. कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ यार. अपने स्टूडेंट का ही तो टीम सपोर्ट करूंगा ना बच्ची. एक वो तो 40 रुपए. Instead of using any utility, dies. That's Spike's lost. Tex took too long to recover the spike. Flank came through. ऐसा पूरा इधर तक पहुंचा भाई. सामने वालों को आवाज जाता रहेगा ना इसका. Nice one. I'll have to pull up the dictionary later. Awkward, clumsy. Okay, thank you. दो जन सेंटिनल्स के बी पे खेल रहे हैं. No, there's danger here. We know. ये बाय नहीं है 11 एंड लेवी फोर्स किए हुए. फोर्स मतलब वही बाय किए हाफ. अपने स्टिंगर लिए है. Stinger the best gun in game. I see his jump spotting though. Now Lev were good at punishing this in prior games, but you can't really do it with the weaponry that they have. I mean, what are you going to do? ADS Stinger the guy that's... Has to be one to the dome with the sheriff, and it's only Tex who's got it. He's nowhere near. Fast though, Cove to get themselves out. Nade. Rebounds Dizzy and a flash. Nade though. Oh my! That is so What? good. A bounce. No, it's a bounce lineup that comes through from the molly actually. So all of the players vulnerable up. Disgusting वो work. vulnerable भी किया है और नेड फेंका, इसलिए दो मरे. Drilled play. Clean up कर दीस भाई, clean up कर दीस. With a momentous lead, that is 10-6 now. That looks so कैसे clean. यार? Yeah, as soon as they realize that this player's coming through hookah there, you look at John's POV, he bounces a snake bite off the wall, lands right there at hookah. भाई कॉम्बो तो था, कुछ भी बोलो. वो मॉली और ये देखो, ये मॉली और नेड. अच्छा नेड उसने नीचे डाला है. भाई क्या दिमाग है यार. देखा, ऊपर से वो लोग वनरेबल होके आएंगे, नीचे नेड फटेगा, मर जाएंगे. ब्रेन. एक वाइपर मेन और एक रेज मेन का जब ब्रेन कंबाइन होता है ना, तो बनता है एक डेडली डुओ. चलो 3 राउंड्स बाद आता हूँ, मैच खत्म हो जाएगा तब तक. क्यों भाई, तुमको नहीं देखना है? Haven't been earning their way to any ultimates as well to potentially. भाई 2 घंटे में इंग्लिश का पेपर है. ऑल द बेस्ट. I mean, they've built themselves up. Sass has got the seekers भाई online. आज अगर आसपास eliminate हो गया तो मजा आ जाएगा भाई. Massive eliminate? to shut down. आज जो हारेगा वो eliminate हो जाएगा ना. हाँ ना वही भाई. Just put everything भाई on the line आसपास here. कोई इंटरनेशनल इवेंट Everything नहीं into रहेगा. this one round. They need to win अच्छा it. लगेगा. नहीं भाई अगले इसमें है चांस है, लेकिन पहला इंटरनेशनल इवेंट इसमें आसपास नहीं होगा. वो अच्छा हिस्सा है. हाँ मतलब इसके पहले आसपास सारे इंटरनेशनल इवेंट खेले ना क्लाउड. बस भाई बच्चे तो बच्चे, खपचे तो खपचे, उसकले एकले जनजी एक साथ सॉन्ग सुनाओ. Leviathan roster was built as an America's super कुछ मारूंगा, लाइक करो. भाई लोग ज़ार लाइक शायद सपना है. कर दी. ज़ेकन के पास अल्टीमेट है, मजीनो के पास ये भाई ये हार्बर अल्ट अच्छा है भाई एग्जीक्यूट करने, लेकिन काफी ये खेल रहे, डिफॉल्ट खेल रहा है. Just been wasting that time. They've been honing these compositions, aiming for a chance at a top spot.
chance of an international event. See here, Sentinels thinking that it's over towards B, might end up going for a reclear. Zekan has nade. TP'd away, Aspas. Forced to navigate that spot. Doors opened up, Boombody doesn't know if पे यहाँ पे तो दो players थे, वो लोग कहाँ गए? अच्छा यहाँ पे छुपा है TenZ. There forces the gate crash forwards. It's quite good really for Leviathan. They've taken control of showers now and pushed TenZ away, and they can always return back to B long. Because SEN are very unlikely to, reclear that area and then just stay there. So although time has been ticked off the clock, SEN have lost a lot of information and control, both outer wings of the map. लेकिन तीन जन नहीं पे They do not know where this is ending. वो क्या लाइन अप कर रहा है भाई गेको? Is that? Wow. About to say, a bit of a weakened setup out towards B here. Do you still want to try and go off this? Lev, Seekers were used by Sassy. Knows that there's a couple of players still lurking, loitering, waiting around, but he's playing more passive position. SeanQT though, he's in trouble. Dizzy in a flash into the back. Ult आ गया भाई पे. Ult किसने किया था? मैंने देखा ही नहीं. ओ भाई, ओ भाई. भाई भरीस गेम प्ले हो रहा है. ऑब्जर्वर हग रहा है या मेरे को समझ रहा नहीं है पता नहीं. ऑब्जर्वर हग रहा है भाई. जो मर रहा है उधर पे ही ले जा रहा है बार-बार. TenZ with the decoy, aiming to get some ground. Flash through over the top, but this is a great call by Lev. Look at this, nobody really playing onto long. It's a doubled up position into elbow. Crossfire is going to be set up on well, yeah. What a round Leviathan desperately needed that. Operator निकालना चाहिए TenZ को भाई. And it wasn't looking good for them. When JohnQT picks off one and it's Mazino, I think that पैसा है gives क्या? away that पैसा you're ending बहुत है big. भाई Sentinels पे. Mazino is not likely to be lurking while playing Harbor. And that is a tight angle. Wow. Don't try that one in your हमारा भाई पर कब ऐसा मारेगा भाई? Unless you got reactions like these guys. Or zero ping. Yeah, true. Very, very true. That's a land crack out. Round by round. All the best भाई. जिसका भी 12th का भी एग्जाम है, 10th का एग्जाम है. What we saw from Leviathan in the game against Loud is that Aspas doesn't need to dominate for them to have chances to win. But my God, it does help. It certainly does, but they managed to navigate that last round. We talked about the importance of it. Lev get another buy. They build up these ultimates. ये shot try कर रहे हैं. They need to start this fire, potentially get this nice and even here on our final map. There's a great serve here from Sentinels over भाई बहुत सारे ults है भाई Leviathan पे. ये तो round है भाई इनका. कितने सारे ults हैं इनपे. Got to respect this one now. TenZ is really Harbor का ult आएगा ना काम 25 हो जाएगा. Finally backs away. Harbor roll. Clearing most of the way. Play still not in. Look at the flank. The choke. There's a flank attempt. Bring all this noise. Flank आ रहे हैं. Right behind them. They are not shying away from it. Showstopper. Where the hell is this one landing? Flash play. They're gonna meet them head on, and they will. भाई कोई रेस का ult connect करता भी है मार्केट में. ओ भाई TenZ OP. है Zekan ने मारा वो. Nosalsis weakened from a prior है भाई. engagement. पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन हो रहा है भाई. फटफट हो रहा है जो भी हो रहा है. Too easily. भाई प्लान No more mollies for King. It's a double up call by Lev. Double up call by Lev, and they swing it. No more util. No more life. Very little chances, especially when the discipline is like that. double pick से यार. Very well. भाई हाथ से छूट रहा है Sentinels के. लेकिन बाय तो है, बाय तो है, बाय तो है. I was thinking that it was planted over towards triple instead. इसके बाद eco जाएगा. And there was a lot of chaos in this kind of situation. Chaos, अरे इतना chaos था भाई. Mostly because of this heavy push on the flank. But Lev ended up dealing with it. I think that's one of the other advantages. Just keep going for long defense, okay? One of the other advantages of running the Gecko actually is that Tex was still able to fight while planting. Throw रहा है भाई अपने students को समझाओ. नहीं throw नहीं हो रहा है, throw नहीं हो रहा है. Tension मत लो. Close आ रहा है match. Entertainment बढ़ रहा है. Did we just hear the call there to dominate B long, play for ults? Understand the importance of trying to get more of those ults online. क्या TenZ यहाँ पे YouTube flash करेगा? TenZ YouTube वाला flash करेगा ब्रज भाई. This round is not a give me for just Lev. You know they're not going to be able to just get this one for free. Ready है भाई. वही कर रहा है TenZ, वही कर रहा है. Bulldogs. इन कोई peek ही नहीं कर रहा है यहाँ पे. And TenZ is holding a really solid flash lineup where you can swing off the back of it. Double flash. Double flash भाई साहब. Nobody was pushing up off the back of Comms Trailblazer. Worth noting this. उनको लग रहा है कि भाई B push कर रही है लोग. ये वो लोग पीछे चले गए. Hasn't been this long. डर गए. Keeping showers control here would be massive for Zek. घर के रास्ते खुल गए. This could be a round where we see Wingman getting obliterated by a Brim ultimate. I just want to prime people for that. Keep your emotions in check if it does happen.
Shy your eyes away. Flash. Jiggle almost with the punish. Celsius in trouble here. Plant. Oh no. Bhai, बहुत late आज. He didn't Actually go for it. broken. Yeah, that was a nade, I believe. Finally, second go of things. A tap. And that's pass. Ooh, yeah? Let's take care of at least one of the players Lurk there. kiya In the showers. हाँ नहीं किया. वो Full can't play. There's only 18 seconds left, I think. Celsius नहीं stays उसने in पहली बार hand. नहीं किया Text तब going for the वो plant. ओ Rebound. भाई ओ भाई एक नंबर 10 seconds. We still haven't dealt with Sassy. 8 seconds left into the अरे back of the side. यार. It's getting a little bit hectic. It's getting overwhelming. But it just about done it. All of the problems अरे in this भाई round. क्या मार रहे हैं Barely लोग any seconds left. It leaves it just only up to 10s. When the investment of that क्या round, मार he रहे knows he भाई has ये to लोग keep the क्या rifle. मार रहे हैं In that round, I mean, huge moments happening all over the place. They deny the plant coming down at the beginning, so obviously there's some time pressure. But when Aspas gets that kill onto Zekken, first of all, enormous kill, which again confirms how much impact Aspas is having in this map. But it also means that I think they believed Showers was clear. And in fact, Sassy had gone through the teleporter and was over there to help. Yeah. It looked like Lev had lost track of that a little bit. But Sassy went for a real aggro swing. Once the time started ticking down, Sen called to try to end the round right there. One kill, important kill, but they don't claim it onto 10s. And you're right. एग्जाम देने जाओ सालो Sassy हाँ feel ना like भाई he had to force the issue, you know. They didn't know he was there. He had to be the playmaker in a moment, but he wasn't expecting a double swing. That's a disgusting भाई क्या angle. भरा है उसको And I feel like sometimes when the time ticks so low like that, it's actually the defending team that ends up being caught up in the chaos. Yeah, because they can see the win. Yeah, they're thinking about the win condition. एग्जाम like, what देने if we वाले deny the जाओ plant ये just लास्ट this वॉच one पार्टी है time? ना कल से रेगुलर स्ट्रीम and कल ended the वैलोरेंट round just स्ट्रीम there तो and होगा then, What it बट ended up लास्ट doing वॉच was पार्टी नहीं है baiting ये the Sentinels players into going for unfavorable fights. Yeah, overstepping themselves. And Com showed क्या बोल रहे हो extraordinary resilience आप there. भी ऐसा नोज पियर्सिंग to deal करा with के ऐसा नोज में रिंग पहनो ना भाई ऐसा लगेगा शेम्बूड आ रहा है बाहर भाई तो क्या भाई ऐसा बार बार चेक करेंगे पब्लिक आके बोलेंगे भाई शेम्बूड आ गया है बाहर तेरा अंदर ले भाई अरे सॉरी सॉरी मतलब ऐसा मेरे को बोलेंगे मतलब मेरे को नेक्स्ट क्रू है ना हाँ नेक्स्ट क्रू है लेकिन मैं GNU हूँ ऐसा टैटू करा लो बॉडी को फुल माफिया That we've seen from them in the past. We've seen Bind played so often. क्योंकि मेरा with अभी these है ना two सेंसेस duelists for काम नहीं Sen. कर रहा है We अभी know how मेरे this को map works for Sentinels. फोकस करने के लिए हो रहा ही नहीं है And जरा they're भी avoiding जरा the भी danger. There's flash re-clear danger. There's danger with Zekken fighting over towards Showers. In general, in the last 3 rounds, Lev have managed to dodge those plays. Here's more danger in short to start round 20. ओ भाई ये शॉट फाइट हो रहा है यार जोरदार हाफ शील्ड है ये लोग Celsius behind the box. It's second. Just taking that timing. Smokes. Drop deep. Trailblazer. Clears him. Has to get out of there. Dodges the bullets. Just about. This is Reposts himself. This is a really interesting one. Sentinels are threatening that they could have walked down Oh my, sand. the wall. One kill. 10s. And he trades to the box. So much damage. Celsius has to respond. He has to try and stop them from flooding नाइस back नाइस in. नाइस And they नाइस have. दो ही Just जन done it. बचे दोनों शावर की तरफ Cole है dropped down now. There was that pause in the play that was caught by the left players, but there's only 2 of them मारो left. राउंड जीतो Versus the 4. And it will come down to heroics for any chance of winning this one. Sen should be the 11th round for them. Seekers invested. Has to be the safety with the ult. King eventually traded. And Mazzino low enough to do it. He had to stick the plant. शिट में तो सो गया था मुझे देखा है मैंने देखा ही नहीं राउंड शी यार Great idea from Sen coming out of their timeout. भाई 11-9 हो गया शी यार मैंने राउंड मिस किया भाई मेरी नींद लग गई थी Smoke down at market. सही में हाँ genuinely With the minimap pings actually that Leviathan are worried about that push down sand. So that forces them to commit to short, to commit to that, and basically just walk into Sentinel setup. One enemy remaining. Lovely. ओ भाई क्या मारा है जॉन क्यूटी ने Satchel's out, gets back into the position, gives them the 1 kill, sets it up for the trade from 10s. I talked about how important it was. That's the 11th round for them. Can afford to get the gun still there. Prevents Leviathan from getting even more ults online. We could see a Showers crunch here happening. Showers crunch. Aggressive control of this area. Brave indeed. Flash through. Bro.
टीपी डाला है क्या इसने? ओ डाला है भाई, बस टीपी नहीं कर रहा ये, नहीं मान रहा भाई। और Bro, do they think इसने टीपी कर लिया है? Okay. Sentinel, it's easy. It's not easy भाई, it's not easy. अबे ये क्या भाई, ये मार्कर डाल रहा है? अरे बार पुश करके बैठ रहा है इसको साथ। Look at this. I mean, the awareness from them. 3 players. They're not even. दो फ्लैंक आ रहे भाई लोग। This is masterfully played in this. दो फ्लैंक आ रहे, 3 सीडी से खेल रहे भाई साहब। 5v3 सिचुएशन, मैच पॉइंट आ जाएगा सेंटिनल्स पे। SEN have completely been controlling the tempo, just shepherding LEV around. इसको देखो, लोग सीटी होल्ड कर रहे हैं और ये लोग सीटी ही जा रहे भाई चेक करने। They're more than ready for all of it. And what's ready to come here, LEV? एक और है उनके पास। Only the one. Second, taken out, plan for the back of the site. Now the time. टेंस का एक किल में अल्ट आ जाएगा। Oh my god! Okay, this flank guy. Oh my god, he saw him as well. He didn't want to swing for the trade there just to try and play for the percentage play, but there's still 2 players up. Damage done now. Takes at least the ult popped off the Tainment. In the corner. Celsius, he's got to watch his teammates' body. He's got to watch his teammates' body. Nice! Oh भाई, Distance runner. This time he will not खतरनाक जॉन भाई। क्या है भाई? भाई घान किया रहे उनके किंग ने। उसमें उसने ये मारना चाहिए था। Continue that dream of being able to make it to Madrid. सामने हाँ भागने वाले को मारना चाहिए था। I think you can sense some of the nerves though. SEN almost misplayed. Such an enormous player advantage situation there. They allowed too much space for Com to work around. Things almost got very dangerous. Very dangerous indeed. It would have to be 3 rounds in a row though for Leviathan on a bad buy. Stinger, double Guardian. Look at the ults for SEN. Set this one up. It should भाई be the 3 slam अल्ट से। dunk. भाई मस्त आराम से खेलना The चाहिए। road to planes begins 1 round away. Toxin screen down. भाई जेल्सिस खुद को बूस्ट करके वहाँ पे खेल रहा है। Waiting it out. बट जेल्सिस उधर पिछले टाइम भी खेला है, तो वो लोग तो चेक करेंगे ही, Not seeing anything क्योंकि early on here. अगर उन्होंने इनफ होमवर्क किया है तो। On to the minute mark. Anti-flash for Zelsis. He's worried about it. Pop flash plays, especially when the noise gets cut. But Dizzy over the top. नीचे उतर गया। Play anti to that. Mosh pit through and into the back. So LEV. हाँ क्या देखा नहीं। Control a little bit of semblance of that one, but they don't have showers. शावर अभी भी टेंस बाई खेल रहे हैं। Snake bite. Oh nice. Won't be able to get that plant down, so not into the post just yet. And I talked about it, Tens. It's so important that he maintains control. Dimensional drift. Realizes he's being threatened. He's picking out the plays. He's body blocking them. They're spamming them down. Flash, play, anti. Having a dodge and Juke play and rocket. भाई सब huge ult. Huge. Huge. Sheesh. भाई what a round. भाई क्या इन्फो दिया यार टेंस ने। जी भाई जी कर दिया भाई आज। गेम है भाई, गेम है। व्हाट अ गेम। जीजीज भाई लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। व्हाट अ गेम बाय सेंटिनल्स। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। For the teams that fell over in 2023. अरे अनामय भाई, thank you so much for the huge 300. Thanks for coaching Sentinels, Harsh bhai. Love you bhai. W Anamay bhai in the chat. Thank you. GG's. Well, last year, that's what people were saying about this SEN roster. They're absolutely stacked too. And all of that team play, refined throughout the off-season, now paying dividends. Thank you so much, Anime Bye, for the 300. It starts in the play-ins. They've earned their spot. You can't say they don't deserve it. No, you cannot say 2100 गए आपके, कोई बात नहीं भाई। सेकंड की मम्मी जी तो खुश हो गई ना, बस और क्या चाहिए। What a group. Forged in the fires of that. W Anime Bye. Make it through. On paper,
because GG's, GG's, GG's. घर जाने का कड़े कड़े से. We've seen the play-ins in Pacific were pretty unexpected. All of the results across the regions have been hard to predict. Yeah. But the expectations were high for both of these teams. GG भाई, GG. And SEN just managed to come out on top. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. Adaptations towards the end. गेम प्ले देखने के लिए मजा आया दोस्तों. वो सकले कंप्लीटली Because they controlled the tempo completely after that. गुड नाइट जीजी, गुड नाइट जिनल जी. एनआरजी से तो हारेंगे सेंटिनल्स टेंस भिंडी. भाई मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है एनआरजी यार, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो. मुझे लगता है एनआरजी सेंटिनल्स को हराएगी. उसकी मम्मी और सेकंड की मम्मी और सेकंड है भाई. वो सुन के जाना है भाई. एनआरजी has Demon 1, वही भाई. डायमंड भाई बहुत मारते हैं. डायमंड Demon भाई डायमंड है. डोंट स्ट्रीम नेक्स्ट मैच, सो जाओ. हाँ भाई, अभी जान ही नहीं है, मालूम क्या अभी हो गया. वो मतलब सेंसेस ही नहीं है भाई इस जगह पे. कुछ समझ रहा नहीं क्या हो रहा है. वो सीन है, इसलिए अभी सोना ही पड़ेगा. NRG, Leviathan. Well, actually, so far what we've seen in this group at least is the more established rosters that have had more time to work on the fundamental stuff. That's what's been winning here with Loud and with now Sentinels making it out of Group B. So, yeah, this is a bit of a beginning to the year, but it's a long year. And for LEV, they need that time, I think, to be able to develop the coordination. Guys, 3 more likes for 700 likes. Like the stream if you're new. Subscribe to the channel too. Let's go. No, really fix up those mistakes. But let's send it down to Liz, who's down on the stage for the Verizon post-match interview with Zek and I believe the rest of the fam. It's not just Zekin. We have Mama Zekin and Grandma Zekin here. Sheesh. Whole family affair of truly an incredible match, Zach. Especially for you for the last round. That was you went off. So tell me about that last round. Like, what was that like? How did it feel? It was very chaotic, but we had a good plan. We used Tyson's Your World and got a lot of info, and I capitalized off it. So it was pretty good. Now, I don't think you're watching your family in the crowd, but watching your mother and your grandmother in the crowd, they were, holding their hands, like screaming for you, shouting for you. We have these amazing posters here. What is also a red wristwatch, I see. What is it like to have 2 of your family members here in the crowd with you? It's incredible. I feel really blessed to be able to have them out here. It definitely helps me to play better. I'm not going to have them out here just for me to suck. So I'm going to, it helps me be able to play at my best, and being able to see them in the crowd is just a great feeling. Yes. Grandma Zekin, I'm going to come to you. What is it like watching Zekin play on stage? It's very, very grateful, and I love to watch my golden boy. I flew from New Jersey to watch my golden boy. Aww. New Jersey's last hope, New Jersey's finest. Now, Mama Zekin, I'm going to come to you. You watched your son kind of just kick butt, like you said. But now he has to go into the play-ins. So how does it feel to watch him, or how does it feel that he's going to keep on playing to fight for that spot in Madrid? Well, I'm so proud of him, and of course the whole Sentinel team. Teamwork makes the dream work. So let's go, Sen, and let's go to Madrid. Congratulations, Sentinels, and keep it going. We love you. Sen City is present in the house tonight. Now, Zach, hello? I didn't know who that was. You made it through the group of death. That was considered to be the hardest group. You made it to the lowers, you made it out. How does it feel to be out of this group finally after it was pretty damn hard? It's definitely a big weight off our shoulders, but just really proud of the team. We had a hard few matches. We played all 3 teams in the group and still made it out, so just really happy we could do that. I mean, I think everyone here is certainly happy for you. Sen City is in the house tonight, and congratulations, everyone. Thank you so much to the Zekin family. Thank you. Of course. We're going to go to break, but stay right there because we're not done for today, y'all. We have one more match, so stay right there. Thank you. That was a good game. That was W Games. That was GG's by Sentinels. That was super fun, chat. That was super fun. अच्छा लगा खेल के, अच्छा लगा देख के मैच. थैंक यू सो मच आज इतने लोग देखने के लिए अपनी स्ट्रीम. अच्छा लगा भाइयों.
कि तुम लोग आए और देखे आज की स्ट्रीम हमारी। क्या उसे कहते हैं, सेंटिनल्स की मैच देखते टाइम वो लास्ट मैच में मैं थोड़ा सा ये था, क्या उसे कहते हैं, ढीला था, लेकिन क्या करूँ अभी भाई, सॉरी यार। तो अभी मिलते हैं हम लोग अगले स्ट्रीम में, जो कि होगी कल, मतलब आज ही शायद। आज एक मैच, आज एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, व्लॉग अपलोड करेंगे 12:30 वगैरह को, 12:30-1 बजे। अब मैं उठूँगा कब, तब जाके मैं थंबनेल बनाऊँगा, तो तब होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन बॉयज़, गुड नाइट सभी को। हाँ, नाइट भूलूंगा नहीं रीमन भाई। हाँ, मैंने ट्रिमर यूज़ किया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, नाउ आई गो एंड हैव अ गुड स्लीप, ऑलराइट बॉयज़, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी या, मच फॉर ट्यूनिंग इन, ऑल द बेस्ट जिसका भी बोर्ड एग्जाम्स है, पीस।